So TFC, Tandir Bavi Friend Circle, after won the toss, they elected to field first. And I request all the players of Sai Vishnu, Kunjat Pail and TFC Tandir Bavi, please start the match immediately. ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಸಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ TFC ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ TFC ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು.
Right, the first match of the day is now going to start between TFC, Tanir Bhavi Friend Circle versus Sai Vishnu Kunjat Bail. So news is here from the center that the captain of TFC, Tanir Bhavi Friend Circle, after won the toss, he elected to field first and their fielders are now spreaded out on the field, and the openers of Sai Vishnu Kunjat Bail are the crease. It's already 9:48 in the morning, and the first ball of the day, number 3 of Yuvaratna Trophy 2023 is now going to begin, and first ball here coming up, right arm around the wicket, Rakshak the bowler and Aris the batsman, non-striker end is Iqbal, and first ball of Pool B, top teams Pool B, the first ball of this tournament is now coming up. First ball outside the off stump this time, just wanted a run at the last moment, but the last moment he is back to his crease very safely, and the scoreboard stays at none for none. Slight bit of hesitation between the two batsmen at the last moment, and finally no damage done. The scoreboard stays at none for none in the first over, and once again the bowler comes right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. This time outside the leg stump, just wanted to work it around the onside at the last moment, not succeeded. The ball was not so missing two balls at the off stump, and because of that umpire called it a right delivery, and the scoreboard stays at none for none in the first over. So 7 overs per side to be played, and 2 overs of power play, and 35 minutes allotted time given to complete their 7 overs quota. They have to complete their 7 overs quota under 35 minutes given by the organizers as far as the rules and regulations of this tournament is concerned, to complete their 7 overs quota under 35 minutes. Fielding side, please note, for every team 6 overs. record. So it's a 6 hours, I beg your pardon, and first over of their innings is now 30 minutes given to complete their 6 overs quota. In fact, allotted time for them under 30 minutes. The bowling side have to complete their 6 overs as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. Next one outside the off stump this time, just wanted to sweep that one, gone through for a quick single. This could be trouble. Directly shines, and that is the wicket number 1. The batsman is backing to pavilion, gone through for an unnecessary single, and the throw came from the short fine leg feeder, just flattening the stumps at the last moment, and that is the wicket number 1 without facing any delivery. Iqbal is backing to pavilion, and now Sai Vishnu Kunjat Bail lose their first wicket. It's not for 1 in the first over. 6 overs per side to be played, and this is the first over of their innings is now progressing here. Bright sunshiny morning, it's already 9:50, and the first match of Pool B is now started just short while ago between Sai Vishnu Kunjat Bail versus TFC Tanir Bhavi Friend Circle. Number 3 batsman is now coming out to the middle for Sai Vishnu Kunjat Bail. And as far as the good score is concerned, the situation for Sai Vishnu Kunjat Bail, they badly need a partnership in this state. They lost their first wicket in the very first over of their innings in the face of run out. And number 3 batsman Pramod is now comes out to the middle. He is now going to face Rakshak. And Rakshak comes right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. The first power play over is now on. 7 fielders stood inside the 20-yard circle. This time, just want to play the reverse shot. The ball running down to a short third man area. In fact, fielder collected the ball. The wicketkeeper himself after it, but won't prevent the single. And with that single run, brings the runs scored upon for Sai Vishnu Kunjat Bail. It's 1 for the loss of 1 wicket. Again, the lefty batsman is now going to face Aris, the batsman. And Rakshak, after being making some fielding adjustments, here he comes right arm around the wicket to the left-handed batsman. Aris, here he bowls, driven that one, not quite middling it, but he gets in a single for that stroke. The ball running down to extra cover. Fielder collected the ball just outside the 20-yard circle, in fact. And before that, the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single. So these two batsmen just try to
make a partnership at the situation after being first wicket lost in the very first over of their innings in the face of Iqbal without facing any delivery. Disasterly run out and he is back to pavilion. And now again, this time good one, much straighter line. The ball came along the carpet and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. First over completed, 2 runs on the board, 1 wicket lost, and this is an absolutely slower start for Sai Vishnu Kunjat Bail after being losing the toss and put it to bat by TFC, the nearby friend circle. And after first over, they are 2 for the loss of 1 wicket. So 10 top teams are participating in this pool. And as far as the teams are concerned, so schedules of this match, first match is now progressing here now between Sai Vishnu Kunjat Bail versus TFC, the nearby friend circle. After this match, the second match will be played between KFC Kodikal versus Sneha Malemar. One more good match is now coming up. After that, the third match will be played between KCCR Kadri will takes over NM Manglore in the match number 3 of the day, and after one more high voltage match, and after that one more good match is now coming up. The last match of the first round, Torpedoes Khana will takes over Young Friends Urva, and that match is now coming up in the face of the 4th match of the day of first round. So very exciting cricket to come on today, and let's see who will be entering into the grand finale of this competition tonight. So back to this game. First over completed, just 2 runs on the board, just a single wicket lost, and fantastic live coverage making by the Bedra Media under the great leadership of Mr. Irfan. And now the bowler starts a fresh proceedings. First ball of his fresh over. Here he bowls right arm round the wicket. This time driven that one down to mid on, gone through for a quick single and get it comfortably at last. The ball was flicked out of fielder's hand at Silimidon, and because of that the batsman gone through for a quick single and get it comfortably at last. 3 for the loss of 1 wicket in the over number, second in progress. Officials are very experienced umpires. Mr. Roland Pinto standing at square leg behind Mr. Mohan Bundel, standing Mohan Iyan in fact standing as a main umpire at this situation. Very experienced umpire. Once again just wanted to loft that one at the last moment, not succeeded, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. So again here he bowls right arm over the wicket. Here he bowls outside the off arm in the air, just over the cover fielders at this time, but not quite middling it, but he gets in a couple for that, and a slight fumble going on there at deep cover point. In fact, after being some fumble, collected the ball by the fielder after being just throwing it to his backside at the last moment, and before that the batsmen have got a plenty of time to come back for the second run. 2 more runs added to their total, and with that a couple run the scoreboard moving up to 5 for the loss of 1 wicket in the over number, second in progress. Nikhil continuing his next delivery, right arm over the wicket balls outside the off stump. Just wanted to play that one square off the wicket after rocked on the back foot, not succeeded, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. 5 for the loss of 1 wicket, and this is the over number, second in progress. Second power play over is now progressing here of their innings, and again down the leg side, down to a short fine leg, gone through for a single and get it comfortably at last. The ball went just wide of the stumps at the last moment, the throw went just wide of the stumps, and because of that the batsmen have crossed over for the single run very safely in the end, and with that single run the scoreboard moving up to 6 for the loss of 1 wicket in the over number, second in progress. Still the batsmen are searching for the right track at the situation after being lost their first wicket in the very first over of their innings. These 2 batsmen just trying to repeat their innings this time, just wanted to loft that one, not quite middling it. Short mid wicket fielder collected the ball, and before that the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single. So 2 overs completed, and still the problems are continuing for the batsmen of Sai Vishnu Kunjat Bail. They managed to score only 7 runs on the board after completion of 2 overs for losing 1 wicket. Still in overall calculation it's going to be 4 overs left in their innings. That means 24 balls left, and let's see how many runs they are making in this remaining 24 dealers. That means in remaining 4 overs with the help of remaining 9 wickets. The second match, one more big match is now coming up. We are just watching on the live telecast. KFC Kodikal will take over Sneha Malemar in the next match. The second match of the day 3 of Yuvaratna Trophy 2023 is now coming up, and this tournament is proudly organized by Team Fortune Mangalore.
And the bowler now starts the fresh proceedings from the commentator box end. Praful starts the fresh proceedings, and the first ball of his over is now coming up. The discussion going between the batsmen, and now they are backing to their creases. And the first ball of the third over of their innings is now coming up. Praful, this time bowling to Harris. The batsman is now going to face Praful after being 2 overs of a power play. Fielding restrictions has been taken off. Fielders are now spread out on the field. And now first ball of fresh over after power play from Praful is now coming up. Right arm round the wicket. This time just gone for a mighty heave. This not succeeded. Not quite mitigated the last minute. Just wanted to play that one too early. The ball came quite lately, and because of that, no contact between the bat and ball cleanly. And he's got only a single for that stroke. Short third man fielder collected the ball behind the stumps, and with that single run, the scoreboard moving up to 8 for the loss of 1 wicket. And Pramod is now going to face Praful again. Here he bowls right arm over the wicket. Just wanted to play a reverse shot. He played that one, but not so power in that stroke. And before collected by the gully fielder just outside the 20-yard circle, the batsman have got a plenty of time to cross over for the single. 9 for the loss of 1 wicket. Still the runs are coming in singles now. And these two batsmen just trying to make a partnership at this situation. And now once again Praful comes bowling to Harris. Right arm around the wicket balls. This time lofted that one. I think it's could be gone all the way. And yes, it does. First confident stroke came from the bat of Harris. This time he just got that one right from the middle of the bat. Have a look at this in the replay. He just got that one from the middle of the bat and lofted that one. And he's got the enough distance on that. So 6 runs into the account of Harris, and 6 runs into the account of Sai Vishnu Kunjat Bail. And with that 6, the scoreboard is now moving up to 15. 15 for the loss of 1 wicket now in the over number 3 in progress. Perfect struck came from the bat of Harris at this situation. And now once again, here he comes, Praful. Again, after conceding a 6, next delivery just coming from him. This time turns it away, firmly struck down to a backward square leg. In fact, a fielder collected the ball cleanly, and the batsman gets a single for that throw. He just wanted to swings it away on the onside at the last movement, but not quite connected that one properly. And the ball played that one, the stroke played that one by the batsman along the ground, and because of that, he's got only a single for that stroke. And once again, here he bowls right arm over the wicket. Just shuffling across the line, wanted to loft that one on the onside area, not succeeded. And finally, no addition to the total, and the scoreboard stays at 16 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Again, Praful bowls right arm over the wicket. Good one, came along the carpet, down to a short cover, gone through for a quick single. This could be in trouble, but I think the batsman made the ground at the last moment. So he reached the crease, and finally no damage done for him, and the scoreboard moving up to 17 now for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. So 3 overs completed, half the way mark, and after halfway they are recovered a little bit, all because of this over, which the bowler caused 10 runs, and 10 runs in this over came from the bowler, and after 3 overs they are recovered a little bit after being a shackling start, slower start in fact. It's 17 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs for Sai Vishnu Kunjat Bail. This is the first match of the day 3 of Yuvaratna Trophy 2023 is now progressing here, and this tournament is now proudly organized by Team Fortune Manglore. And this tournament is now progressing along nicely. And Team Metrics will take over Zaman Boys Kalladka in a Pool A semi-final match, and that semi-final match will be played on tonight at this ground. And in the Pool B match, Mangalore's top teams are participating. 10 top teams are participating in the Pool B. And the first match of the Pool B is now progressing here between Tanir Bhavi Friends Circle versus Sai Vishnu Kunjat Bail. So in the morning, for the latecomers, in the morning, TFC are won the toss. After won the toss, they elected to field first, and because of that, Sai Vishnu Kunjat Bail are now batting first. This time turns it away down to a short fine leg, slight bit of fumble there. I think it was a backup at the deep fine leg.
The last one just took out of that ball, and the ball was flicked out of his hands, and because of that the batsman come back for the second run, and with that couple run the scoreboard moving up to 19 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. So again, reverse shot, just wanted to play a reverse shot. The ball stuck to his leg at the last moment. I think he's got a bat on that at the last moment. And the scoreboard is now moving up to 20 now for the loss of 1 wicket. Now the runs are coming quite freely now for Sai Vishnu Kunjat. And slowly and steadily, this partnership is now building up between Aris and Pramod. 20 runs already added for the second wicket. And still 2 overs to go after this one in overall calculation at the innings. Again, the bowler comes, Rakshak. Right arm round the wicket, driven that one, not quite middling it. Silly mid downfielder collected the ball, just going towards to his right side at the last moment, but won't prevent the single. And with that single run, the scoreboard moving up to 21 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. So an equal battle is now continuing here between the bat and ball. And now once again, Rakshak, after making some fielding adjustments, here he comes, right arm over the wicket. This time just wanted to play reverse shot, gone through for a quick single. Fielder after it, the bowler himself after it on his follow through, but at the last moment the batsman completed a single run very safely in the end. So single run added to the total, and with that single run, scoreboard moving up to 22 for the loss of 1 wicket. So 22 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. And once again, Rakshak comes. Still some fielding adjustments is going on there. A long off fielder brought a little bit of a straighter now for the left-handed batsman Aris. And once again, here he comes. Just wanted to play the reverse shot at the last moment. Wicket keeper flicking the wickets very quickly, but the batsman got a pad onto his crease at the last moment, and because of that he survived. And the scoreboard stays at 22 for the loss of 1 wicket. A pretty good over progressing here so far from the bowler Rakshak. Just conceded 5 runs in this over in the first 5 deliveries. And the last ball of this over is now coming up from him. Bright and shiny morning. It's already 10 past 5 past 10 in fact. And the rays of sun are getting brighter and brighter as the time progresses, and a fantastic tournament is now progressing here in the name of Yuvaratna Trophy 2023, which proudly organized by Team Fortune Mangalore. This time want to play reverse shot, not quite meeting it at the last moment. Single run added in the face of leg by, and with that single run the scoreboard moving up to 23 for the loss of 1 wicket after completion of 4 overs. 4 overs completed, 23 runs on the board, 1 wicket lost. The run rate, the present run rate for them is exactly 5.75 runs per over. The present run rate is now going on here for them, and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. So 23 runs already added for the second wicket between Aris and Pramod. And they lost their first wicket in the very first over of their innings in the face of Iqbal, disastrously run out. And after that, these two batsmen put on 23 runs for the second wicket. And slowly and steadily, this partnership is now building up. After being making some conversation, the batsmen are backing to their marks. And the fresh over starts from the commentator box. And the bowler starts the fresh proceedings. Tanveer, and this time he'll be bowling to left-handed batsman Aris. And as far as the batting is concerned for Aris, sensible knock coming from him. He is batting on 12 at the situation. Well, support coming from the other end batsman Pramod, who is batting on 8 at this stage. And still in overall calculation, it's going to be 12 balls remaining in the innings. First ball of fresh over from Tanveer. Here he comes, right arm round the wicket. Aris lofted that one. This time down to a long off, but there is a protection out there. Just a single he got. And with that single run, the scoreboard moving up to 24 now for the loss of 1 wicket at the start of the 5th over. So 5th over is now going to 5th over is now started just short while ago. 24 for the loss of 1 wicket. And this is the 5th over in progress. So let's see what will happen in remaining deliveries of their innings. 11 balls to spare in their innings, and still some fielding adjustments is going on there. Deep extra cover fielder brought a little bit of a wider for the right-handed batsman. Again, Tanveer bowls right arm over the wicket. Lofted that one this time, but I think he's got a fielder on the deep.
Long on fielder made no mistake. This time he hit that one pretty hard, but Kans finds the gap as well. And finally, long on fielder made no mistake. One more wicket fall on 24 for the loss of 2 wicket, and 24 runs second wicket partnership has been broken in the face of Prabodh after being playing a sensible knock of 9 runs. He is backing to pavilion, and now Sai Vishnu Kunjatpail are now lose their second wicket. It's 24 for the loss of 2 wickets. Meantime, next match, one more big match is now coming up. Sneha Malamar will take over KFC Kodikal in the next match, next big match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. And now the new batsman is now comes out to the middle. Number 4 batsman Wasim is now going to face Tanveer. Next one, this time driven that one, not quite middling it, not connected that one cleanly by the Silimed on fielder, and collected it long on. In fact, the batsman has got plenty of time to cross over for the single, and with that single run, the scoreboard moving up to 25 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. Still some fielding adjustments is going on there for the lefty batsman Aris. Now deep extra cover brought inside the 20-yard circle at extra cover, and mid wicket is now gone back to deep mid wicket, standing just inside the fence to protect the big strokes. And now once again here he comes Tanveer, right arm round the wicket, bowls extra quicker one from the bowler, just wanted to go off that one, missing the line completely, and misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. Wasim the man departs after being the ball sucking to his leg, and Aris wanted a run. No response came from the non-striker and batsman cleanly, and because of that he lost his wicket. So Wasim is backing to pavilion, and the third wicket lost. 25 for the loss of 3 wickets for Sai Vishnu Kunjatpail, and still 1 hour to go after this one. So 7 wickets they got in their hand, and number 5 batsman is now coming out to the middle to joining Aris. And as far as the batting of Aris is concerned, good sensible knock coming from him at this situation. He is at the non-striker end. In time, the both umpires, Mr. Roland Pinto and Mr. Mohan, are discussing something about the wetness on the pitch. And as the time progresses, the pitch getting drier at this situation because of sunlight, and still there will be some wetness on the striker and pitch at the situation. So match is now stopped for a while. So 8 balls left in overall calculation in their innings. Charan, the number 5 batsman, is now comes out to the middle, and he is now going to face Tanveer. Tanveer comes 5th time in this over. 4 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. Driven that one, perfectly struck down to a wideish long off. He's got a single for that, just looking for the second, but won't get it. In comes a throw into the hands of bowler from the wideish long off fielder, and the batsmen are finally settled with a single, and with that single run, the scoreboard moving up to 26 for the loss of 3 wickets in the over number 5 in progress. Still a ball left in this over, and left-right combination on the pitch at the situation, and down the leg side, Spectra wide, 2 for Osah, the leg stump. Single run added to the total in the face of extras, and with that single run, the scoreboard moving up to 27 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Still the batsmen of Kunjatpail are searching for the runs at the situation. Lofted! This time I think it could be taken inside the fence. Yes, it does. Not so power in that stroke, and finally Longo fielder made no mistake, and that is the end of Aris. So a good knock coming from end, and 4th wicket lost for Sai Vishnu Kunjatpail at this situation. 5 overs completed, 27 runs on the board, and a good knock has been came to an end from Aris. 13 runs he scored, including 1 6, and after playing a good knock for their side, he is back into pavilion, and Sai Vishnu Kunjatpail are now lose their 4th wicket in fact. It's 27 for 4, and 5 overs have been completed. Meantime, I once again request all the players of Sneha Malamar and KFC Kodikal to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿಯನ್, ದ ಬೌಲರ್ is now brought into the attack, who is now starts the fresh proceedings from that side end, and last over starts in Sai Vishnu Kunjat Bail's innings. Still some fielding adjustments is going on there, and long on deep mid wicket, deep backward square leg standing inside the fence to protect the boundary at this situation. In fact, deep cover point is now gone back at deep cover point boundary. Four fielders stood inside the 20-yard circle. Short fine leg, mid wicket, mid off, and a short third man. And wicket keeper just sitting close to the stumps at the last moment. This time, they won that one in the air, straight forward chance, and the batsman is backing to pavilion. He's just trying to clear the infield at this situation. This time he lofted that one, but not so high, and a straightforward catch went into the hands of a mid-off fielder, and one more wicket fallen for Sai Vishnu Kunjat Bail. Now they are 27 for the loss of 5 wicket with just 5 balls to go in their innings. So a good piece of bowling performance continuing here from Tanirbavi Friends Circle TFC. They started well in the bowling, progressed well, and now they are in the last over of their innings. So once again, number 8 batsman is now coming out to the middle, and umpire Roland Pinto just moving towards to the main umpire Mohan. He is now telling the batsman about he's got a complaint about jersey, and as far as the rules and regulations of UCG Urva is concerned, the batsman wear a perfect jersey when he whether it's coming to bat or bowl or field at this situation. For every tournament is concerned in this UCG lots of Underarm cricket, and the batsman has been changed, and another batsman is now coming out to the middle as a number 7 batsman. So the batsman has been changed, and another batsman is now slowly walking towards to the crease. So the bowler starting a fresh over. Srajan, the bowler, and he just started now. 1 ball gone in their innings in this over, in fact, and 5 balls have to come in this over, and 5 balls left in Sai Vishnu Kunjat Bail's innings. Leg stump. This time the ball stuck to his leg at the last moment, and before it was collected at short square leg, the batsman crossed over for the single, and with that single run, the scoreboard moving up to 28 for the loss of 5 wickets. Still the runs are coming in singles now in the last over of their innings. Leg by declared by umpire this time, and now once again Srijan bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time lofted that one, not quite mid-wicket, but deep extra cover fielder just unable to grab that one at the last moment, and before it was back up to deep extra cover, the batsman have got plenty of time to come back for the second run. So a couple of runs added to the total, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 30 for the loss of 5 wickets with just 3 balls to go in the innings. Next one from Srijan, right arm over the wicket. Good one, absolutely good one. Much straighter line, gone through for a quick single, and get it comfortably at last in the face of Bai. The ball missing just of the off stump at the last moment. It also beat the wicket keeper, and before it was collected at short third man, the batsman have got plenty of time to cross over for the single in the face of Bai. 31 for the loss of 5 wickets. Couple of balls remaining in their innings. Second last ball of their innings is now coming up. Srijan bowls right over the wicket. This time, good one, absolutely fantastic one. The ball came almost along the carpet and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Good one from the bowler. So a last ball now remaining in the rings, and let's see what the batsman is now doing in the last ball of their innings. The scoreboard stays at 31 for the loss of 5 wicket. 5.5 overs gone in their innings, and Srijan comes. The last ball of Sai Vishnu Kunjat Bail's innings is now coming up from the bowler Srijan to the right-handed batsman. This time gone for lost, missing the line completely. I think the ball stuck to his off stump. He lost his wicket in the final delivery of their innings. In fact, 1 more wicket fallen, and the innings is up. The stipulated overs are completed, and Sai Vishnu Kunjat Bail managed to score 31 runs on the board for losing 6 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 32 for TFC Tanirbavi Friends Circle. So 32 runs they have to score for victory for TFC.
with a required run rate of exactly 5.34 runs per over. At this situation, the required run rate for them is 5.34 runs per over. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them 32 they have to score in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets, and their innings now going to start with an injection trial. And till then, we're taking short break. And after the short break, for the first time today, I'd like to invite my friend Mr. Rajesh to continue the procedure. Commentary procedure in English when the innings of TFC will going to begin. And now it's time for break. And we'll be back right after the short break with Mr. Rajesh. Thank you. Thank you, Gopi, and good morning to our viewers. The last Sunday of this Team Fortunes organized by this tournament, and today's first match between TFC Tanir Bawi versus Sai Vishnu Kunjat Bail. The target for Tanir Bawi in 6 overs 32 is the target for Tanir Bawi to qualify for the next round. And the top scorer for the side of Sai Vishnu is 13 runs scored by Aris with the help of one huge 6, and followed by Pramod, the top scorer, 9 runs. So it's all set to chase the target of 32 runs in 6 overs. So 36 balls and 32 runs for TFC Tanir Bawi. The two openers for the TFC Tanir Bawi are so Irfan and Prashant, the two openers for Tanir Bawi. 32 is the target for in the 6 overs to qualify for the next round. So meanwhile, I request the skipper of Sneha Malimar and KFC Codicals. Both the skipper, please report to the commentary box and cooperate with us. So Prashant at the striking end, and the non-striker is Irfan. So the bowler is Nikit from the Sai Shakti end. So it's all set to start the match. The 2 power plays in the first 2 overs. So Nikit is now bowling to Irfan, the right-hander. Sorry, Prashant, the right-hander. So Nikit, the long run-up. Very nice to see that he's kind of bowling line-up. This time outside the house, a magnificent shot between the 2 covers region. They completed 2 quite comfortably, and Tanir Bawi are on the way to chase the target of 32 in 6 overs. Prashant is off the mark. Nikit, second time this over, bowling a right arm over the wicket. The 2 fielder is standing outside the circle, is on the straight long off, and it mid wicket. Here comes in Nikit. Right arm over the wicket. This time down the leg stump. There's a beautiful delivery and chance of stumping, and he's gone. Magnificent piece of work by the wicket keeper. A little bit of shuffle from the batsman to distract the bowling lineup of Nikit.
But the cleverly bowled by Nikit. The follow wicket number 1. This is given away wicket rather than he can drive the balls toward the head of the bowler. He wanted to hit the ball towards the onside, and the wicket keeper doing magnificent work. So 2 for the loss of 1 wicket. There is a good start from the Kunjatpail team. Sai Vishnu, Nikit picking up the first wicket of Tanir Bhavi. The man out is Prashant. There are now 2 for the loss of 1 wicket. The new batsman in is so Avinash is a new man in number 3 of the side. Not a big target for them to chase, just 32 runs, but it's good bowling line of bowling from Nikit. He's captured 1 wicket in the second over, second ball. Nikit right arm over the wicket. It's a long run off. After a long time, I'm seeing these kind of bowling run up on the underarm. Here comes in Nikit. This is a beautiful shot, magnificent shot. He's plays off the back foot and ball is running towards the covers region. So it will give a lot of confidence for Avinash, who is playing these kind of shot. He waited for the ball coming to the bat and dispatched towards the covers region. 4 on the board for the loss of 1 wicket. Avinash is off the mark. So that gap has been now plugged. So it's a wide open cover area in the deep long off region. Here comes in Nikit. This is good looking shot. He once again able to find the gap. And they're coming back for the second quite easily. 6 on the board. Avinash is batting on 4. It's down the leg stump. And Avinash finding the gap on the onside. And coming back for the second run quite easily. 6 on the board. There's a good start from Tanir Bhavi. There's no hard hitting, just finding the gap and rotating the strike. This once again, and beautiful delivery. Going for the across shot. And it doesn't able to find that one. So misses completely. So Avinash survives. So he wanted to take the advantage of the power play to hit over the mid-on fielder. And misses completely. Nikit this time going for the reverse shoot and magnificent shot. And ball is traveling towards the offside, and once again they going for the 3rd run. That's good running. Good piece of running between the wicket by these 2 batsmen. So side score moves up now 9 after the completion of 1 over. 1 over gone, 9 on the board for the loss of Prashant wicket. So Nikit is given away 9 runs and able to capture the wicket of Prashant. So 32 is the target for TFC Tanir Bhavi. So today's first match of the last day of this tournament between Sai Vishnu Kunjatpail against Tanir Bhavi. After winning the toss, the skipper of Tanir Bhavi decided to field first. They restrict the opposition just 31 in 6 overs. And while chasing a target in the first over, they captured 9 runs in the fall of 1 wicket. The man out is Prashant of the bowling of Nikit. So from the commentary box and one more bowling change. The new bowler has been introduced. Mubir is a bowler. The one more bowler is long run up to now bowling to Avinash. On the other hand, Irfan yet to face his delivery. The last ball they crossed over for 3 runs, so he's at the non-striking end now. He came as opener. This is ball number 2 in progress. Mubir. Right arm over the wicket for the right-handed Avinash. This a bad ball. His off stump is substituted. The slower delivery from Mubir. And Avinash is played little bit of early. And the follow wicket number 2. So Sai Vishnu Kunjatpail, they're getting 1 more wicket. And Avinash is playing so well. And he walks back to the pavilion. Is bowled by Mubir. So 9 for the loss of 2 wicket now. The new batsman in is
So Siddiq is a new man in, joining with the Irfan. 9 for the loss of 2 wicket. And there's a little bit of problem in his... Okay, it's now done. So Siddiq is now facing Mubir. Very fast delivery. Is able to take the wicket of Avinash. He's playing so well. So the left-hander. So Mubir, the Siddiq is a new batsman in. The left-hand batsman. So a little bit of change in the field now. 9 for the loss of 2 wicket. 32 is the target. Mubir now switching to round the wicket for the left-handed Siddiq. Here comes in Mubir. This time outside the leg stump, and they're crossing over for a single in the form of leg by. Score moves up now 10 on the board. Now 22 runs required. So remember, this is the 6 overs match. So at last Irfan is now taking strike of the bowling of Mubir. This is the 9th delivery of this innings. He came as an opener. He is now facing first delivery. So he comes in Mubir now switching to over the wicket to round the wicket for the right-hander. Oops, here comes in. This time that's in the air and chance of caught there. The fielder is there and taken. Magnificent catch. The two fielder is running to take the catch. And in the end, the long on fielder able to grab that one. So 10 for the loss of 3 wickets. So this good fight back from Sai Vishnu, especially Mubir is taking his second wicket on this over. So the man out is Irfan. He walks back to the pavilion. He doesn't trouble any score. So the new batsman in is Rakesh joining with Siddiq now. So 10 for the loss of 3 wickets. Tanir Bavi. It's a good fight back from Sai Vishnu. And Mubir here comes in. This time once again, this poor shot attempted by Rakesh without seeing the line of the delivery, going for the across shot, and cleverly Mubir is bowled outside the house stump. The slower one from Mubir is bowling slow. All the delivery is bowled outside the house stump. And especially in the power play, it's good line outside the house stump. He has set the fielding on the offside and is now bowling to the exactly what the stump, and it's gone. It's gone. So poor shot attempted. Rakesh, I don't know what he was doing there. Down the leg stump, and he wanted to hit the ball the onside, and in the last minute he changes his mind, and it's too late for Rakesh. His leg stump is substituted. Wicket number 3 for Mubir. What a over is going on for Sai Vishnu. Third wicket for Mubir, then the follow wicket number 4 for Tanir Bavi. It's not a big target for chase, Tanir Bavi, and as first over they're able to capture 9 runs. And in this over, Mubir, what a spell from this man. Just 1 run is given away and captured 3 wickets. Magnificent bowling. And Rakesh walks back with the duck, and before that Irfan, the opener, walks back with the duck. Avinash and Prashant, the top order batsman, already walks back to the pavilion for Tanir Bavi. They are in the back foot now. The new man in is Nikhil. So Nikhil, you have to play as the ball comes to his bat as his merit.
The most of the batsmen going for the shot, wrong shot. This time outside also once again, and they non-striker and nobody's there. So poor thinking from that particular fielder. He has to come to the non-striking end. The wicket keeper throwing the ball at that side. And one more to the score. The 11 on the board is off the bat, I believe. 11 for the loss of 4 wickets after the completion of 2 overs. They are chasing a target of 32 runs. So still they required 21 runs in 4 overs. Run rate is not a big concern for Tanirbavi. They're losing the wicket. They're giving away the wicket. In the previous over, Mubir given away just 2 runs and captured 3 wickets. And 24 balls and 21 runs, Tanirbavi. Meanwhile, I request the keeper of Sneh Malemar and KFC Kodikal. Please report to the commentary box. And for the second match, one more good match, Sneha Malemar and KFC Kodikal. So one more bowling change from the far end. The bowler is so he's now bowling to Nikhil, the right-hander. 11 for the loss of 4 wicket. So power play has been taken off now. They can spread the field. The 4 fielder they can keep it inside the ring. Here comes in. This time tries. Beautiful shot. Magnificent shot from Nikhil. That's boundary. Outside the house stump and dispatch into the sweeper cover region for a boundary. Magnificent shot. Waited for the ball coming to his bat. And driven towards the covers region for a boundary. Score jumps up to 15. 15 for the loss of 4 wickets. Farooq is a bowler. Is now switched to round the wicket for the right-hander. Right arm around the wicket for now to Nikhil. 15 for the loss of 4 wicket. Tanirbavi friends after this time once again the same end, and the fielder is there, and it has fallen in the no man's land. They comes back for the second run quite easily. So good looking shot from Nikhil. It looks very strong on the offside. 2 ball outside the house and driven comfortably. And score moves up now 17 on the board for the loss of 4 wicket. So slowly and steadily Tanirbavi cricketers are taking runs in this over. So far 6 runs has been captured in 2 balls. Farooq this time dives once again. Good looking shot. And Nikhil moves up now 7. Side score moves up now 18 on the board. That brings us Siddiq to take stock of the bowling of Farooq. The left-hander had 2 off on his account. So it comes in Farooq. Round the wicket for the left-hander. 32 is the target. They lost 4 wickets. In the previous over, Mubir bowled magnificently, just given away 2 runs and captured 3 wickets of Tanirbavi. This time sweep. There's a good magnificent shot outside the house stump, and the ball is running towards the deep square leg region. They completed 1 and they coming back for the... No, it's boundary. Boundary signal from umpire. So 22 on the board now, just 10 runs away Tanirbavi cricketers. So in this over, Farooq is about a lot of loose deliveries. The first one is far outside the house stump. It was dispatched by Nikhil for a boundary, and this time down the leg stump. Siddiq sweep scores the deep square leg region for a boundary. So 4 balls and already 2 boundaries and given. And this time reverse shot. Magnificent shot. Once again Siddiq. And runs are flowing in this over.
15 runs has been scored from 3 boundaries. 15 runs has been scored from this over. Farooq. The second over, when taking the move with 3 wicket, there is a little bit of hope for Sai Vishnu Kunjat Bail. And in this over, Farooq, 15 runs given away, 26 on the board. So it's almost all over for Sai Vishnu. Just 6 runs required for Tanir Bavi to qualify for the second round. Siddiq now facing Farooq. This time outside the house stump and misses it completely. That is the end of the over number 3. 3 overs completed, 26 on the board. They lost 4 wickets, but in the second over, a little bit of hope for Sai Vishnu when Mubir is bowled. Magnificently just given away 2 runs and captured 3 wickets. And now in the last over, Farooq given away 15 runs in the last over, previous over, and side score moves up now 26 on the board, 26 for the loss of 4 wickets. They're chasing a target of 32 runs. So Mubir has to be going to bowl his second over. The first over costing just 2 runs and captured 3 wickets. So 3 overs remaining, 6 runs required. Mubir from the commentary box and to Rakesh. Sometimes beautiful shot. Waited the ball until coming to his bat and glanced the ball towards the deep fine leg region for a couple of runs. So he looking good, Niket. 28 on the board. 28 for the loss of 4 wickets. So these 2 batsmen building a partnership for the 5th wicket. And Tanir Bavi to safely home. Just required 4 runs. Mubir over the wicket. This time tries once again and value attempt from the covers fielder. Is not able to stop the fielder batsman to crossing over for the single. 29 on the board. 29 for the loss of 4 wickets. Just 3 runs away. That brings us the left-hander Siddiq. After hitting 2 boundaries, Siddiq is batting on 10. Mubir round the wicket for the left. This time outside the leg stump and it's a boundary. And it's all over for Sai Vishnu cricketers, and Tanir Bavi cricketers cruise to the second round. And meanwhile, the next match, one more exacting match between Sneha Malemar and KFC Kodikal. KFC Kodikal, after winning the toss, they decided to field first. So man of the match of this match award goes to none other than the man who bowled brilliantly, conceded just 4 runs in his 1 over quota and captured 2 wickets. Tanveer of TFC, adjudged man of the match of his because of his fantastic bowling performance. 1 over no in 4 runs and he captured 2 vital wickets. And I request Tanveer of TFC, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. And now the man, Tanveer, because of his fantastic bowling performance of 2 wickets for conceding just 4 runs in his 1 hour's quota, and because of this brilliant bowling performance, he bagged the man of the match award. He just receiving the trophy along with check with the from our organizer, Mr. Tanveer. Congratulations for him and best of luck for the rest of the matches of the tournament. So right from this match is now 7 hours. 7 hours per side to be play. Players, please note. ಈ ಪಂದ್ಯವು 7 ಓವರ್ಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇವರಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯುವರತ್ನ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. Right, one more good match is now coming up. Sneha Malemar will take over KFC Kodikal. So 2 top seeded teams of the Underarm cricket of Mangalore is now clashing each other. जहाँ तक सवाल है टॉस का, तो KFC कोडिकल ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, और इस वक्त उनके फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त स्नेहा मलेमार की ओर से मौजूद है. यतिन और रक्षक, एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, और दर्शकों से इस वक्त मैदान भर चुका है. देखिए मैदान के चारों ओर अगर नजर फिराए तो दर्शक ही दर्शक इस वक्त दिखाई देते हैं आज, और भरनी भी चाहिए क्योंकि आज टॉप सीडेड मैचेस टीमों के मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे. और निस्संदेह ये रविवार यहाँ पर एक रंगीन बनने की पूरी सूचना यहाँ पर दे चुका है. और जहाँ तक सवाल है मैच नंबर 2 का बी पूल का इस वक्त शुरू होता हुआ स्नेहा मलेमार और KFC कोडिकल के बीच. दोनों आरंभिक बल्लेबाज यतिन और रक्षक मौजूद. गेंदबाज आरिस इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 7 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे. 7 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले. और टाइम इस वक्त नोट किया जाए कृपया. स्कोरर 10:45 बच चुके हैं. 35 मिनट के अंदर 7 ओवर उन्हें पूर्ण करने हैं KFC के गेंदबाजों को. दे हैव टू कंप्लीट देयर 7 overs under 35 minutes as far as the time is given by the organizers. As far as the time is concerned for this tournament, they have to complete their 7 overs quota under 35 minutes. और umpires काफी अनुभवी umpires, official umpires for this match once again, Mr. Roland Pinto and Mr. Mohan in action. And just first ball of the match is now coming up. Right arm over the wicket. Aris to the right-handed batsman Yatin. The first power play over is now starts. First ball outside the off stump. Cuts that one down to a short third man. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. Runs account begin for Sneha Malemar. रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के. और जहाँ तक स्नेहा मालेमार के एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त एक बेहतर आरंभिक साझेदारी निभानी होगी स्नेहा मालेमार के बल्लेबाजों को, क्योंकि KFC के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, उस बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर अगर दबाव बनाना है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यहाँ पर उन्हें
खड़ा करना होगा, तो यहाँ पर स्कोर नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बाहर की ओर निकलती हुई पहले सोचा कि गेंद को रिवर्स शॉट खेला जाए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, 1 रन 90 लाख किसी नुकसान के। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, एरिस दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेल दिया इस वक्त तक। कवर पॉइंट फील्डर के हाथों से गेंद चूकी और जब तक गेंद को डीप कवर पॉइंट पर फील्ड करे बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर एंड पर खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो इससे पहले कि पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 3 रन न प्राप्त करने का। ऑफ द बैक फुट गेंद को पंच किया था इस वक्त और आखिरकार कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद उनके शायद उनके आगे टिप्पा खाए और थोड़ा सा मिस जजमेंट होता हुआ जब तक गेंद को डीप कवर पॉइंट पर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के पास फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 3 रन प्राप्त करने का और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रन बिना किसी नुकसान के। एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम में दर्शकों से मैदान इस वक्त लगभग भर चुका है और निस्संदेह यहाँ पर आज टॉप सीडेड मैचेस खेले जाएंगे। इस मैच के बाद अगला मैच होगा, वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप राइट आफ्टर दिस मैच लाइव एक्सक्लूसिवली बिटवीन NM Manglore versus KCCR Kadri, and after that the fourth and the last match of the first round will be played between Young Friends Urva versus Torpedoes Khana. So lots of cricket actions will come on today in this beautiful UCG Urva cricket ground. The lots of underarm cricket outside the off stump. कट किया इस वक्त, फाइन जाती हुई गेंद, थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर पैरों के जरिए जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। अंतिम क्षण में गेंद पर बल्ला इस वक्त उन्होंने अड़ाया था और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर अपने पैर के जरिए गेंद को रोका जाता। बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। शायद शाकिर थे वहां पर फील्डर और उन्होंने गेंद को अपने पैर के जरिए अपने जूते के जरिए रोका सीमा रेखा के अंदर। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला एनफील्ड क्लियर करते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यतिन के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को उछाला था। जस्ट गॉट राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ दैट बॉल एंड लफ्ट दैट वन इन अ स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑन फेंस एंड ही जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड एंड गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम। और यतिन खासकर पावर प्ले ओवर्स का फायदा उठाने में माहिर है और यहाँ पर उसका फायदा यहाँ पर वो उठाते हुए ऑफ सबसे काफी बाहर बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को अंतिम क्षण में दुविधा के साथ छोड़ दिया और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्नेहा मालेमार इस वक्त टॉस हारने के बाद KFC कोडिकल के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। 12 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 12 without loss scored by Sneha Malamar made a pretty good start after being losing the toss and put it to bat by KFC Kodikal in the match number 2 of the day 3 for Yuvaratna Trophy 2023, which proudly organized by Team Fortune Mangalore. तो पहले ओवर में 12 रन प्रदान करने के बाद एरिस काफी हद तक महंगे साबित हो चुके हैं और हमसे दूर वाले छोर से यानी साई शक्ति एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए गेंदबाज और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रक्षक। और जहां तक रक्षक का सवाल है 3 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर शुरू होता हुआ और जहां तक सवाल है 20 गज के बाहर के फील्डिंग के नजरिए का तो लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद और थोड़ा सा स्क्वायर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और लॉन्ग ऑफ कुछ हद तक सीधा मच स्ट्रेटर फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार टॉप एज मौका लेकिन नहीं, फील्डर गेंद तक पहुंच पाए लेकिन गेंद को लपकने में असफल। गेंद तक पहुंच गए थे, शायद एरिस थे फील्डर वहां पर लेकिन अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में असफल। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। डीप मिड विकेट पर गेंद तक पहुंचने के बावजूद गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। जीवदान और 2 रन प्राप्त करते हुए रक्षक गेंदबाज चेतन एक बार फिर से तैयार। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, डिलिबरेटली गेंद को पैर पर टकराने दिया। इस बीच एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी चेतन की और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। चेतन जो कि प्रमुख गेंदबाजों में से एक जाने जाते हैं KFC कोडिकल की ओर से गेंदबाजी का क्रम इस वक्त जारी रखते हुए हमसे दूर वाले छोर से यानी साई शक्ति एंड की ओर से दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, लगभग गेंद जमीन के अति निकट टिप्पा खाती हुई गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता चूके और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 14 रन बिना किसी नुकसान के।
एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त चेतन गेंदबाजी करते हुए अपनी और की अगली गेंद लेकर तैयार था ना तो ओवर द विकेट गेंद को उछालना चाहे इस वक्त शॉट कवर की दिशा में गेंद पहुंची रनआउट का खतरा हो सकता है ओवर थ्रो इस वक्त हो चुका है और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए निशाना इस वक्त स्टंप्स बिखेरे गए विकेट कीपर द्वारा और अंपायर ने इशारा किया है कि इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है और देखना यह है कि तीसरा अंपायर यहां पर क्या निर्धारण देते हैं और देखने वाली बात यह है कि जब विकेट चटकाए गए थे गिल्लियां बेल्स उड़ाए गए थे विकेट कीपर द्वारा तब बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर बैट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं। नॉट आउट द डिक्लेरेशन केम फ्रॉम अंपायर सो नॉट आउट द डिसीजन केम फ्रॉम द अंपायर एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड इन दिस डिलीवरी अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे और इस वजह से बल्लेबाज रक्षक सुरक्षित और काफी लंबे खिलाड़ी है रक्षक और उनको कोई दिक्कत ही इस वक्त महसूस नहीं हुई यहाँ पर बैट क्रीज पर लैंड करने में और 2 रन इस बीच 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तो इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया वाइड एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा फिर से दूसरा रन लेना चाहे इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दैट वाज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे जो अंतिम क्षण में उन्होंने गेंद से अपनी नजरें हटा ली और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है और जहां तक सवाल है चौके का तो चौका यहां पर मिल चुका है 20 रन बिना किसी नुकसान के। इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद की गति को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त छोड़ दिया शॉट फाइनल फील्डर के हाथों में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है 2 ओवर की समाप्ति। एक और बेहतर ओवर अगर स्नेहा मालेमार के पॉइंट ऑफ व्यू और दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है जिसमें 20 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी। कुल मिलाकर पहले ओवर में रन्स बने थे 12 रन जबकि दूसरे ओवर में रन्स बने 20 और 2 ओवर के बाद स्नेहा मालेमार एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ 20 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 20 विदाउट लॉस स्कोर्ड बाय स्नेहा मालेमार इन देयर फर्स्ट 2 overs and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings। तो इस वक्त निस्संदेह कुछ हद तक चिंता का विषय बन चुका है कि एफसी कोडिगल के कप्तान के लिए 7 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे 7 overs per side to be play and still 5 overs left in their innings। beg your pardon it's a 5 overs remaining in their innings और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से बाएं हाथ के गेंदबाज द लेफ्टी बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक और 2 ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर धीरे धीरे छाते हुए कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद था। मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और सीली मिड ऑफ के दरमियान एक फील्डर तैनात जबकि गली और शॉर्ट फाइन लेग पर शाकिर इस वक्त मौजूद विकेट कीपर के पीछे 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ यदि जो कि पिछले पहले ओवर में वो छक्का जड़ने के बाद काफ़ी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज विनीत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए पहले गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंद नेक्स्ट पर आते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में शॉर्ट फाइन लेग पर माफ कीजिए शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। विनीत एक बेहतर गेंद के साथ शुरुआत कर चुके हैं बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यतीन के लिए ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची लॉकआउट की दिशा में नॉट मोर देन अ सिंगल और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3rd इन प्रोग्रेस और इस वक्त रक्षक स्ट्राइक पर आ चुके हैं सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा की कर रहा स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड और गेंद को इस वक्त खेल दिया 6 रनों के लिए। That is an absolutely magnificent strike और रक्षक का जहां तक सवाल है have a look at this in the replay just caught that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style into the players gallery and he's got a 6 for that। और रक्षक का जहां तक सवाल है एक बेहतर बेसबॉल प्लेयर के रूप में वो जाने जाते हैं और यहाँ पर जिस तरीके का स्ट्रोक उन्होंने खेला यहाँ पर काबिल तारीफ है। तो धीरे धीरे ये साझदारी आरंभिक साझदारी यहाँ पर जमती हुई और निस्संदेह परेशानियों के बादल इस वक्त KFC कोडिकल के ऊपर साफ मंडराते हुए
28 for the loss of no wicket, 27 for the loss of no wicket in the over number 3 in progress. गेंदबाज ये गेंद इस बार, this is a mighty one, this is an even bigger consecutive sixes for रक्षक. So he is on fire. तो दो छक्के लगातार इस वक्त लगा चुके हैं और अपने इरादों को यहां पर वो बुलंद कर चुके हैं. 33 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक दिस टाइम केम फ्रॉम द बैट ऑफ रक्षक. और इस बीच एक बार फिर से अपना वो सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज की ओर के अगली गेंद का बायां हाथ विकेट. ये गेंद एक बार फिर से गेंद को मोड़ना चाहा. अपील एंड अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर. लेग बिफोर विकेट, प्लम्ब इन फ्रंट, एंड दैट इज द एंड ऑफ अ फैंटास्टिक इनिंग्स फ्रॉम रक्षक. So 23 runs scored by Rakshak, including 2 sixes and a boundary. And after playing a fantastic quick firing 23 runs knock, he is back into pavilion. And after 33 runs opening stand, this partnership has been broken in the face of Rakshak. Back into pavilion after scoring 23 runs into his credit. Fantastic knock came to an end from him. And the first wicket loss for Sneha Malabar. It's 33 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. तो रक्षक का विकेट गिर जाने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक राहत भरी सांस केएफसी कोडिगल के कप्तान न लेते हुए आरंभिक जोड़ी को तोड़ने में सफल. और अब एक और बेहतरीन बल्लेबाज स्नेहा मालेमार की ओर से बेहतरीन परिपूर्ण खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं गीतेश इस वक्त क्रीज पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज विनीत की ओवर की अगली गेंद का बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती, स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद इस वक्त ढकेल दिया स्लिम डाउन की दिशा में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 33 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. 3 overs completed, 33 runs on the board for losing 1 wicket. Fantastic progressing here now for Sneha Malabar after being put it to bed by KFC Kodikal after losing the toss. Next match, one more good match is now coming up. NM Manglore will take over KCCR Kadri. And I request, because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 33 for the loss of 1 wicket, and 4th over is now going to start in the innings from Sai Shakti and शाकिर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. शाकिर एक और प्रमुख खिलाड़ी केएफसी कोडिकल की ओर से इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए यतिन, और रक्षक का विकेट गिर जाने के बाद जो कुछ हद तक दबाव इस वक्त क्रिएट हो चुका है स्नेहा मालेमार के बल्लेबाजों के ऊपर, यहाँ पर उस दबाव को मिटाने के प्रयास में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार यतिन. शाकिर की गेंद का पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 33 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाज की गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर. गेंद को इस वक्त गेंद पर बल्ला रहा है. अंतिम क्षण में गेंद को खेल दिया गली क्षेत्र पर, नहीं विकेट कीपर के हाथों से गेंद चुकी थी. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है. काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. शाकिर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए डीप मिड विकेट फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात करते हुए. लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. विकेट कीपर हकीम के हाथों से गेंद चूकी और काफ़ी ऊंची उठी और जब तक उस गेंद को दोबारा वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर स्नेहा मालेमार. And this is the 4th over of their innings is now progressing here. शाकिर की गेंद, ये गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ into the gap as well, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. लॉन्ग ऑफ पर सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर. 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, ये दोनों बल्लेबाज गेंद को ड्राइव किया जगह बनाते हुए गीतेश ने लॉन्ग ऑन पर, और जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. 7 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले और गेंदबाज शाकिर अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद यतीम के ने ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में. ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त जान चुके हैं क्रीज पर इस वक्त उन्हें जमना है, एक साझेदारी निभानी है, सेंसिबल क्रिकेट अपनानी है और सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर वो अपनाते हुए स्ट्रोक्स को ज़्यादातर ज़मीन के सहारे खेलते हुए और अंतिम गेंद पर 1 रन बटोरने में सफल. तो एक बेहतर ओवर अगर
केएफसी कोडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है पहला बेहतर ओवर जिसमें शाकिर ने सिर्फ 5 रन प्रदान किए। 5 रन केम फ्रॉम दिस ओवर फ्रॉम शाकिर एंड आफ्टर 4 overs still Sneha Malemar are now looking in a good situation. 38 runs for losing 1 wicket they scored in their first 4 overs with a run rate of exactly 9.5 runs per over और कुल मिलाकर अब 3 ओवर का खेल उनकी पारी में बाकी। विनीत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और जहाँ तक विनीत का सवाल है अपने पहले ओवर में 13 रन उन्होंने प्रदान किए थे। इसके बावजूद केएफसी कोडिकल के कप्तान ने उन पर विश्वास रखा है और गेंदबाजी सौंपी है और देखना यह है कि अपने टीम के कप्तान के विश्वास को वो किस तरह इस ओवर में बरकरार रख पाते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ यतीन ने, लेकिन डीप मिड विकेट पर कार्तिक जो कि मौजूद है। और आमतौर पर जहां तक कार्तिक का सवाल है साई नमना कासरगोड का वो प्रतिनिधित्व किया करते हैं और यहाँ पर केएफसी कोडिकल की ओर से वो इस वक्त खेलते हुए और एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर चिप किया, इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट की तरफ से मौका और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और डीप कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को उन्होंने लपका। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लपका था और इसी के साथ गितेश का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा ही जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मिनट, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था और गेंद को जमीन पर रखने में असफल और एक बेहतर कैच यहाँ पर डीप कवर पॉइंट फील्डर लपकते हुए दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है गीतेश के रूप में। गीतेश अपनी टीम के लिए कुछ खास कर नहीं पाए और यहाँ पर 1 रन बनाने के बाद वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं। सिर्फ 1 रन बनाने के बाद 39 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। तो विनीत यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अब ऐसा कहना पड़ेगा यही है एक सही वक्त है इस वक्त केएफसी के गेंदबाजों को कमबैक करने का। इस मोड पर चंद डॉट गेंदे लगातार वो फेंकते या फिर चंद विकेटें कम अंतराल में उखाड़ते तो निस्संदेह इस मैच में वो वापस आ सकते हैं। फिलहाल इस वक्त केएफसी कोडिकल के कप्तान इस बात से चिंतित हैं कि स्नेहा मालेमार के रनों के बहाव को द फ्लोनेस ऑफ रन्स जिस अंग्रेजी में कहते हैं किस तरह रोका जाए। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। एक और बेहतर बल्लेबाज अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज स्नेहा मालेमार की ओर से प्रताप इस वक्त क्रीज पर मौजूद सामना करते हुए विनीत की गेंदों का ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ स्लिप ऑफ पर गेंद इस वक्त चूकी शायद ताजुद्दीन वहां पर फील्डर थे और इससे पहले कि ताजुद्दीन से गेंद चूकती हुई गेंद फील्ड हो वाइड लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 40 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। विनीत फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस वक्त सामना करते हुए यतीन रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद वहां पर बेहतर फील्डिंग थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे विकेट कीपर हकीम के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इम्प्रोवाइजेशन करते हुए इस वक्त गेंद को रिवर्स शॉट खेला था खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र चुनते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप थर्ड मैन के बीच और 2 रन बल्लेबाज यतीन यहाँ पर बटोरने में सफल। एक बेहतरीन पारी यहाँ पर यतीन न खेलते हुए कुल मिलाकर उनकी पारी का जहाँ तक सवाल है तो 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा एक्स्ट्रा बाउंस लेकिन अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद दूसरे प्रयत्न में विकेट कीपर हकीम फील्ड कर चुके रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बराबर का टक्कर इस वक्त जारी, दोनों अंडरआर्म क्रिकेट के प्रतिष्ठित टीमें इस मैच में भिड़ रही हैं स्नेहा मालेमार और केएफसी कोडिकल। ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप कर दिया पैडल स्वीप स्टंप्स को कवर करने के बाद सफल होते हुए और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। एक और बेहतर ओवर अगर केएफसी कोडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू ने दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 5 रन बने और अंतिम 2 ओवर में मैं कहूँगा एक बेहतर कमबैक कर चुका है केएफसी कोडिकल के गेंदबाज पहले शाकिर और अब विनीत। तो 5 ओवर के बाद 43 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर स्कोर्ड बाय स्नेहा मालेमार एट बैटेड फर्स्ट आफ्टर बीइंग losing the toss and put it to bat by KFC Kodikal in the batch number 2 of the day 3 of Yuvaratna Trophy 2023 which proudly organized by Team Fortune Mangalore। और यहाँ पर साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से चेतन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और अपना दूसरा ओवर और छठा ओवर इस वक्त स्नेहा मालेमार की पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज यतीन के लिए इस वक्त लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात एक्स्ट्रा कवर पर कोई लॉन्ग ऑफ नहीं
मिड ऑफ पर एक फील्डर मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद वहीं पर गिर गई और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 43 रन 43 द स्कोर स्टेज एट फॉर लूजिंग 2 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और कुल मिलाकर 11 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। फिर से एक बार चेतन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए यतीन के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बल्ले का बेहतरीन किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर शाकिर तेजी के साथ। जब तक गेंद पर झपके बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर बेद्रा मीडिया के जरिए। जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और आज इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर आज चलेगी देर रात तक। और मैंगलोर के प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में, इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आज हिस्सा ले रही है। तो हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक रोचक क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा आज इस श्रृंखला, इस टूर्नामेंट के अंतिम दिन में। चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट प्रताप के लिए। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त जगह बनाते हुए प्रताप ने, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 45 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। धीरे धीरे अपने सही लय रिदम पर आते हुए इस वक्त KFC कोडिकल 3 ओवर में 33 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन वापसी यहाँ पर कर चुके हैं और बल्लेबाजों पर धीरे धीरे वो इस वक्त नियंत्रण प्राप्त करते हुए अब रन सिंगल्स के रूप में बनते हुए। और इस वक्त यतीन सामना करने के लिए तैयार। चेतन की गेंदों का दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन फाइन एंड इट्स कुड बी गॉन ओवर द फेंस। यस इट डज, इट्स अ बाउंड्री। ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई गेंद इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया रिवर्स शॉट के जरिए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। किस तरीके से शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर शाकिर थे, उनकी दाईं ओर से गेंद निकली फाइन और गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो 4 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। और जहां तक सवाल है, डीप थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद थे कार्तिक, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर और दौड़ लगाने के बावजूद गेंद पर पहुंचने में सफल। बेहतरीन स्ट्रोक यतीन के बल्ले से। और फिर से एक बार गेंदबाज किया, गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रा क्विकर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई। 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर स्नेहा मालेमार। 50 केम इन 6th ओवर फॉर लूजिंग 2 विकेट्स। So absolutely fantastic progressing here for them. गेंदबाज चेतन अपनी ओर की अगली गेंद ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए। यतीन इस वक्त काफी आक्रामक रवैया अपनाते हुए इस बार एनफील्ड क्लियर किया। यतीन ने पहले ही भाप लिया था लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर नहीं है, मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से गेंद को उछाला जाए तो चौका उनके पक्ष में आ सकता है। इस बार अपने इस रणतंत्र को पूरी तरह, अपने इस योजना को पूरी तरह कार्यगत करते हुए और गेंद को उछाल दिया मिड ऑफ फील्डर की दाईं ओर से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक का 54 नाउ। और चेतन तैयार, अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा हो चुका है और स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 55 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 6 overs had been bowled and this is an absolutely tremendous progressing here now for Sneha Malemar. One more good over in Sneha Malemar's point of view came to an end. 12 runs came from it from Chetan's over and after 6 overs they are looking in a commanding situation. It's 55 for the loss of 2 wickets. पहले ओवर में 12 रन बने, दूसरे ओवर में 8 रन बने, तीसरे ओवर में 13 रन बने, चौथा और पांचवा ओवर बेहतर था KFC कोडिकल की ओर से जिसमें शाकिर और विनीत ने 5-5 रन प्रदान किए और छठा ओवर जो कि अभी समाप्त हुआ है चेतन का जिसमें 12 रन उन्होंने प्रदान किए। तो अंतिम ओवर का खेल बाकी, द लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। और गेंदबाज इस वक्त शाकिर अंतिम ओवर इस वक्त शुरू करते हुए स्ट्राइक लेते हुए यतीन। और जहाँ तक यतीन का सवाल है इस वक्त कहना पड़ेगा 25 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए इस बैटिंग ऑन 25 शीट एंकर्स नॉक, शीट एंकर्स रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहाँ पर वो अदा करते हुए और अपने पारी के अंतिम ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। शाकिर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिना तो पर द विकेट, पहली गेंद यतीन के लिए ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर कार्तिक के हाथों में गेंद, क्लीन कलेक्शन, एब्सोल्युटली परफेक्ट फील्डिंग। जैसे ही गेंद टिप्पा खाई थोड़ा सा भी मिस जजमेंट होता तो गेंद उनके हाथों से छूट सकती थी, सीमा रेखा को पार कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर
आफ्टर फर्स्ट बाउंस क्लीन कलेक्शन करते हुए कार्तिक बेहतर फील्डिंग की बदौलत सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिल चुका है 56। अब तक 56 रन बन चुके हैं। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, हकीम के हाथों में गेंद, बैक हैंड थ्रो, लेकिन यहाँ पर स्टंप्स पर गेंद नहीं टकराया और शाकिर यहाँ पर कुछ कहते हुए हकीम से कि भैया नॉन स्ट्राइक रेट पर यहाँ पर रन आउट हो सकता था अगर आप थ्रो करते हैं। तो यहाँ पर शाकिर ने माफ कीजिए हकीम ने थ्रो किया था बैक हैंड के जरिए, बैक हैंड थ्रो के जरिए स्ट्राइकर एंड पर उनका निशाना चूकता हुआ और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना चोट बदल चुके हैं। इस वक्त यतिन ना स्ट्राइक पर आ चुके हैं, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार यतिन के लिए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट। प्रताप काफी आगे निकला है, रनआउट का खतरा इस बीच और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। प्रताप काफी आगे निकल आए थे और गेंद पहुंची थी शॉर्ट मिड विकेट पर और इससे पहले कि प्रताप अपने स्वस्थान पर लौटे नॉर्थ स्ट्राइक रेट पर सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट की माफ कीजिए गेंदबाज के हाथों पर। गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट पर निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ 57 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। 57 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जस्ट 3 balls now remaining in their innings. तो 3 गेंदें अब बाकी है उनकी पारी में और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 गेंद उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल अब तक शाकिर का ओवर बेहतर साबित हो चुका है और हालांकि पहली गेंद पर शाकिर ने 1 रन प्रदान किया था, दूसरा डॉट रहा था, तीसरी गेंद पर विकेट गिर चुका रनआउट के रूप में। कुल मिलाकर सिर्फ 1 रन इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और जहाँ तक सवाल है इस वक्त उनके हाथों में कुछ बाधा, कुछ दर्द वो महसूस करते हुए बॉलिंग हैंड में गेंदबाजी का जो हाथ है वहाँ पर कुछ वो दर्द महसूस करते हुए शायद नस की कुछ खिंचावट इस वक्त और वो इस वक्त बैठे हुए हैं और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है, लेकिन अब वो बिल्कुल तैयार अपनी ओर के अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। आमतौर पर नसों की समस्या खिलाड़ियों को आती है खासकर बॉलिंग हैंड पर, गेंदबाजी के हाथ पर, क्योंकि जब वो गेंदबाजी करते हैं अपनी सारी ताकत उस गेंदबाजी के हाथ में वो डाल देते हैं जब वो गेंदबाजी डिलीवर करते हैं, गेंद डिलीवर करते हैं और यहाँ पर शायद उसी तरीके की कुछ समस्या इस वक्त महसूस कर रहे थे शाकिर, लेकिन अब वो बिल्कुल तैयार और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद निकल चुकी है, छोटे दरम्यान पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 58 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 58 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट couple of balls now left in their rings. 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। नए बल्लेबाज राकेश is now comes out to the middle as a number 5 batsman for स्नेहा मालेमार और 2 गेंदें बाकी है और देखते हैं वो 2 गेंदों में किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं शाकिर। दाहिना ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए क्रीज के कोने से ये गेंद इस बार राकेश के लिए बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम शाकिर, एक्स्ट्रा क्विकर, मच स्ट्रेटर एंड द बॉल स्ट्रेट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन और अंतिम गेंद लेकर तैयार शाकिर। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। ये गेंद ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए स्वीपर, 1 रन मिलेगा। यतीन दौड़ कर आए और यहां पर यतीन अपना विकेट गंवा चुके हैं। तो अगर 1 या 2 सेकंड और वहां पर अपना बल्ला रखते बल्लेबाज राकेश तो शायद यतीन का विकेट बच सकता था, लेकिन वहां पर राकेश के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन यहां पर यतीन का विकेट गिर चुका रनआउट के रूप में और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप। दे स्टार्टेड वेल for Sneha Malabar. They started well, finished well, and finally they started well, progressed well, and finally finished well with 59 for the loss of 4 wickets. And they stipulated 7 overs, and now they set a victory target of 60 for KFC Kodikkal. 60 runs KFC Kodikkal have to score for victory in their stipulated 7 overs. And as far as the required run rate is concerned, just over 8.5 runs per over they have to score for victory. That means in exactly calculation, it's going to be 8.57 runs, the required run rate for them at this situation. 60 exactly runs they have to score for victory with the help of 10 wickets in 7 overs. The present equation shows for KFC Kodikkal. और देखना यह है कि KFC Kodikkal अपने सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप के जरिए इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो इस वक्त जहां तक KFC Kodikkal के बल्लेबाज का सवाल है, शाकिर, हकीम, ताजुद्दीन जैसे घटानुघटी बल्लेबाज मौजूद हैं और एक बार वो अपना लय प्राप्त कर ले तो निस्संदेह लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता वो रखते हैं, एबिलिटी वो रखते हैं। लेकिन जहां तक स्नेहा मालेमार का सवाल है, इस वक्त उनके बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी की। अब सवाल है उनके गेंदबाजों का, और अगर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर पहले ही गेंद से उनके गेंदबाज एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन
देते हैं तो निस्संदेह KFC कोडिकल के बल्लेबाजों पर दबाव आ सकता है. देखते हैं क्या होता है उनके बारे में. Exactly 60 target. Next match, NM Manglore. One more good match is now coming up. NM Manglore will take over KCCR Kadri in the next match, and because of that I request once again all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chat and also complete the toss procedure before the end of this match. So exactly 60 target in 7 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for KFC Kodikal, and their innings now going to start with the initial ball. Till then we are taking a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त अंग्रेजी में राजेश के साथ, जब यहाँ पर KFC कोडिकल की पारी की शुरुआत होगी. तो अब एक वक्त है ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Thank you, Gopi. So 60 is the target for KFC Kodikwal to qualify for the next round. Sneha Malima, they put a huge score on the board, 59, thanks to Yatin. What a magnificent innings, and Rakshak in the top order. 3 magnificent sixes from Rakshak. They are almost taking all the advantage of the power play, Rakshak and Yatin, and then followed by the Janma innings from Yatin. Is out in the last delivery, came up the opener, and KFC Kodikal. Their target is 60, and they have that kind of batting line of KFC Kodikal to chase the target. And the two openers are Tajuddin and Karthik. Karthik at the striking end and Tajuddin at the non-striking end. The man at the non-striking end is a magnificent player for the side of KFC Kodikal. He can play all the shots in his book, in the cricketing book. So the Karthik, the new face in the side of KFC Kodikal, all the way from the Kerala to joining KFC Kodikal. The bowler is Bhagwan. So Bhagwan is from the commentary box end. He's now bowling to Karthik. 60 is the target. They have to take the advantage of power play to reach that target. Here comes in Bhagwan. It's far outside the house and wide. Wide call from umpire Mohan. So KFC Kodikal are on the way to chase the target of 60 runs in 42 deliveries. So 7 overs, 60 runs. And Bhagwan to now Karthik. This time down the leg stump, and they completed one, thinking about second. The Rakshak is the fielder, magnificent arm. Sorry, Jitesh is the fielder. And straight into the hands of the wicket keeper. So no chance of any run there. 2 on the board. Karthik is off the mark. So 2 field outside the circle. 1 in on the onside and 1 in on the offside. So Tajuddin, the clean striker of the ball, and Bhagwan. So still fielding arrangement is going on. So that particular field on the onside, Geetesh has been coming to the circle, and long on his wings back. So 2 straight fielder for Tajuddin in the power play against Bhagwan, and I'll tell you, he's a good striker on the offside also. 2 on the board, just 1 delivery has been told. Karthik is on 1 and 1 from the extra. This time outside the extra, what a shot from Tajuddin. The particular fielder has been put in the circle, and Bhagwan is not happy. He wants that fielder down the leg stump, and Tajuddin has to take the advantage of that one. The open spaces on the onside, and he can go for it. 6 on the board. And once again that fielder is going back now. Tajuddin facing his first delivery, and he captured the boundary. 6 on the board. 60 is the target. Just 2 delivery has been bowled. Tajuddin is batting on 2. So Geetesh is
going back in that particular field at this time. Oh, this is beautiful delivery from Bhagwan all along the carpet towards the covers region. Once again, Tajuddin wanted to hit the ball towards the onside region, doesn't hold that on properly. 7 on the board now. That brings us Karthik, the short fellow. He's batting on 1. So Karthik, this time outside like some thick edge. So getting the single and giving the strike to Tajuddin. Score moves up now 8. So the Karthik came from the neighboring state Kerala, is representing the Sai Naman. Is now representing KFC Kodikal. This time outside the leg stump. The poor delivery. Tajuddin doesn't take the advantage of that one. No protection has been given. Bhagwan is not the line he has to bowl to Tajuddin. He's already hit 1 boundary by Tajuddin. 8 on the board. The positive start from KFC Kodikal. Karthik is batting on 2 and Tajuddin batting on 5. This time in there and take that. It's a maximum. What a start from KFC Kodikal, especially Tajuddin. I already told a clean striker of the ball. 1 6 and 1 boundary hit by Tajuddin in this over. And 14 on the board, chasing a target of 60. What exactly Sneha Malamar did for KFC Kodikal. And now a reply has been positive from the KFC Kodikal. 14 on the board. 14 without loss. Karthik is batting on 2 and Tajuddin. Bhagwan is very costly overbowled by Bhagwan. He's given away 14 runs in the first over. The next match is going on between one more high voltage match. KCCR Kadri taking on NM Manglore. And KCCR Kadri, the winners of EFC trophy in the same ground. Their confidence level is high, and on the other hand, NM. So the new bowler has been introduced from the Sai Shakti end. From the Sai Shakti end, the new bowler is Srikanth. A new face in the side of Sneha Malamar. He's now bowling to Karthik. He's batting on 2. This time outside the leg stump, there's a dotted one. The valuable delivery for Sneha Malamar. Down the leg stump. And the dotted one. 14. 14 without loss. Chasing a target of 60. KFC Kodikal. Srikanth from the Sai Shakti end. This time drives once again, and they going for the risky run. They made it quite easily. Wanted to hit over the mid on fielder, and the quicker one bowled by Srikanth. That brings us Tajuddin takes take with the bowling of Srikanth. He has to on target Mr. Srikanth because Tajuddin was on fire. He already hit 1 6 and 1 boundary in the previous over. And one sweeper has been arranged for Srikanth in this over. Now the bat fielder is particularly going straight over the long off region and one deep in wicket. The 2 particular fielder outside the circle for Tajuddin. 15 on the board. Srikanth from the Sai Shakti end. This time sweeps. Magnificent shot from Tajuddin. It's a clever batting. There's no power in that one. The outside the house stump, sweeping from the outside the house stump towards the deep square leg region for a boundary. 19 on the board now. Slowly and steadily, KFC Kodikal are aiming towards their target of 60. This is the over number 2 in progress. And they already reaching 19 on the board. Just 2-3 delivery has been bowled. Now Srikanth. 2 fielders outside the circle, and this time outside the front and dotted one. The dotted delivery from Srikanth. And score remains still on 19 on the board. Tajuddin is batting on
15 with the help of 2 boundaries and 1 6. Here comes in Srikanth, right arm over the wicket from the side second. Some drives, magnificent shot and chance of run out at the non-striking end. He has to be thrown towards the non-striking end, that fielder, because Tajuddin is on the back foot while driving the ball. And he has to run at the non-striking end. Karthik already half-matted. It's a lot of time for that particular fielder to throw at the non-striking end. And Tajuddin is otherwise 20 on the board. So Srikanth last time this over to Karthik. It's quite at the just 3 runs has been scored. Not a big hit. He's just rotating the strike. This time outside the leg stump once again. It's off the leg, I believe. Leg by call by umpire. 2 overs completed. 21 on the board. What a start from KFC Kodikal. 10.5 runs per over in the power play. So the next match is going on between KCC Kadri and NM cricketers. One more high voltage match. And followed by the next match is so after that KCCR Kadri and NM, the next match between the Young Friends and Torpedoes Khana. So all high voltage matches. And the spectator, they can wait until that Young Friends and Torpedoes Khana match. So all seeded teams are playing today. So Kiran has been introduced. One more, the trim cut bowler for the side of Sneha Maleba. And he's now bowling to Karthik. So 4 overs remaining. Sorry, 5 overs remaining. 39 runs required. So 30 balls and 39 runs. So the 7 overs match. And Kiran, the bowler who can turn the ball in the both way. The crucial over for Sneha Malema. They badly required wicket, especially Tajuddin. They have a chance in the last delivery, the run out at the non-striking end, but they thrown away. Kiran from the so it's a commentary box from the Kiran has been introduced. The bowler number 3 for the side of Sneha Malema. This time, what a shot, and take that, it's a maximum. Now Karthik is opening up. Outside the leg stump, the loose delivery. And it was dispatched towards the deep square-leg region for a maximum. What a shot from Karthik. So far, he's silent at the non-striking end. All the damage is done by Tajuddin. And now Karthik. 27 on the board. And Kiran, fast ball. It was whacked towards the onside for a maximum. Now, second time this over. This time outside the out stump, going for the reverse and inner edge of the bat. And they crossed it over for a single. 2 balls, 7 runs in this over. Karthik. They crossed it over now. That brings the Tajuddin to the of the bowling of Kiran. 28 on the board. 28 without loss. What a start from KFC Kodikal. Chasing it out of 16-7 overs. They are 28 in 2.2 overs. Courtesy Tajuddin. This time swaves. There's a clever thinking from Tajuddin. They already captured 7 runs in two balls. And one more single. Far outside the house stump. A lot of gaps on the onside. Sweeping from outside the house stump towards the short final region for a single. 29 on the board. Kiran is straight away onto the back foot after hitting that one magnificent 6 by Karthik. Is now bowling to the same person. This time in the air. Somebody has to be taken and he's out. Karthik walks back. So 29 for the loss of 1 wicket.
Sneha Malamar badly required that wicket. Karthik's the opening stand for 29 runs for has been broken by Kiran in the form of Karthik, caught by Srikanth of the bowling of Kiran. The new man in is Zakir, the backbone of the side of KFC Kodikal, and he is now facing now Kiran. The key wicket for Sneha Malamar. This man, Zakir, and on the other hand, Tajuddin playing so well. Normally, he came in the opening the Zakir, especially in the high scoring match, but they is now coming number 3, now facing Kiran. 29 for the loss of 1 wicket. Here comes in. This time top edge, and it's gone. What a wicket for Sneha Malamar. Zakir is walks back. 2 balls, 2 wicket. So good catch has been taken, and Zakir is going back. 29 for the loss of 1 wicket. What a wicket for Sneha Malamar. The taken wicket of Karthik, and now Zakir is going back. It's the top edge of the bat of Zakir traveling towards the no man's land. There's a good catch taken by that fielder standing inside the circle, the onside, running back. It's not easy while you're running back, especially in the sunshine. And Chetan has been came in. So 2 wicket, back-to-back 2 wicket, and Kiran is on a hat-trick now. 29 for the loss of 2 wicket. Chetan is a new man in joining with Tajuddin. And 3 balls, given away 8 runs, Kiran. And other 2 balls, they are able to capture the wicket of Karthik and Zakir. So Kiran is on hat-trick. Last time this over is now bowling to Chetan. 29 for the loss of 2 wicket. This time the dotted one, but his bat has been cutted. Wanted to hit the ball towards the onside. So 3 overs gone. 29 on the board. 3 dot balls in a row for Sneha Malamar. The 2 wicket taking delivery, and the last one, the dotted delivery. So 3 overs gone. Now 4 overs remaining. So 24 balls and 31 runs. 8 wickets in hand. So KFC Kodikal, they given away the wicket, especially Zakir. No need of that kind of shots while facing the first delivery. Already runs are scored in this over. 6 has been hit by Karthik in the Kiran's over. The last 3 deliveries, all the 3 deliveries are dotted one. 2 wicket taking. The golden wicket for Kiran. 1 of Karthik and followed by Zakir. The wicket of Zakir in the high scoring match. Geetesh has been introduced from the Sai Shakti end. Winners of this match will taking on Thandir Bobby friends. Sorry, winners of this match will be clash with the Goryang boys. Geetesh. 24 balls and 31 run required. From the Sai Shakti and the bowler number 4 for the side of Sneha Malamar. Here comes it Geetesh. One more good bowler for the side of Sneha Malamar. They sometimes once again, what a shot, and off stop from that fielder. They completed one, and that's all they get it. The off stop from the fielder, that's the main key thing, that the back of fielder has been able to field the ball. And the Geetesh. Second name is over to Chetan. 30 on the board. Exactly 30 runs required in 23 balls.
Right arm over the wicket. This time sweeps in the air, but falls in the no man's land. Chetan is off the mark. So slowly and steadily, these two batsmen are getting the singles and taking the scoreboard moving. Still 29 runs required. This is the over number 4 in progress. The 7 overs match. This one drives once again in the air, and it's one more dotted delivery. Slowly and steadily, the previous over Kiran, I've captured 2 wickets. Now Geetesh just given away 2 runs in 3 deliveries. This time they were sweeps, and they completed when they're going for the second run, and that made it quite easily. Tajuddin struggling there to reach the striking end. 33 on the board. So there's a clever thinking by these two batsmen. Getting the singles and doubles and taking the scoreboard moving. So 4 balls, 4 runs in this over. So 5 runs in this over so far. Geetesh, right arm over the wicket. This time drives once again, good looking shot off the back foot. Tajuddin, and they crossed it over a single quite easily. 34 on the board. Tajuddin came as an opener, hitting 2 boundaries and 1 sixes in the power play. He's still there. This time far outside the house, and a leg stump wide called by umpire. So there's a gifted run. Here comes Geetesh. This time sweeps, and Apel for like before wanted to sweep the ball from the outside the house stump towards the onside. Little bit of inquiry from the bowler and wicket keeper. So that is the end of the over number 4. 4 overs completed, 35 on the board for the loss of 2 wickets. Chasing a target of 60 runs. So 3 overs remaining. 25 runs required. 18 balls and 25 runs. Not a big ask of KFC Kodikal. They had a good batting lineup, especially Hakim and Harris. They still have to come. Sitting in inside their dugout, and Tajuddin, Jamma for the innings he was playing, came as an opener. 2 boundaries and 1 sixes. The long conversation is going on. A crucial over for both the side. 18 balls and 25 runs. And still they are taking time. The Sneha Malema. The conversation is still going on, and the ball is in the hand of So Mitesh is a bowler. Bowler number 5 for the side of Sneha Malema. So far, just all the bowlers are bowled 1 over. The first over bowled by Bhagwan, followed by Srikanth, Kiran, Geetesh. Now Mitesh is a bowler. Mitesh from the commentary box end. 18 balls and 25 runs. The crucial over for both the side. Is now bowling to Tajuddin. Came as opener, still there. Right arm over the wicket, Mitesh. Two bowling to Tajuddin. Here comes in the far outside house, and they're going for the run, and wide call by umpire. Clever thinking from Chetan at the non-striking end. As soon as he saw that wicket keeper is fumbled to gather the ball, he called for the striker for run. 2 runs has been added. Gifted run for KFC Kodikal. Clever thinking from Chetan at the non-striking end. Now Mitesh. 2 runs is already given away as a gifted. This time clever shot from Chetan. Getting the singles and taking the scoreboard moving. And score moves up now. 38 on the board now. 38 for the loss of 2 wickets. 22 runs required now in 17 delivery. With a second in this over to Tajuddin. There's some drives, and doesn't hold that one properly. Wanted to hit over that particular fielder, but cleverly Mitesh bowled
all along the carpet into the off stump. 39 on the board. Tajuddin, he has to stand until the victory of KFC Kodikal, because he already, this time once again Chetan wanted to hee-ho that particular the vacant region on the onside, and able to capture one more single. 40 on the board, exactly 20 runs required. This is over number 5 in progress. Mitesh, Tajuddin. One big hit can change the complexion of the match. 40 on the board, 20 run. This time nice magnificent shot off the back foot. And one of the favorite shot of Tajuddin, wanted to hit over the bowler's head and able to find the fielder on the long on region. 41 on the board. 41 for the loss of 2 wickets. Chetan and Tajuddin. This time and is gone. Cleaned up. Mitesh taken wicket of Chetan is clean bowled. Follow wicket number 3. 41 for the loss of 3 wickets. This is over number 5 in progress. Still 19 more runs required. Still 1 more balls to go. That means 13 balls and 19 runs. The new man joining in is Hakim. Joining with Tajuddin. The clever cricketer for the side of KFC Kodikal. He's joining with Tajuddin. Hakim and Tajuddin. The last man out is Chetan. Is clean bowled by Mitesh. After he bowled beautifully, the first ball is bowled wide and plus extra run. After that, he's got his line and length properly. And now the stage is now 13 balls and 19 runs required for KFC Kodikal. What a match is going on. And now Mitesh, last time in this over from the commentary box and is now bowling to Hakim. Here comes in Mitesh, right arm around the wicket for the right-hander Hakim. This time, this beautifully bowled and that's a dotted one. Good over ball by Mitesh. And now 12 balls and 19 runs required. And Tajuddin is playing sheet anchor role. He still there, came as an opener. Now there should be the big conversation who will be the bowler from the Shiva Shakti end. Sorry, Sai Shakti end. So Tajuddin is batting on. So Tajuddin is batting on 23 and it came as an opener with the help of 3 boundaries and 1 6. So Srikanth is a bowler from the Sai Shakti end. Now bowling to Tajuddin. Tajuddin and Hakim, the two fair in the middle of the crease now. 13 balls and 21 runs required. Sorry, 19 runs required. So Srikanth from the Sai Shakti and now bowling to Tajuddin. Right arm over the wicket. Definitely Tajuddin is good eyeing in the onside. So Srikanth has to be careful. So I request both the skipper of NM Manglore and KCCR Kadri, please go for the toss at the commentary box end. So Srikanth is now bowling to Tajuddin from the Sai Shakti end. Here comes Srikanth, right arm over the wicket. This time magnificent delivery all along the carpet. What a ball from Srikanth. The young man, the new face from the side of Sneh Malema, express face outside the out stump. And Tajuddin, the came as opener, he misses it.
So now 11 balls and 19 runs. So open faces over the head of the bowler, and Srikanth has to be the target all along the carpet. He should be bowled. That kind of delivery is for Tajuddin. This time outside the leg stump, they're appealing for like before, and he's given out. The big wicket, Tajuddin is walks back, and especially the dotted one, the delivery is 2 balls, 2 dotted one. One is wicket taking. The big wicket of Tajuddin walks back, given LBW to Srikanth after scoring 23 runs, and replacing Tajuddin Harris. One more big hitter is absolutely suited for this kind of situation, and Srikanth, after capturing the wicket of Tajuddin, so here comes Srikanth. Third time is over. The previous 2-1 is the dotted one. He's now bowling Harris, the big hitter of the side of KFC Kodikal. Right arm over the wicket to Harris. This time what a shot, and he's gone. It's over the head of the tallest man of the side of Sneha Malema. Rakshak, the particular fielder standing in that particular region. And it's not a bad delivery to give a treatment like that. All along the carpet, and Harris, the signature shot of Harris, outside the house stump. And Harris loves to play that kind of shots. I already told he absolutely made for these kind of situations. License to hit, and he hit over the head of that particular, the tall fielder of the side of Sneha Malamar. I request the skipper of KCC Kadri. Srikanth to Harris. This time once again, and he's gone. Once again going for the same kind of shot, but Srikanth cleverly bowled the slower one. Wicket number 2 for Srikanth is over. The first one is Tajuddin, and now Harris. So for 4 deliveries bowled by Srikanth, captured 2 wicket, and given away 6 runs. Good bowling from Srikanth from the Sai Shakti end. I once again request the skipper of KCCR Kadri. The NM skipper is waiting for you for the tossing the coin. So the new batsman in is Harris. Sorry. Imran. Harris is walks back. So now 13 runs required. Here comes Srikanth. Now the bowling to Imran. Sweeps. That's a clever shot. Clever shot from Imran. They're coming back for the second run, and they made quite easily. See, clever thinking from Imran. Outside the leg stump, sweeping from the outside the house stump. He's sweeping towards the outside for a couple of runs. 49 on the board. 11 runs required. 7 balls remaining. 7 ball and 11 runs. What a match is going on between these two teams. This time reverse sweeps in the air, and is gone. Wicket number 3 now. So 6 balls remaining and 11 runs required. Hakim is on strike now. So wanted to reverse sweep the ball, Harris. So I once again request the skipper of KCC Kadri. The NM skipper is waiting for you for tossing the coin. So if the match is ended in tie, the considering wicket, the winners will be decided by considering the wicket,
The Sneha Malema just lose 4 wicket, and KFC Kodikal already lost 6 wickets. So they have to score 11 runs in 6 ball. So Mitesh is the bowler from the commentary box end to Hakim. So Hakim, he had a caliber of finishing the match. Is known as a finisher for KFC Kodikal. He's done so many times, and now his team, the situation is like that: 6 balls and 11 runs required. They have to score 11 runs. If they tied, the win, Sneha Malamari will be cruising to the next round. Mitesh, this time tries, and they completed one. Thinking about second, and they go for the second. Poor fielding from that the fielder, particular fielder. Don't blame that fielder. He took the catch of Zakir. Under pressure. 2 runs, 5 balls and 9 runs. So I already told Hakim, the cool player. So he is placing the ball here and there and getting couple of runs. That will do for KFC Kodikal. So now 5 balls and 9 runs. Mitesh from the commentary box and to Zakir. This time what a shot, and it was 6 runs. I told he is a finisher. And the main thing is that the previous one, they crossed over for a couple of runs that give Hakim on strike. So it took advantage of that one. That no fumble from that fielder, particularly the first one. And now 57 on the board. Just see 3 runs required in 4 balls. 4 ball, 3 run. So Mitesh, what a shot from Hakim under pressure. And the now bowler is on back foot. 4 balls remaining and 3 runs required. He done so many times, Hakim. Like this kind of situation, it in maximum and changing the direction. This time sweeps and he's gone. The follow wicket number 7 now. Now 3 balls remaining, a 3 run required. The full toss outside the house stump. The one fielder is standing a short final region, and Hakim thrown away his wicket. He can drive the ball towards the covers region. Easily drives the ball towards the covers region, but he wanted to sweep the ball towards the outside the house stump. The full toss one straight into the hands of short fine line region. Now 3 balls remaining and 3 runs required, and they 3 wickets in hand. Iqbal is a new batsman, and Mitesh little bit of relax after hitting the 6. Taken a wicket taking delivery. The big wicket of Hakim. 3 balls remaining, 3 runs. They have to score 3 runs. If the match is ended in ties, Sneha Malamar will cruise to the second round. So they have to put one fielder inside because they already taken too much time. So Iqbal now facing Mitesh. 3 balls, 3 run. 3 balls and 3 runs. 3 wickets left. They have to score 3 runs. No tie. This time drives. Magnificent shot. They should be thinking about second. They're going for the second, and he's gone. Follow wicket number 8. Now 2 balls remaining and 2 runs required. No need of second run, I believe, in this kind of situation. Because they are giving away wicket. The last ball 2 runs required. It's okay, but now 2 ball and 2 runs required. Follow wicket number 8 now. Iqbal walks back in the form of run out. And Rakshak, the fielder, particularly in that time, throwing at the striking end. Good return. Straight in the hands of wicket keeper. And the new batsman in it, Arshad. 2 ball remaining and 2 runs required. What a match. That particular 6 of Hakim in the second delivery of this over
turns the match towards the KMC Kodikal, and after that Hakim thrown away his wicket. Thrown away his wicket, Hakim. He has to finish after hitting that six. He doesn't want to put a pressure on the next batsman. And 2 balls remaining and 2 runs required. Harshad is a man. The previous man out is Iqbal in the form of run out. Unnecessary, they're going for the second run. Here comes in Mitesh. What a match between Sneha Malemar and KFC Kodikal. Mitesh, 5th time is over. Batsman and bowler, both are under pressure. This time, what a shot! What a shot from Harshad. They once again going for the second run. No, there's clever thinking. Clever thinking from that particular 2 batsmen, because they lost 8 wicket. So 1 ball remaining and 1 run required. The match is ended in a tie. Sneha Malemar will cruise to the second round, because they lost, KFC Kodikal lost 8 wicket and Malemar just lost 4 wicket. What a match is going on between these two high-seeded team in Mangalore zone, and the left-hander. So the left-hander batsman Mitesh, the bowler, he has to adjust his ball line and length. So the 3K are watching this match through Bedra Media. High voltage match, and Sunday, take that. 1 ball and 1 run required. 3K are watching in this match. And what is that? What kind of shot it is? And they made it. That kind of shot, that particular fielder didn't expect that kind of shot will be played by that left-handed batsman, and the victory for KFC Kodikal. Victory for KFC Kodikal. What a match this is. And hats off to both the teams. They fought hard. And Tajuddin and Hakim, the star for KFC Kodikal. And the winners of this match, Gori Young Boys. KFC Kodikal will face Gori Young Boys in the second round. Meanwhile, the next match between NM Manglore and KFC Kodikal. And NM Manglore, after winning the toss, decided to field first. 1 more high voltage match coming up in Bedra Media for you. So you can watch the highlights of previous match through in Bedra Media. Those are watching live in the while we are have a time to start up the next match between KCC Kadri and NM Manglore. You can watch highlights of the previous match. So I request Tajuddin of KFC Kodikal, the man of the match of the previous match, Tajuddin of KFC Kodikal. I request Tajuddin to come to the commentary box and take a memento. And I also request the skipper of Sneha Malemar, please report to the commentary box to take a memento of your participation in this tournament. Thank you.
match of this match. Award goes to the man who scored brilliant 23 runs in his batting, Tajuddin of KFC Kodikal. Request now the Tajuddin receiving the man of the match trophy along with check from Mr. Rajesh, the former cricketer of Hanuman Cricketers, just distributing the man of the match award to Tajuddin for his outstanding knock of 23 runs in this match. Thank you very much, Tajuddin, and best of luck for the rest of the tournament. I request the captain of Sneha Malamar to please report to the stage immediately to receive the memento from organizer. Sneha Malamar ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Dhanyawad Rajesh. So what a fantastic match ended just short while ago, which won by KFC Kolikal. The last ball thriller against Sneha Malamar, and in the last ball they won the match, and finally they won the match by 2 wickets. So 35 minutes allotted time will given to the bowling side NM cricketers to complete their 7 overs. 35 ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ 7 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು NM ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. And now one more good match is now going to begin between KCCR Kadri versus NM Manglore. So NM Manglore, after won the toss, they elected to bat first, and the first ball of their match is now coming up. Mujib the bowler, Ravi and Sandeep the openers. First ball outside the leg stump, just missing outside the leg stump. Extra quicker from the delivery from the bowler, and the ball collected by wicketkeeper, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at none for none. And once again, Mujib, right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. Next one, stuck to the pads, and this time up goes the finger from umpire, and that is the wicket number 1. Ravi Pattayur is backing to pavilion now, and this time the ball stuck to his leg, and after being some thinking, umpire ruled him plumb in front. So first wicket gone, Ravi Pattayur departs, and now they are 0 for 1 in the first over. So for a fantastic delivery from the Mujib. और जहाँ तक मुजीब का सवाल है, इस वक्त उन्होंने गेंद को फेंके थे और अंतिम क्षण में गेंद पैर पर टकराई, और थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद अंपायर रोलैंड पिंटो ने रवि को आउट घोषित किया, और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है. 0 पर पहला विकेट गिर चुका है. अब रवि पटयू जो कि एक बेहतर बल्लेबाज जाने जाते हैं, उनका विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त नजर आता हुआ KCCR कद्री के ऊपर. तो जहाँ तक ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ KCCR Kadri just short while ago in the face of Ravi Pattayur, and he is back to pavilion. Golden duck for him, and the number 3 batsman is now comes out to the middle, Shailesh. In fact, he is now joining Sandeep. The 2 brothers are now at the middle. 2 brothers on the middle, and let's see what they are doing for their team. Second ball from Mujib comes. दूसरी गेंद लेकर मुजीब इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. पावर प्ले इस वक्त जारी है. गेंद इस वक्त स्वीप किया. गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग फील्डर के सिर के ऊपर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के इस बार गेंद सीमा रेखा के अंदर फील्ड की जा चुकी है दोबारा. और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच.
2 रन प्राप्त करने का खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्वीप किया था इनफील्डर क्लियर करते हुए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा के अंदर पहले प्रयत्न में गेंद फील्डर के हाथों से छूटी जरूर, लेकिन दोबारा तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के अंदर ढकेल दिया। हालांकि खुद सीमा रेखा के बाहर चले गए, लेकिन गेंद को अंदर की ओर ढकेलने में सफल और यहाँ पर 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करता हुआ। जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है केसीसीआर कदरी का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर आरंभिक शुरुआत। और यहाँ पर मुजीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है। पहली गेंद का भी सामना वो कर चुके हैं शैलेश, 2 रन बनाने के बाद इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और फिर से एक बार गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद शेयर किया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद शॉर्ट बैन पर रन्स नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और निस्संदेह रवि पटयूर जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं केसीसीआर कतरी के, उनकी पारी उनका विकेट उनकी पारी की पहली गेंद पर गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त केसीसीआर कतरी के ऊपर पैरों पर टकराई गेंद और इस बार बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, एक्स्ट्रा विकेट डिलीवरी। गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता और गेंद उनके पैरों से बीच से निकलते हुए, देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले व्हाट वाज हैपन एट द मिडल। और यहां पर विकेट गिर चुका है शैलेश के रूप में और मुजीब यहां पर दूसरा विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। So this is an absolutely shackling start for KCCR Kadri. They lost their 2 top enders wickets for just adding 2 runs on the board. And the situation, the bowler of NM Mangalore, Mujib, looking right on top. Number 4 batsman, Manjunath, one more good striker of the ball, is now coming out to the middle. और मंजुनाथ जो कि एक बेहतरीन स्ट्राइकर के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पर नंबर 4 स्पॉट पर उन्हें इस वक्त भेजा गया है। और इस वक्त जो ज़रूरत है साझेदारी की, जो कमी नजर आ रही है, देखना यह कि मंजुनाथ दूसरे बल्लेबाज के साथ मिलकर उस साझेदारी की कमी को पूरा कर पाते हैं नहीं। गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंद बल्ले का बीते किनारा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा, थ्रो पहुंचा, निशाना टकरा चुका है और इसी के साथ मंजुनाथ का विकेट गिर चुका है। आतिफ का थ्रो सीधे शमशों को बिगेर कर ले जाता हुआ और इसी के साथ मंजुनाथ आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। What a fantastic work made by आतिफ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, पहले झिझ के वापिस रन के लिए दौड़ पड़े, आतिफ तेजी के साथ गेंद पर झपके और गेंद सीधे स्टंप्स को पिकर कर ले जाता हुआ और तुरंत अंपायर रोलैंड पिंटो ने अपनी उंगली उठा दी। तो दुर्भाग्यवशात मंजुनाथ का विकेट गिर चुका, 3 विकेट 2 रन। और अब ऐसा कहना पड़ेगा केसीसीआर कदरी आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। दो रन 3 विकेट और ऐसा कहना पड़ेगा ड्रीम स्टार्ट इस वक्त कर चुका है एनएम मैंगलोर। अब इन संकटमय परिस्थितियों में नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान जो कि कप्तान का आगमन होता हुआ दिलीप जो कि इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। तो स्कोर बोर्ड पर 1 2 3 का सीक्वेंस यहां पर दिखाई देता हुआ 1 ओवर पूर्ण हो चुके हैं, 2 रन बन चुके हैं और 3 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। और यहां पर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए आतिफ और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दिलीप, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद संदीप। तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और माफ कीजिए गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। दर्शकों से खचाखच ये मैदान जो कि इस वक्त भर चुका है, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम। रविवार का दोपहर और जिस तरीके का मैदान दर्शकों से भरे हुए रहना चाहिए उसी तरीके से दर्शक यहां पर इस मैदान पर भर चुके हैं। और ओवर की पहली गेंद रियाज दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद दिलीप के लिए अंदर की ओर आती हुई गेंद, मंसूर गेंद को ढूंढते रहे और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट बैन पर। बेहतरीन गेंदबाजी, जगह बनाकर ऑफसाइड पर गेंद को खेलना चाहते थे दिलीप, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद को इस वक्त सिली पॉइंट पर फील्ड कर लिया गया, रन से नहीं मिलेगा। बेहतर गेंद थी रियाज के, एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन इस बीच मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी की सख्त जरूरत इस वक्त केसीसीआर कदरी को इस मैच में कम बैक करने के लिए। और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा क्रीज पर मौजूद दिलीप और
संदीप के पास वो क्षमता एबिलिटी है कि वो एक बेहतर साझेदार यहाँ पर निभा सके। और इस वक्त अपने बल्लेबाजी के रणतंत्र के बारे में वो इस वक्त सोच विचार करते हुए और इस वक्त संदीप सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो बर्दा विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, रन से नहीं मिलेगा। हल्के से अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, हल्के से गेंद को मोड़ दिया था कलाइयों के सहारे और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और रियाज एक बार फिर से इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाईनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाईनात के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, रन के लिए दौड़ पड़े, मिड विकेट पर फील्डर पहुंचे, निशाना लेकिन थ्रो इस वक्त चूकता हुआ और आखिरकार बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे बल्लेबाज और आखिरकार उन्हें कोई दिक्कत ही महसूस नहीं भी 1 रन प्राप्त करने में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका इस 1 रन के साथ 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और गेंदबाज रियाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। अपनी ओवर की अगली गेंद दाईनात ओवर द विकेट दिलीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त टॉप एज मौका हो सकता है, फील्डर जी नहीं वहां पर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले गेंद को सोचा कि स्वीप किया जाए लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदलते हुए गेंद को स्टीयर करने का प्रयास किया लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए उनके टॉप एज पर टकराए लेकिन गली पर कोई फील्डर तैनात नहीं और पॉइंट के फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए और बल्लेबाज दिलीप इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं 1 रन के साथ। तो भाग्य इस गेंद पर दिलीप का साथ देता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाईनात ओवर द विकेट रियाज गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ बल्ले और पैर को एक साथ लाते हुए कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन बल्लेबाज को मिल चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed and after 2 overs this is an absolutely shackling start for KCCR Kadri Bandit to score only 6 runs on the board, losing 3 top-enders wickets और निस्संदेह 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में KCCR कदरी के बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के जरिए किस तरीके का कमबैक यहाँ पर करते हैं। तो 2 ओवर के खेल के बाद खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और 56 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज मुजीब जो कि अपना दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डर्स इस वक्त मैदान पर छाते हुए दोपहर का वक्त 12:15 यहाँ पर बच चुके हैं और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त मैदान पर दर्शक इस वक्त भर चुके हैं। धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ सूरज आसमान की बुलंदियों को यहाँ पर छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए ओवर की पहली गेंद इस बार ड्राइव किया, बेहतरीन स्ट्रोक एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने के बाद 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और इस बीच ऑफ द स्ट्राइक यहाँ पर हो चुके हैं बल्लेबाज संदीप, स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दिलीप और मुजीब इस वक्त तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया दिलीप ने लेकिन जगह नहीं बना पाए और गेंद पहुंची सीधे मिड ऑफ पर आतिफ के हाथों में और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 7 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर बिल्कुल मैदान के चारों ओर जहाँ कहीं भी नजर फिराए दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस रविवार की दोपहर को और भी रंगीन यहाँ पर बनाते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, टॉप एज शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में और इसी के साथ दिलीप का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इस बार दिलीप दुविधा में पड़ गई कि गेंद को रिवर्स शॉट खेले या फिर स्वीप करे लेकिन अंतिम क्षण में वो कुछ भी गेंद पर करे, गेंद उनके बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद सीधे पहुंची शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में और यहाँ पर दिलीप का विकेट गिर चुका है। 7 रन 4 विकेट। रियली अ टेस्टिंग टाइम इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ केसीसीआर कदरी। 7 रनों पर चौथा विकेट यहाँ पर खो चुका है और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा नीला आकाश तले बादल तो नहीं नजर आते हुए लेकिन परेशानियों के बादल जरूर इस वक्त केसीसीआर कदरी के ऊपर साफ मंडराते हुए। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज एनएम मैंगलोर के और इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में एज ए नंबर 6 बैट्समैन अशोक इज नाउ कमिंग आउट ऑफ द कम्स आउट टू द मिडल द सिचुएशन और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा।
तो इस बीच मुजीब अशोक के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड करने के बाद लौटाए फील्डर, गेंद को गेंदबाज मंसूर के हाथों में, विकेट कीपर मंसूर के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। अभी भी रनों के लिए संघर्ष यहाँ पर करते हुए केसीसीआर कदरी के बल्लेबाज और मुजीब इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव किया, गेंद पहुंच एक्स्ट्रा कवर पर हवे में, लेकिन स्वीपर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका। मुजीब गेंद डालने के बाद वहां पर फिसल कर गिर गए थे, शायद कुछ हद तक नमी मौजूद है नॉन स्ट्राइकर पर, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस बीच मिलेंगे एक, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए केसीसीआर कदरी के लिए। मुजीब एक बार फिर से तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, इस बार बेहतर तरीके से गेंद को खेला। ये दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट उन्हें अपनानी है, क्योंकि 4 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन वापस लौटने के बाद जो दबाव उनके ऊपर इस वक्त बढ़ चुका है, उस दबाव को हटाना है एक बेहतर बल्लेबाजी के जरिए, और यहाँ पर सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाते हुए संदीप और अशोक का दोनों बल्लेबाज, और कुल रन संख्या पिछले गेंद पर जो रन बटोरी गई थी उसकी बदौलत कुल रन संख्या बढ़कर इस वक्त पहुंच चुकी है 2 अंकों पर, 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 overs completed, 10 runs on the board for losing 4 wickets with a run rate of exactly 3.33 runs per over scored by KCCR Kadri for losing 4 wickets. Still searching for the right track. एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने, और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन का तीसरा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। मैंगलोर के टॉप साइडेड टीम्स इस वक्त बी पूल में हिस्सा ले रही है और उनके बीच इस वक्त मुकाबला जारी है, और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज रियाज अपना दूसरा ओवर और सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशोक ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, रियाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, मंसूर गेंद तक पहुंचे, निशाना चूक चुका इस वक्त, और आखिरकार काफी वाइड थ्रो मंसूर का, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदीप के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट 4 से 5 कदम उनका रन अप, अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार ऑफ द टोस, गेंद को खेला, फाइन गेंद निकलती हुई फाइन लेग की दिशा में गेंद जाते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। फाइन लेग पर डी फाइन लेग पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद था, और फलस्वरूप बल्लेबाज सिर्फ 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए 12 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, रन्स आर हार्ड टू कम बाय फॉर केसीसीआर कदरी एट दिस सिचुएशन, और रियाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अशोक के लिए ये गेंद इस बार गेंद को खेला हवा में, और गेंद इस वक्त पॉइंट फीडर के हाथों में, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदलते हुए गेंद को अजीब और गरीब ढंग से खेलना चाहा, और गेंद को जमीन पर रखने में असफल, और एक आसान सा कैच पॉइंट फील्डर के हाथों में पहुंचता हुआ अशोक की पारी यहां पर समाप्त, और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा केसीसीआर कदरी की पारी लड़खड़ाती दिखाई देती हुई इस मैदान पर। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल, और 12 रन 5 विकेटें, चौथा ओवर प्रगति पर, और सब कुछ इस वक्त एनएम क्रिकेटर्स के पक्ष में चलता हुआ, और इस वक्त परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाना है तो इस वक्त बचे हुए ओवर्स में केसीसीआर कदरी के बल्लेबाजों को एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देना होगा। फिलहाल 3 सत्ते 777 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त बल्लेबाज संतोष क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करेंगे रियाज की गेंदों का, और इस बीच रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष इस वक्त सामना करते हुए, और ये गेंद इस बार संतोष के लिए लेग स्टंप से बाहर, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर चुके रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक रेट पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, सिर्फ बाई का इशारा अंपायर का, और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर, बिना किसी 13 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और
रियाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त ऑफ से बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में इस वक्त गेंद निकल चुकी है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने के, एक बेहतर तरीके की फील्डिंग की सजावट इस वक्त सजाई है कप्तान ने एनएम मैंगलोर के। फलस्वरूप केसीसीआर बल्लेबाज के बल्लेबाज जहाँ कहीं भी स्ट्रोक खेलते हैं वहां पर फील्डर को प्राप्त करते हैं। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाह, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद और विकेट कीपर मंसूर ने गेंद को फील्ड कर दिया और इसी के साथ एक और बेहतर ओवर अगर एनएम क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति। Still the problems are continuing for the batsmen of KCCR Kadri. They managed to score only 14 runs on the board. 5 top enders wickets are already back into the pavilion. 3 overs left in overall calculation in their innings. और जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है केसीसीआर कदरी का, तो कम से कम 25 से 30 रन उन्हें बटोरने होंगे इन बचे हुए 30 ओवर में। कम से कम अपनी टीम का आंकड़ा 40 के पार इस वक्त ले जाना होगा, क्योंकि एनएम मैंगलोर के पास जो बलाढ्य बल्लेबाजी का लाइनअप है, अगर उस लाइनअप पर दबाव बनाना है तो न सिर्फ उन्हें उनके बल्लेबाजों को 40 का आंकड़ा पार करना होगा, बल्कि उनके गेंदबाजों को भी एक घातक गेंदबाजी करनी होगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स, जब एनएम मैंगलोर के बल्लेबाज बल्लेबाजी पर उतरेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त उनके सामने यह मुद्दा ठहरता है कि वो 40 का आंकड़ा, कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करें। तो आतिफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। बल्लेबाज संदीप जो कि आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, अपने सामने 5 विकेटें जो पतन हो चुके हैं उसके गवाह है वो, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार आतिफ। ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद चिप किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और गेंद लग ऑफ सीमा रेखा के बाहर या अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से मैं कहूंगा ये बाहर हो चुका है 6 रनों के लिए। फर्स्ट कॉन्फिडेंट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ Sandeep in the innings of KCCR Kadri. Just look at this in the replay. Just got that one right from the mid of the bat and lofted that one in a style into the wall of commentator box stand. And there's a 6 runs into the account of Sandeep and 6 runs into the account of KCCR. जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ चंद गेंद पहले कि 40 का आंकड़ा यहाँ पर कम से कम पार करना होगा KCCR कदरी के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त संदीप के बल्ले से लगता हुआ आतिफ इस वक्त तैयार, छक्का प्रदान करने के बाद देखते हैं अगली गेंद पर वो क्या करते हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला लेकिन ठीक तरह से नहीं और गेंद वहीं पर गिर गई, उनके बल्ले के निचले हिस्से पर टकराने के बाद रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। संदीप छक्का लगाने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास वो प्राप्त कर चुके हैं। 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए एक छक्के की मदद से ही इस बैटिंग ऑन 12 इंक्लूडिंग 1 6। और इस बीच आतिफ गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दर्शक मैदान पर इस वक्त भर चुके हैं खामोशी के साथ मैच का आनंद यहाँ पर लेते हुए। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद इस वक्त तैयार, ये गेंद लेकर इलेक्शन से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ विकेट कीपिंग। हालांकि अपनी बाईं ओर वो गिरे जरूर, लेकिन दाईं ओर तुरंत गेंद को कलेक्ट करते हुए तेजी के साथ विकेट उन्होंने चटका दिए। तो यही तो मंसूर की खासियत है। और जहाँ तक सवाल है अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास में जब कभी भी बेहतरीन विकेट कीपरों का नाम लिया जाएगा तो उनमें मंसूर का नाम जरूर होगा। तो यहाँ पर मंसूर इस वक्त क्रीज के विकेट के पीछे मौजूद है। जहाँ तक सवाल है 80वें और 90वें दशक में जुगल क्रिकेटर्स की ओर से बब्बन्ना जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर जो कि खेला करते थे, और निस्संदेह उनका छाप हम यहाँ पर मंसूर पर देख रहे हैं। और डोमिनेट पूरी तरह 80वें 90वें दशक में उन्होंने अंडरआर्म क्रिकेट को डोमिनेट किया था अपने बेहतरीन विकेट कीपिंग के जरिए। तब गेंदबाजी का लाइनअप इतना सशक्त था जुगल का, खासकर मोहन जैसे गेंदबाज मौजूद थे और उनके गेंदबाजी पर विकेटों के पीछे गेंदबाज विकेट कीपिंग करना उतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर बब्बन्ना के छाप को यहाँ पर हम देख सकते हैं मंसूर के ऊपर। इस वक्त दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी। इस वक्त सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चुके, और जहां तक सवाल है रनों का, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतरीन वापसी इस वक्त आतिफ कर चुके हैं छक्का प्रदान करने के बाद, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट चिप किया। इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई और गेंद इस वक्त मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Sandeep, and now he is now slowly opening his wings.
और इस बार देखिए गेंद को किस तरीके से उछाला था, थोड़े से सफल होते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजने में सफल छक्के के लिए। और इन 2 छक्कों की बदौलत जो संदीप इस ओवर में लगा चुके हैं, मैं समझता हूं केसीसीआर कदरी इस मैच में कुछ हद तक वापसी कर चुका है। और ऐसे ही चंद और स्ट्रोक की इस वक्त जरूरत केसीसीआर कदरी को इस मैच में पूरी तरह वापसी करने के लिए। तो एक पहला बेहतर ओवर यहां पर साबित होता हुआ केसीसीआर कदरी के बारे में। और संदीप इस वक्त आक्रामक रवैया यहां पर अपनाए हुए। आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, गेंद को मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, वहां पर एकमात्र रन मिलेगा। क्लीन कलेक्शन कलेक्टेड क्लीनली आफ्टर 1 बाउंस एंड द बैट्समैन हैव गॉट जस्ट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। सिंगल रन एडेड टू द टोटल, इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड ओवर नंबर 5 has been comes to an end. So first good over in KCCR point of view came to an end. 13 runs scored in this over. 13 runs scored in this over and Sandeep who hit us 2 sixes in this over, and because of this over KCCR Kadri are now back in the game a little bit, not cleanly but little bit they are back in the game. Still 2 overs left in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में कम से कम 18 से 20 रन भी बटोर लेते हैं तो यहाँ पर चुनौती भरा स्कोर हो सकता है, क्योंकि केसीसीआर कदरी के पास एनएम मंगलूर की तरह बलाढ्य गेंदबाजी का लाइनअप है और वो अपने बलाढ्य गेंदबाजी के लाइनअप के जरिए एनएम मंगलूर के ऊपर दबाव बना सकते हैं पहले ओवर से अगर वो घातक गेंदबाजी करते हैं। लेकिन सबसे पहले उनके बल्लेबाजों को इस वक्त इन बचे हुए 2 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पर बटोरने होंगे। तो इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार संदीप एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज। और यहाँ पर फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, दर्शकों का आगमन अभी भी होता हुआ, हालांकि लगभग मैदान दर्शकों से भर चुका है लेकिन दर्शक अभी भी मैदान पर आते हुए। तो ये बात ये दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट खासकर इस यूसीजी उरुआ क्रिकेट मैदान में अंडरआर्म क्रिकेट के लॉर्ड्स में कितनी जनप्रियता यहाँ पर रखता है। और यहाँ पर जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, इस टूर्नामेंट का सवाल है, एक बेहतरीन प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। जनाब इरफान इनके साथ में यूट्यूब पर ओवर की पहली गेंद, इस बीच गेंद को स्वीप किया खूब चोटी के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, 1 रन मिलेगा, बेहतर फील्डिंग वहां पर, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर मंसूर के हाथ में और 1 रन के साथ बल्लेबाज संतुष्ट यहाँ पर हो चुके हैं। जो फील्डर इस वक्त गेंद को वो फील्ड कर चुके हैं डीप बैक थर्ड मैन पर, अयाज जो फील्डर थे पीछे की ओर तेजी के साथ दौड़े और गेंद पर झपकते हुए गेंद को फील्ड करके तुरंत अपने हाथों से गेंद को उन्होंने रिलीज किया। एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। और फिर से एक बार गेंदबाज फैसल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट उछालना चाहा, टॉप एज छोटे मान पर अयाज के हाथों में एक बार फिर से गेंद, लेकिन एक बार फिर से वो बल्लेबाज को 1 रन लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। और स्ट्राइक इस वक्त है और संदीप के पास। और संदीप देखते हैं इस वक्त आने वाले गेंदों में किस तरीके की बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हैं। फैजल तैनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तैनात के बल्लेबाज संदीप के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे आई, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, बड़ी स्लो वन कंपेयरिंग टू द प्रीवियस डिलीवरी। और गेंद की धीमेपन को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद बेहतर गेंदबाजी और एक बार फिर से फैजल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए तैनात के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर इस वक्त चलना चाहता विकेट कीपर मंसूर के हाथों में जैसे ही गेंद पहुंची और उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है आमतौर पर। तो यहाँ पर विकेटें उखाड़े गए तेजी के साथ, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड गुड ओवर प्रोग्रेसिंग हियर सो फार फ्रॉम फैजल। तो इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इस मेगा श्रृंखला का इस वक्त यूट्यूब पर मुआयना करते हुए कई क्रीड़ा प्रेमी, हजारों क्रीड़ा प्रेमी इस वक्त यूट्यूब पर इस मेगा श्रृंखला का इस वक्त मुआयना करते हुए। और ये बात ये दर्शाता है कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता पॉपुलैरिटी रखता है। तो इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फैजल अपनी ओर की
अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिना तो द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना, 4 रन नहीं मिलेगा। क्लीन कलेक्शन, हालांकि 4 कदम आगे जरूर बढ़ा चुके थे फील्डर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर के, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को खींचते हुए। और इस बीच 2000 के व्यूअर्स अब तक इस मैच का मुआयना कर चुके हैं, यूट्यूब पर इस मैच का वीक्षण कर चुके हैं और निस्संदेह ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद टिप किया and this isn't gone all the way. This time no, in fact it taken inside the fence. This time he lofted that one, but I think he played that one against the wind. और गेंद देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, लेकिन गेंद हवा के रुख के खिलाफ स्ट्रोक को खेला गया था और अपने रफ्तार को खोते हुए गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा लपक ली गई ऊपर की ओर छलांग लगाने के बाद। तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है और संदीप की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका। संदीप आउट फॉर 20 आफ्टर बीइंग प्लेइंग अ फैंटास्टिक नॉक फॉर देयर साइड ऑफ 20 runs including 2 sixes, 2 massive sixes. In fact, he is backing to pavilion and KCCR Kadri with this dismissal they are looking once again in trouble. It's 29 for 6. Over has been completed. 6 overs completed, 29 on the board, 6 wickets lost, last over remaining. देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में केसीसीआर कदरी के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इस वक्त आतिफ गेंदबाजी शुरू करते हुए, हालांकि पहले ओवर में वो 13 रन ज़रूर प्रदान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कप्तान ने उन पर विश्वास रखते हुए उनको गेंदबाजी पर बुलाया है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है। और देखना यह है कि वो कप्तान की जिम्मेदारी को किस हद तक बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि खुद कप्तान आतिफ है तो वो खुद निर्धार इस वक्त लेकर दूसरे ओवर में उतर चुके हैं। ये गेंद इस बार मंसूर के लिए, ओह ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय मंसूर एंड एक्स्ट्रा कवर। जस्ट आई वांट टू लुक एट दिस इन द रिप्ले। इस बार गेंद को उछाला था, टॉप एज होती हुई गेंद उछली इस वक्त और मंसूर इस बार एब्सोल्युटली मार्वेलस, मैग्निफिसेंट कैच टेकन बाय मंसूर। और जहां तक मंसूर का सवाल है, हालांकि मोटे कद के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन अंतिम क्षण पर जैसे ही उन्होंने भापा की गेंद जमीन पर गिरने वाली है, डाइविंग लगाई और इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लपका था, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और ये स्टनर कैच की वजह से यहाँ पर विकेट गिर चुका है और 7वां विकेट यहाँ पर खो चुका है केसीसीआर कदरी 29 रनों के ऊपर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 5 balls left in overall calculation in their innings. One more good match right after this match is now coming up between Young Friends Urwa versus Torpedoes Kana, and one more big match we're going to play right after this match. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುವ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल। गेंदबाज आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट मान पर नॉट सेकंड, बल्लेबाज काफी आगे निकला है, रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। 8वां विकेट गिर चुका है 29 रनों के ऊपर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज केसीसीआर कदरी की ओर से बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया। संदीप ने 20 रन, उसके अलावा बाकी के 7 बल्लेबाजों ने कुल मिलकर रन्स बनाए हैं सिर्फ 9। तो यह बात यह दर्शाता है कि कितनी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक दिया है एनएम क्रिकेटर्स के गेंदबाजों ने। तो यहाँ पर संदीप बेहतरीन बल्लेबाजी अगेंस्ट दी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप, उन्होंने बेहतरीन 20 रन बनाए 2 छक्के की मदद से और उनके इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत कुछ हद तक गौरवहार स्कोर यहाँ पर गौरवहार स्कोर इस वक्त खड़ा कर चुका है 29 रनों का। और इस बीच गेंदबाज आतिफ गेंदबाजी करते हुए, नंबर 10 बल्लेबाज नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और अपनी अगली गेंद लेकर आतिफ इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार इलेक्शन से बाहर की ओर निकलते हुए दिशाहीन गेंद और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 4 balls स्टिल रिमेनिंग इन द रिंग, स्टिल दे गॉट 2 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट। और
आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद ड्राइव किया इस वक्त, गेंद जाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद तक फील्डर पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद किस वक्त खेला था, नॉट क्वाइट मिटिगेटेड द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ कपल ऑफ रन्स फॉर दैट स्ट्रोक और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर, 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, गेंद गई उनके पैरों पर टकराने के बाद सिले पॉइंट पर 1 रन का इजाफा अंपायर द्वारा लेग बाई घोषित, 33 रन बन चुके 8 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर अब उनकी पारी में गेंदें बाकी हैं सिर्फ 2 और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ आतिफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ना चाहा, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाई, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा यहां पर फिर से हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। और अंपायर इस वक्त कुछ कहने के बाद गेंदबाज से स्क्वायर लेग अंपायर की ओर कुछ बढ़ते हुए कुछ बातचीत करने के लिए, और खेल जो कि यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। तो अंतिम गेंद अब बाकी, बाई का इशारा, तो अंपायर ललन पिंटो के दिमाग में कुछ दुविधा थी कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है या नहीं, तो आखिरकार स्क्वायर लेग अंपायर से कुछ बातचीत करने के बाद बाई इस वक्त घोषित करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े स्क्वायर लेग फील्डर का थ्रो होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है 9 उनकी पारी की अंतिम गेंद पर। So the innings is up and KCCR Kadri finished with 35 for the loss of 9 wickets in the stipulated 7 overs, and now they set a victory target of 36 for NM Mangalore. And as far the required run rate is concerned for NM Mangalore, just over 5 runs they have to score for victory. The required run rate for them, that means in exactly calculation, it's going to be 5.15 runs per over. They have to score for victory. 5.14.5 runs per over in exactly calculation, the required run rate for them. And let's see, can they reach the target or not. 36 they have to score in their stipulated 7 with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see, can they reach the target or not. Meantime, their inning starts with rejection 12. Meantime, once again, I'd like to announce all the players of Torpedoes Khana and Young Friends Urva. I request all the players of Young Friends Urva and Torpedoes Khana to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ Torpedoes Khana ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು Torpedoes Khana ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 36th target for NM Mangalore set by KCCR Kadri, and their innings now going to start with the register ball. Till then we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with Mr. Rajesh, the former cricketer, very good player of Hanuman Cricketers. I would like to invite Mr. Rajesh for the next further comments in English when the innings of NM Mangalore will going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Thank you, Gopi. So 36 is the target for NM cricketers. Outstanding bowling performance from the side of NM, restricting Kadri cricketers for just 35 in 7 overs. So 36 is the target. So the next is a high voltage match between Torpedoes Khana and Young Friends Urva. And for that, I request both the skipper
get ready for the next match as soon as possible. So 36 is the target in 7 overs, and Mansoor and Asif, and most interesting player in the power play, especially Mansoor, loves to hit over the bowler play in the power play, and Asif, the same caliber as Mansoor is having. So Dilip is a bowler from the commentary box and is now bowling to Asif. 36 is the target for NM cricketers to qualify for the next round, and the winners of this match will be clashing with the Mangal Devi cricketers. So Dilip, it's all set. The two fielders is standing outside the circle. One is on the onside in the deep mid-wicket region, and one long off region. So here comes in Dilip from the commentary box, and 36 is a target for NM cricketers. Right arm over, the stump and a thick edge outside the out stump. Almost is dragging the ball into the stump. Asif, it's far away outside the out stump. Wanted to reach the ball to hit over the covers region, and it doesn't able to hold that one properly. So little bit of adjustment in the field in the covers region. So one fielder has been shifted to onside. So Dilip, second miss over from the commentary box, and to Asif, and 36, not a big target, especially nature of the ball is concerned. This time in the air, and there is the fielder is there, and it's maximum. So I already told Asif is one of the distracting player in this power play, taking all the advantage of that one, hitting over the onside in the mid-wicket region for a maximum. 6 on the board. Straight away, the scoring stroke has been come from the in the bat from Asif in the form of 6. And now just 30 runs required. So on the other hand, Qadri cricketers, the bowler, have to take a wicket in the league. And one more hit. And it's one more 6. Dilip, the bowler who took a man of the series in the UFC trophy, hammering 2 sixes in continuous balls by Asif. The same ground in 30 overs match. This man, the skipper of side of KCC, Qadri. This time once again, and they're crossing over for a single. 13 on the board in the very first over. Courtesy Asif, 2 sixes. Second and third ball of Dilip, and that brings us Mansoor. One more big hitter. So the bowler have to be accurate while bowling this man. (13) without loss. 36 on the board. Dilip now bowling to Mansoor. Right arm over the wicket from the commentary box, and there's no fielding change. This time drives, and it's gone. 6 number 3. Raining sixes here in the first over for NM Mangalore. Now moves up now 19 on the board. 19 without loss. And what a start for KFC NM Mangalore. And Dilip, not a good day for in the ground. Dilip already conceding 19 runs. This time man is gone. Clever thinking from Dilip. The ball slower delivery, the leg cutter one, and he able to capture the wicket of Mansoor. Clean bowled, but it's too late. 19 on the board after the completion of first over. They successfully captured the wicket of Mansoor. He walks back, he facing 2 delivery, may have scored 6 runs with the help of 1-6. So 36 is the target for NM Mangalore. After putting to bat by NM, KCC Qadri scored just 35 in 7 over. The top scorer for the side of Qadri is Sandeep, who made 15 runs with the help of 2 maximums.
And none other than batsmen are not able to capture against bowling of NM. The top class bowling from the NM side, especially Riaz and Mujib. They bowled beautifully. So Dhanush, the new face in the side of KCC Kadri, is now bowling from the Sai Shaktian to Asif. This time outside the house, that's clever bowling. Wanted to go for the reverse shot, and seeing that the batsman is going for the reverse sweep, is ball down the leg stump. Asif completely misses. Score remains still on 19 on the board. Dhanush, second in this over. This time once again, good looking shot. Asif is on fire. Boundary. 23 on the board now. So he's taking all the advantage of power play. Asif now, after hitting 2 sixes in the previous over, now boundary in this over. So runs are flowing here for NM Mangalore. 23 on the board, 13 runs away. This time one more. Take that, it's maximum. Number 3 for Asif and number 4 for NM Mangalore. And it's a umpire is already signal 6. There's a 1 minute. And it was 6. Yes, it is 29 on the board. 6 number 3, 6 number 4 for NM and 6 number 3 for Asif. 29 on the board, just 7 runs away. This is over number 2 in progress. This time once again, there's a clever bowling from Dhanush, the young talent for side of KCC Kadri. And Asif, you wanted to finish the match as soon as possible. This is over number 2 in progress. This time once again in the air, there is the fielder and he's gone. Wicket number 2 has been followed for NM Cricketers. The 2 openers are walks back. The damage is already done. 29, just 7 runs away for the victory. And this is just a over number 2 in progress. Asif has been scored 23 runs with the help of 3 sixes and 1 boundary. So most of the runs has been came in the hitting boundaries and sixes. Asif, the new man in is Atif. Skipper of the side. Not a good day from the ball, Atif. Sandeep has only 2 maximum in Atif's over and is promoted in the batting order. This some tries and beautifully bowled, and the ball is traveling towards the boundary line. They completed 1 and coming back for the second quite easily. And that's only they get it 31 on the board. 31 for the loss of 2 wicket. And that ball has been called by deliberately played. Yes, it is. It was deliberately played by Atif. There's no score has been included. Score remains still on 29. So Atif is played deliberately that one. So no score has been added. 29 on the board. This time down to the leg stump, and once again the same region. A ball is running towards the boundary and it's boundary. 33 on the board now. 33 for the loss of 2 wicket. So in this over, Dhanush has been given away 14 runs. So Dhanush is given away 14 runs in this over. So just 3 runs away. So they 3 runs away for victory. And Manglore. And what a victory, what a start from NM for this tournament. First by Asif and Mansoor in the power play. They scored 33 runs in power play. Almost the finishing match in power play session only. Now just 3 runs away from the victory. The new bowler has been introduced, Akash, from the commentary box, and the new face, one more new face in the side of KCC Kadri.
Now bowling to Azim. Here comes in Akash. The leg spinner far down the leg stump and wide called by umpire. One more added. 34 on the board. 34. Losing just 2 wickets. NM. So Qadri cricketers not played up to their mark what shown in the previous tournament in this ground. This time, that's all. That's it. It finishes in style. 6 number 5 for NM Manglore, and they are qualified for the next round. They will be facing against Mangal Devi in the second round. And the next match is in one more high voltage. Tarpadus Khana taking on Angfen Surwa. So NM Manglore finishing the match in just 2.1 over, chasing a target of 36. So man of the match of this match goes to Mujib of NM Manglore. He's about 2 overs, no maiden, 6 runs and 3 wickets. And I also request the skipper of KCC Qadri, please report to the pavilion to take the moment to participation of this tournament. And I also request the Mujib of NM Manglore, the man of the match of this match. So those who are watching in live, you can see the highlights of this Manglore, this one NM and KCR Qadri. So the next match is Tarpadus Khana and Young Friends. So now you can see the highlights of the previous match now in Bedra Media. So I request Mujib of NM and the skipper of KCR Qadri, please report to the commentary box. Request any member of KCCR Qadri. Request any member of Qadri and please report at the commentary box to the moment of our participation of this tournament.
So it's back to live now between Young Friends and Torpedoes Khana. After winning the toss, the skipper of Torpedoes Khana decided to field first. So after winning the toss, the skipper of Khana decided to field first. This is a 7 overs match. So high voltage match. Most of the spectators are most weighted match. Today's most weighted match. And the good thing for Young Friends Surwa, their key player Ajmal is back to the squad. So Ajmal and Zubair, they are back to the squad of Young Friends. They are clashing against Torpedoes Khana. One more top-seeded team nowadays. Most of the top-seeded players are representing Torpedoes Khana. So it's all set to start the match. After winning the toss, Torpedoes Khana skipper decided to field first. 7 overs match. So after this match, the match is going on between Gauri Young Boys and KFC Kodikal. One more high voltage match. So now back to the cricket now between Torpedoes Khana and Young Friends Surwa. So it's all stages set for start of this match. The winners of this match. And meanwhile, I request those who are sitting inside the dugout, please clear out and give a place to the players. It's especially made for the players the dugout is especially made for the players, and not for the spectators. ಡಗ್ಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ನವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. I once again request those who are sitting inside the dugout, please make clear for the players. So the two openers for Young Friends are and Santosh and Harshad. So the left and right hand combination for Young Friends Surwa, and the bowler for Torpedoes Khana is Sharan.
So Sharan is a bowler from the commentary box end, and the batsman is Santosh. 7 overs match, 2 overs of power play, and it's all set to start the high voltage match between Young Friends Urua and Torpedoes Kana. After winning the toss, the skipper of Torpedoes decided to field first. So here comes in Sharan, right arm over the wicket for the right-handed Santosh. This time tries magnificent shot off the back foot. Santosh is off the mark, and Young Friends Urua won without loss. So that brings us the left-hander. So should be the line, should be the key for the left-hander. So the Sharan is decided to bowl round the wicket for the left-handed batsman Arshad. So absolutely made for the player for the power play. Loft the ball, on the, especially on the onside, quite clearing the fence quite easily. So the two fielders are standing onside. The power play, one is onto the long on region, and one is deep into wicket. Here comes in Sharan. Right arm round the wicket for the left-hander. One without loss, Young Friends Urua. After losing the toss, put into bat by the skipper of Torpedoes. The first delivery, Santosh is off the mark, and now Arshad Bajal was facing Sharan. Right arm round the wicket for the left-hander. This time off, beautiful delivery, and he's gone. His off stump is up-suited, the clever bowling. It's a leg cutter ball by Sharan all along the carpet, and the slower one. Arshad is played too early. And the follow wicket number 1 for Young Friends. 1 for the loss of 1 wicket. And what a start from Torpedoes, especially Sharan, getting a wicket of Arshad. A lot of expectation from the side of Young Friends Urua for Arshad to hit some of the maximums, and especially the spectators. Most of the spectators will be disappointed while they're seeing the Arshad is walks back. So the new batsman in is Sajid, the number 3 of the side. One more hard hitter of the ball, joining with Santosh. 1 for the loss of 1 wicket. Arshad is walks back. Clean bowl by Sharan. And Sharan is now bowling for the right-handed, switching to over the wicket. 1 for the loss of 1 wicket. So Sharan, what a delivery. The previous one is taken wicket of Arshad. The leg cutter one bowled. It's off cutter for the left-hander. It's off stump is substituted. Sharan to Sajid. This time, and big appeal is gone. Back-to-back wicket for Sharan. Playing across the line, and Sajid is thrown away his wicket. It's not a good shot to implement while facing here the caliber of bowling like Sharan. The quicker one, wicket to wicket. Sharan playing across the line is plumb in front of wicket. There's no hesitation for umpire Mohan Ayad. He raises his finger, and the follow wicket number 2. The score is just 1 on the board. So 91k subscriber for Bedra Media. What achievement for Bedra Media. Now 91k subscribers, and especially the match is going on between these two teams. The both are hot favorite are getting this trophy, Yuvaratna trophy 2023. The cash money or prize money of 1 lakh. That brings us the one more left-hander, Rajesh, all the way from Ubar to here to play for Young Friends Urua. So Sharan is on a hat-trick now. 2 balls, 2 wicket, and 2 big wickets. First is Arshad, his clean bowl, and then Sajid, LBW. Now switching to round the wicket, is now facing, he's now bowling to Rajesh. He's on hat-trick, Sharan. 1 for the loss of 2 wicket. Right arm round the wicket and drives. Good looking shot off the back foot. A confident looking shot by, and
Little bit of hesitation at the non-striking end. Santosh almost half-matted, calling for the Rajesh. So now it is one of the technique for the non-striking end fielder or the striking batsman coming half-matted. The safer end is calling for the non-striker. 2 for the loss of 2 wicket. Good start from Tarbados Khan after winning the toss. He decided to field first. The skipper is delighted after seeing the scoreboard, getting the wicket of Arshad and Sajad in the very first over. Sharan, the calling, the gully fielder, showed the short third man region. Over the wicket for Santosh and reverse sweep, and what a shot! Take that outside the house, and it's a boundary. Cool and calm. Mr. Santosh waiting for the ball coming to the bat, and one of the signature shot of Santosh. This is the speciality of this man. 2 wickets fallen in front of him, and look at that shot. Outside the house stump, switch it towards the gully region for a boundary. 6 on the board. And class batsman, and he's in form. Waiting the batsman. Bowler to bowl outside the house stump, waited the ball and switch it towards the deep gully region for a boundary. Sharan. This time tries, what a shot, and he's gone. Unfortunately, the fielder is stand there. Akram is the fielder. And follow wicket number 3. And what a over for Tarbados Khan. 3 wicket in a over. And Sharan. So that is the end of the over number 1. 6 for the loss of 3 wickets. 3 top order batsmen, especially Santosh now, hit over the bowler's head, and unfortunately Santosh, the man is standing Akram in the boundary edge. He finds the fielder. So the man is all the way from abroad to here. Ajmal joining with the Rajesh now, the key player, cool and calm, and you know the situation, and he played so many times these kind of situation for Angfriend Surwa, and he saved so many times, and most of the spectators know about this one, and he is the key wicket. Ajmal joining with Rajesh. 6 on the board. Good start, but the worried thing is for Angfriend, they lost wicket. Wicket of especially the 3 top order batsmen. And the last one is the big wicket. Santosh, he hit 1 boundary in the previous ball, and wanted to clean, not able to clean the fence. So Rilwan is the bowler. One more express bowler for the side of Tarbados Khan. Generate a lot of pace. Is operating from the Sai Shakti end. Is now bowling to Rajesh. Still the fielding arrangement going on. The skipper of side Imtiaz arranging the field. So deep long off for Rajesh. One fielder is standing. So Rilwan, right arm around the wicket from the Sai Shakti end. Some nice beautiful shot off the back foot, and a little bit of fumble, and here it is. Ajmal for you. Little bit of fumble, and he's take the advantage of that one. Crossing the 2 runs. Akram is the fielder. A little bit of juggle from Akram and Ajmal. He doesn't miss that kind of runs. That is the caliber of Ajmal. He's rotating the strike and take the scoreboard moving and pushing his opposite batsman for the extra run. First run taking very quickly and making the second run quite easily. Rilwan, 8 on the board. This time sweeps and sweeps fine. What a shot from Rajesh. It's off the bat. Boundary number 1 for Rajesh, 2 for Angfriend Surwa. And on the other hand, Angfriend Surwa, still they lose 3 wickets, but they are making a healthy run rate. 12 on the board. Just 2 delivery has been bowled. So totally 8 balls, and they captured 12 runs. And wanted to sweep fine, that short fine leg fielder run away in that region, but there's a thick edge of the bat. And now
that particular fielder, Imtiaz, from short third man to comes to short fine leg. Rilwan to Rajesh, 12 on the board. Reverse sweeps, and the fielder is there. And Ajmal thinking about the second, but this time only single is there. 13 on the board. 13 for the loss of 3 wicket. So still they are maintaining a healthy run rate. That brings us Ajmal to take stock of the bowling of Rilwan. Rajesh is batting on 7 now. Santosh Arshad Sajad walks back into the dugout. And the successful bowler for Torpedoes Khana, Sharan, capturing all 3 wickets in the first over. Most successful bowler, just given away 6 runs. So Rilwan to Ajmal. Right arm over the wicket from the Sai Shakti, and this is nice. What a shot! This is from the off the back foot. That's boundary. Magnificent shot. It's not a bad delivery to get a treatment like that. And the caliber of Ajmal. A little bit of a helicopter shot in that time. Outside the leg stump. Pick it up from the outside the leg stump and hit it over the head of that particular fielder. And Akram, I feel really sorry for that particular fielder. But he had to run all the way from the deep long on region to deep square leg region. It's not easy. So Ajmal, welcome to ECG. And this time sweeps from outside the house stump. Straight away hitting the boundary, facing first delivery. 17 on the board. All the way from abroad. Straight to UCG. There for you, Ajmal. Hitting boundary in the first delivery, and the next one is dotted one. This time drives, thick edge of the bat, and there's good calling from the no striker. There should be the chance of a single is there. The coordination between these two batsmen in the end. So 2 dot delivery in a row for Torpedoes. 17 on the board after the completion of 2 over. 17 for the loss of 3 wicket. And a little bit of an expensive over. First over just given away 6 runs by Sharan. The second one, 11 run. 2 boundaries. One from the blade of Rajesh and the other one from the blade of Ajmal. So that brings us Ashwin from the commentary box end. Straight away, and no Sharan, bowled beautifully in the first over. Just given away 6 runs and captured 3 wickets. And the skipper thinks that he won't Sharan the last log over. So he brings back Ashwin from the commentary box end. So he's now bowling the left-hander Rajesh. This is over number 3 for Torpedoes Khana. And the conversation between the skipper and bowler. The power play has been taken off, 2 over. And the power play mix up for both the teams. The Torpedoes Khana captured 3 wickets, but young friend Surwa bounced back. 17 on the board. So far so good for both the teams. And Ashwin straight away bowling around the wicket for the left-hander. Ashwin from the commentary box end. So it's all set. So well spread out field for Ashwin has been set. That and reverse far outside the house and white call. Wide signal from umpire. Wanted to switch it. 18 on the board. Now there were exactly 9 runs per over. Young friends are going. Here comes in once again, and it's a dotted one. Cleverly bowled by Ashwin. Is a master of bowling that kind of deliveries. The quicker one, not given any time for Rajesh to connect that ball. Particularly the ball is outside the house stump. This stump tries, beautiful shot, and Sharan is there, and they are going for the second run, and he's gone. There's no chance of second run, I believe. He's blindly running for the second run. He's given away wicket. He's playing so well without seeing the non-striker. Ajmal is not ready for the second run, and he's thrown away his wicket. Wicket number 4, 19 on the board. There's no chance of second run.
The Sharan, he has very good arm, and it's a good return from Sharan also. Straight into the hand of Ashwin at the non-striking end. And Rajesh, there is no chance for coming back. So Tanvir is a new batsman joining with Ajmal. This is the batting depth of young friend Surwa. Tanvir, magnificent flyer, the all-rounder for young friend Surwa. And he's now joining with Ajmal. Top order, 4 top order batsmen walks back for young friends. Especially the big blow for young friends is Harshad. He didn't click today. Just one ball. Ashwin is now bowling to Ajmal. There's some tries, beautiful looking shot, and they're going for the run. This is what Ajmal just fumble the particular fielder, and they cross it over for the single. 20 on the board for the loss of 4 wicket. Taufik is a fielder that time. A little bit of fumble, standing in the covers region. Then brings us Tanvir. One more good player and good hitter of the ball, and a good stroke maker. 20 for the loss of 4 wicket. This time, oh, what a shot that is! Take that outside the leg stump, and it is dispatched. Tanvir for you, that is. And outside the leg stump. Don't give any width for this man. It is the first delivery or the last one. It is get a treatment like that from the blade of Tanvir. This time once again the poor delivery. Down the leg stump. Wide call by umpire. So Ashwin a little bit of struggling now to bowl to Tanvir. Get his line and length. He have to get this time outside the leg stump. It's far outside the leg stump. And leg by call by umpire. Wanted to hit the same shot what Tanvir want to hit. This time a little bit quicker. Score jumps up to 28. And young friend Surwa. This time balls in the air and Sharan. And this time every time Sharan captured 3 wicket and 1 run out, and now catch of Ajmal. So young friend Surwa, healthy run rate. They're losing wickets. Just 3 overs, 28 on the board. They lost 5 wickets. They are maintaining a very good run rate. But this time Ajmal, there's a key wicket for young friend Surwa, because Ajmal is a batsman. He have to stand until the last delivery has been bowled for torpedoes, because if you stand at the other hand, the opening batsman, they'll go for the big 8. Maybe that is the plan, but Ajmal is walks back. So the new batsman in is So Parvez is a new face in the side of young friends at the non-striking end. So the player from the Kunjaturu from the neighboring state Kerala. Parvez at the non-striking end. So Tanvir is now facing Rilwan, bowling his second over. Already hit 1 huge 6 in the Ashwin over in the previous over toward the deep mid-wicket region. One of his favorite area, Tanvir saw hitting so many sixes in that region. 28 for the loss of 5 wicket. So meanwhile, I request the skipper of KFC Kodikal and Gori Young Boys, get ready for the next match. KFC Kodikal and Gori Young Boys. Rilwan from the Sai Shakti end is now bowling to Tanvir. This time tries beautiful delivery and well played by Tanvir. So this is a clever batting from Tanvir, and
It's not about the hitting every ball, playing the merit of the delivery all along the carpet. There's a good bowler, Rilwan is. So you know the situation. Already 28 on the board. They lost 5 wicket. This time outside the leg stump, down the leg stump. The confident appeal from the bowler rather than the keeper or anybody others. Scores of now 29 on the board. This is from the leg of Tanvir. That brings us Parvez to take up the bowling of Rilwan. So representing young friend Surua first time. Parvez this time tries and thick edge of the bat. I believe it's off the bat. So it's not easy straight away facing the bowler like Rilwan. So 3 balls, just single run has been scored by young friends in this over. So slowly and steadily, Tarpados Khan this time tries in the air and cotton bolt. Chance of cotton bolt dropped by Rilwan, but no score has been scored. So 4 balls, just a single run has been scored in this over. So at last Tanvir at the non-striker have a word with the Parvez. That's good to see. So the batsman is facing a little bit of struggling. This time tries. So still there is no run. So 5 balls 1 run. This is over number 4 in progress. 29 score is stuck on 29. There is no worries for young friends because they had maintained good run rate. The worried thing is they lost 5 wicket. The top 5 top batsmen already in the dugout now. So Rilwan this time tries outside the leg stump and it's off the bat I believe. So Parvez is off the mark. 30 on the board after the completion of 4 overs. Still 3 more overs left. They lost 5 wicket. So more than about 7 runs per over they're going. Young friend Surua. The good thing is Tanvir is there. He already hit 1-6 in the previous over of Ashwin. So possibly 18 delivery excluding no ball and wide. So there should be the game plan. 18 balls, some 25 to 25 runs. Maybe plus 50 runs. There should be good target because the young friends who have also good bowling lineup. So totally good match. Meanwhile, I request the skipper of KFC and Gori young boys, get ready for the next match. So Ashwin from the commentary box end is now bowling to Parvez. So Parvez is batting on 1 and so little bit of tip from the non-striker Tanvir for Parvez, the striking and batsman. So 4 fielder inside the ring and all other are spread out. So here comes in Ashwin. Commentary box and this time tries. That is a clever bowling and chance of run out and it has been called refer for the third umpire. It's a close decision and Ashwin has to reach for that. Making a run out at the non-striking end. So 50-50 and there's a beautiful delivery from Ashwin also. So it's out. So it's a follow wicket number 6 for young friend Surua. Parvez is the man out. So this is the wicket over number 5 in progress. Till after this, still 2 more overs to go. Just 1 ball has been bowled by Ashwin in the over number 5, and they lost 1 more wicket. It's not a good sign for young friend Surua. They have to complete 7 overs to get a competitive score on the board for Tarpados Kana, and the new faces at the non-striking end is Zubair. He's a good all-rounder, hard hitter of the ball, joining with Tanvir. So Parvez is walks back. It's not a Parvez, the earlier representing young friend Surua. This is from the
neighboring state Kunjaturu. This walks back in the form of run out. Follow wicket number 6 for young friends. Ashwin is now bowling to Tanvir. So there's a good battle between Ashwin and Tanvir. The previous over battle has been won by Tanvir, hitting 1-6 onto the mid wicket. Now again Tanvir is facing Ashwin now. Second in this over to the right hander. This time, what a shot this is from Tanvir. And the battle is on by Tanvir this time, hitting to the onside for a boundary. No off measure. If you are giving width, I'll kill you. Wicket fall is 6, but Tanvir is playing positive. Positively he was playing. It's a good sign for young friend Surwa. And straight away, Ashwin onto the back foot. This time, over the head, and it's a 6 number 2 for Tanvir. What a shot this is from Tanvir. Side score moves up now, 40 on the board. So there is no matter of wicket column for Tanvir. You're bowling loose delivery, I will hit you. So 6 number 2 for Tanvir, and you sit in this Ashwin over. This time magnificent shot, and the fielder is there. So Tanvir playing magnificently for young friends. 41 on the board. This time there's a clever chance of the note, and Zubair, I will tell you, he sacrifices wicket. The sensible thing is done by Zubair. Hats off to this man. Experience comes in that play. Once you see that, Tanvir is already came to the non-striking end, and ball is still in the hand of Ashwin, and he's given away his wicket for Tanvir. Follow wicket number 7. So no chance of any run there, and the new man in is Santosh. Experienced fellow, and he have to give full support for Tanvir. Wicket number 7 has been fouled on. Number 9 for the side of young friend Surwa. Santosh joining with Tanvir. 41 for the loss of 7 wickets. This is the over number 5 in progress. Did you believe that? Tanvir is playing a gem of innings for young friend. This time guys, once again outside the leg stump, and they crossed it over for a single. 42 on the board. So that is the end of over number 5. So 2 overs remaining. 42 on the board. 12 possible deliveries excluding wides and no balls. So Tanvir is batting on 18 runs with the help of 2 sixes and 1 boundary. All that 2 sixes and 1 boundary hit in the over of Ashwin. Class batting under pressure. Tanvir, cool and calm, hitting the loose ball towards the fence, and the skipper. And now the skipper is introducing Sharan from the Sai Shakti end. The bowler bowled first over for side of Tarpados Khana, getting 3 wickets. The top order 3 wickets of young friend Surwa, Harshad, Sajid and Santosh. The same over, Sharan captured 3 wickets, and now he is now bowling from the Sai Shakti end to Tanvir. He's batting on 23 with the help of 2 sixes and 1 boundary, all in the come of over of Ashwin. Normally the caliber of Ashwin, if you see the bowling lineup of Ashwin, it's not a good sign for Ashwin. It doesn't want to see that kind of bowling analysis over bowled by Ashwin. Sharan wanted to reverse sweep the ball. After seeing that one, Sharan is bound down the leg stump of Tanvir. Single has been taken. That brings us Santosh. The sensible thing is just I would give a single to Tanvir for Santosh and rotate the strike. That I have to do. Is the experienced fellow for young friends. That's all I have to do. No big hit, no off measure. That I give a single to Tanvir. On the other hand,
Sharan have to get the wicket. This time drives and a chance of run out at the non-striking end is gone. No chance of any run there this time also, and once again Tanvir wanted to strike and he blindly running at the striking end. He did the mistake in the previous over. That time Zubair sacrificed his wicket, and now Santosh is sacrificed his wicket. Follow wicket number 8. There's no need of these kind of runouts. And you can see the jam-packed stadium in the UCG Sunday afternoon, lunchtime, but they're sitting here enjoying the match. 43 on the board. The new man in is Sustan. He can bat, I believe. He can bat more than he's a proper batsman. He's coming down in the water, I believe. So here comes in Sharan. Follow wicket number 8, 43 on the board. After this, still one more overs to go. Tanvir has to play mentally now because he's running out of partners. This time wanted to reverse sweep, doesn't hold that on properly. The dotted one. A little bit of inquiry from the wicket keeper for stumping. And still 9 more balls to go. They have left 2 wickets. And the most settled batsman, Tanvir, is there. This time reverse sweeps finally. And it was traveling towards the covers region, wanted to sweep towards the short third man region. So Tanvir get one more single, and the side score moves up now 44 on the board. So last 2 ball left. And 44 for the loss of 8 wicket. Young friends who are worried about the wicket rather than the run rate, this time a beautifully delivered, the express one outside the house stump, and Rilwan doesn't know about that one, and young friends who doesn't mind the dotted delivery. They wanted to finish the over 7 overs quota, and good score on the board, 44 on the board for the loss of 8 wicket, and a magnificent bowling from Sharan. This time from the Shivashak, this time tries, and equally well played, sensibly played by Sastan. With the last delivery, and Tanvir at the non-striking end, he's playing so well, and give him a strike. So 6 overs completed, 44 on the board. The last over coming up. So 44 on the board. So 6 balls, 6 runs, 50 will be the score. And more than that, there will be a bonus for young friends. And they had a good bowling lineup, somebody like Zubair, Santosh, the experienced bowlers. And the new bowler, as we have to introduce from the Torpedoes. And the new bowler is Tausif from the committee box end. The 3 bowlers have completed their quota. And Sharan, Rilwan, Ashwin. And the Ashwin is the costliest one. Can't believe this. Normally is very economical, getting a wicket taker, but Tanvir. Here comes in Tausif from the commentary box, and the right arm round the wicket. This time tries, and he's gone. Straight away, Tanvir has walks back after playing magnificent innings for young friends. And very disappointed. Tanvir, 44 for the loss of 9 wicket. And a lot of congratulations from the Torpedoes Khana players. Immediately after Tanvir walks back, and they are congratulating him for a magnificent innings, and what a relief for the skipper of Torpedoes. So wanted to hit over the head of the square leg fielder, but Tausif
Ball all along the carpet and finds the fielder. Riaz is a batsman. This time outside the leg stump. And after a long time, Riaz is wearing young friend jersey. It look good to see. The good bowlers. And sides come down 45 on the board. That brings us Sustan. Takes check up the bowling of Tausif. 4 balls, 4 runs also will be due. The sensible thing for young friend Surwa. 4 balls, 4 runs you take. That's a sensible thing. Because they lost 9 wickets. And that's a good batting from Sustan. And he's reverse swing the ball and able to get the single. 46 on the board. That's a sensible thinking from Sustan. No off measure. Get the single. They're ticking the scoreboard moving. And Tausif comes in. 46 on the board. This time. And outside the leg, some chance of run out. And Basit misses it. Leg by call by the umpire. Bowling round the wicket. Tausif. And it was missing leg off stump, I believe. So one more run has been in the form of leg by. So that doesn't matter how the runs come. Young friends, all they need is the every run has been matters. This time in the air once again Sustan. Clever thinking. 48 on the board now. 48 for the loss of 9 wicket. And cleverly Sustan getting the single ticket, the scoreboard moving. And so last ball coming up. 48 on the board. 48 for the loss of 9 wicket. The last ball coming up. What will be the target for young friends? Riaz. If you get the single, 50 will they reach. It gone. Poor thinking from Riaz. He has to get the single. Every run is crucial, Mr. Riaz. The dot ball, it will not help young friend Surwa. So 50 is the target. 50 is the target for Torpedoes Khana. 49 is the target for Torpedoes Khana. And they have also good bowling lineup. Somebody like Santosh, Zubair, Riaz. They have to bowl well. And on the other hand, Torpedoes Khana, they have also good batting lineup. So it's a good match. So for further completion of this match, I request Mr. Gopi in our national language Hindi.
ಬ್ರದರ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಲೀಲಾಧರ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೇರಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26/2/2023 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 5/3/2023ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ 6 ಓವರ್ಗಳ 16 ತಂಡಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವು ದಿನಾಂಕ 26/2/2023 ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳ 26 ಹಾಗೂ ಬರುವ ತಿಂಗಳ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. 16 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಈ ಪಂದ್ಯವು 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Thank you, and back to the game, and 49 the target. At batted first, Young Friends Urva have to score. Meantime, Young Friends Urva managed to score 48 runs on the board in the stipulated 7 overs, and they set a victory target of 49 for Topaduscana, and their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. The openers for Topaduscana are Ashraf M and Basit, and Zubair, called as Manglore Express, is now starts the fresh proceedings from the commentator box end, and the first ball of their innings is now coming up. First power play over is now going to start. Still some fielding adjustments is going on there. Exactly 7 runs per over. They have to score for victory. 49 in 7 overs with the help of 10 wicket. The present equation shows for them. And the first ball of their innings is now coming up. Zubair bowls right arm over the wicket. This time outside the leg stump and starts off with a wide. Bowl 2 for outside the leg stump at the last moment. Drifting down the leg side, and umpire called it a wide, and that single run brings the second open for Topaduscana. It's 1 without loss in the first over. 1 run बन चुका है इस वक्त बिना किसी नुकसान के. जुबैर इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं. अशरफ सामना करने के लिए इस वक्त तैयार. जुबैर दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. अंतिम क्षण में गेंद लगभग बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई और आखिरकार गेंद लगभग बल्ले के बाहरी किनारे पर टकराने के बाद जब तक शॉर्ट कवर पर फील्ड बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. अशरफ और बासित आरंभिक बल्लेबाज, जबकि इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जुबैर और बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर जारी और जुबैर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम जुबैर और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है बासित के रूप में. This is an absolutely outstanding delivery. Pitching right on the block hole. Have a look at this in the replay. And a perfect Yorker in delivery. And he got the lead of the batsman. So first ball, golden leg dismissal for Basit. And Topaduscana are now lose their first wicket. It's not for 1 in the first over. And Basit now departs. तो अपने अनुभव का यहाँ पर अनावरण करते हुए जुबैर निस्संदेह परफेक्ट यॉर्कर लेंथ गेंद पे गई थी और इस गेंद पर बल्लेबाज के पास कोई बल्लेबाज का बल्ला का कोई जवाब यहाँ पर नहीं था और गेंद सीधे ब्लॉक होल पर टिप्पा खाने के बाद मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई गिल्लियां बिल्स उड़कर गिरते हुए और बासित का विकेट यहाँ पर गिर चुका है. बेशकीमती विकेट और पहला विकेट यहाँ पर खो चुका है. 1 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. निस्संदेह अगर 48 रनों के लक्ष्य के अंदर रोक कर रखना है यंग फ्रेंड्स उर्वा को, टोpaduscana के बल्लेबाजों को, तो निस्संदेह राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक बेहतरीन घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्हें देना होगा. जहां तक सवाल है टोpaduscana का, तो इस वक्त पहला विकेट गिर चुका है बासित के रूप में. अब क्रीज पर उतरते हुए नए बल्लेबाज जुनैद इस वक्त स्ट्राइक रेट पर मौजूद और इस वक्त जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है 49 रनों का, तो इस वक्त एक साझेदारी पार्टनरशिप की ज़रूरत है टोpaduscana के बल्लेबाजों को. खासकर अगर अशरफ जुनैद के साथ मिलकर एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभाते हैं तो टोpaduscana अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है. दाहिने हाथों पर विकेट जुबैर की गेंद. ये गेंद अच्छी गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
और इस बीच जुबैर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। दर्शकों से खचाखच ये मैदान इस वक्त भर चुका है निस्संदेह, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस रविवार की दोपहर को ये मैदान पर मौजूद दर्शक और रंगीन यहाँ पर बनाते हुए, और एक हाई वोल्टेज मैच इस वक्त एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ। जुबैर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद ड्राइव किया, इस बार इनफील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर वहां पर मौजूद, एक रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे और जब तक इनको वो फील्ड करने के बाद थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 3 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। 49 द टारगेट इन 7 ओवर्स, 3 for the loss of 1 wicket इन द ओवर नंबर फर्स्ट फॉर चौफिरोज खान। और जुबैर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, पिचिंग almost on the block hole and stuck to his leg at the last moment, just drifting down the leg side, and single run added in the face of leg pie, and with that single run the scoreboard moving up to 4 for the loss of 1 wicket। तो एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त जुबैर यहाँ पर दे चुके हैं। 4 रन बन चुका है एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। First over completed, it's 4 for the loss of 1 wicket, 49 the target, 45 more runs now they have to score for victory। 2000 के व्यूवर्स इस मेगा श्रृंखला का इस वक्त मुआयना करते हुए यूट्यूब पर, और निस्संदेह यहाँ पर जहाँ तक इस मेगा श्रृंखला का सवाल है तो युवरत्ना ट्रॉफी 2023 ये मेगा श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने। और इस बीच हमसे दूर वाले छोर से साई शक्तियन की ओर से गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, गेंदबाज और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार, बल्लेबाज अशरफ। तो अशरफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज अरशद बजाल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, एक्स्ट्रा कवर पर इस वक्त अजमल मौजूद है। जहाँ तक अजमल का सवाल है, एक लंबे अरसे के बाद इस वक्त यंग फ्रेंड्स में वो वापस लौट चुके हैं, और यहाँ पर लंबे अरसे के बाद यंग फ्रेंड्स उर्वा का प्रतिनिधित्व वो यहाँ पर करते हुए, और एक्स्ट्रा कवर पर इस वक्त मौजूद। कवर पॉइंट पर एक फील्डर तैनात, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट इस वक्त मौजूद, जबकि मिड ऑफ इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। वाइडिश लंगोन दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मौजूद। और जहाँ तक सवाल है दूसरा खिलाड़ी जो 20 गज के दायरे के बाहर है, शायद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात होगा, मैं यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूसरा ओवर शुरू होता हुआ। 45 more runs now they have to score for victory in remaining 36 balls, 9 wickets they got kept intact। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और इस बीच अंपायर आगे की ओर बढ़कर पिच के बीच उड़कर आए कुछ कचड़े को वो इस वक्त पिच से उठाते हुए, और इस बीच अरशद गेंदबाजी शुरू करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अशरफ। सब कुछ तैयार दूसरे ओवर की पहली गेंद के लिए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद, और दो खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है 20 गज के दायरे के बाहर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक डीप इन विकेट पर। कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद नहीं, और हर्षद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद चिप किया इनटू द गैप एज वेल। गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे इससे पहले कि डीप कवर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद की इस वक्त पंच किया था खूबसूरती के साथ, जस्ट वाइड ऑफ द एक्स्ट्रा कवर फील्डर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। 43 रन और बनाने हैं, गेंदें बाकी है 35। 43 more runs now they have to score for victory in remaining 35 balls। और फिर से एक बार गेंदबाज अरशद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, मिस फील्ड इस बीच। और इससे पहले कि दोबारा जब तक गेंद को वो फील्ड करें, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन बन चुके हैं। और अशरफ और जुनैद इस वक्त पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभालने हुए एक साझेदारी निभाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए, अरशद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, लॉन्ग ऑन और डीप इन विकेट इस वक्त तैनात ऑन साइड पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद के लिए। और फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली इस वक्त करते हुए मिड ऑफ फील्डर को इस वक्त मिड ऑन पर तैनात किया गया है, बिल्कुल सीधा मत स्ट्राइटर। और अपनी अगली गेंद लेकर अरशद इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अरशद
बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, इनफील्ड क्लियर करते हुए एक बार फिर से गेंद पड़ती हुई एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर, और जब तक अजमल गेंद तक पहुंचे गेंद को थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ, और 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। संतोष इस वक्त फील्डिंग के व्यू के बारे में कुछ बातचीत करते हुए गेंदबाज अरशद से, और जहां तक का सवाल है वाइडिश लंगोन पर जो फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया था उन्हें इस वक्त बुला लिया गया है बिल्कुल सीधा लंगोन पर, और यहाँ पर कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट, मिड ऑन थोड़ा सा वाइडर, मिड ऑफ कवर पॉइंट, और शॉट थर्ड मैन इस वक्त मौजूद। गेंदबाज इस बीच अरशद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त विकेट कीपर संतोष चूके, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में, लेकिन इससे पहले की गेंद उनके हाथों में पहुंचे बाई के रूप में दोनों बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। 10 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपने टीम का मनोबल इस वक्त बढ़ाते हुए तालियों के साथ सीटियों के साथ लगभग मैदान देखिए, मैदान के चारों ओर अगर नजर फिराए तो दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए। एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, एक त्योहार का माहौल इस मैदान पर छा चुका है, और एक हाई वोल्टेज मैच, एक शानदार प्रगति यहाँ पर करता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा और टोरपेडोस काना के बीच में। अरशद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। अशरफ सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर पर रन का खतरा, निशाना टकरा चुका है, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची थी, निशाना दागा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बिल्कुल उनका निशाना स्टंप्स पर सही बैठता हुआ, और इसी के साथ अशरफ की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, और इसी के साथ अशरफ का विकेट यहां पर गिर चुका है। तो इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं, और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा टोरपेडोस काना के ऊपर कुछ हद तक दबाव इस वक्त दिखाई देता हुआ। तो 2 विकेटें इस वक्त गिर चुके हैं, 10 रन बच चुके हैं, और इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। नन अदर देन इम्तियाज कमिंग एज नंबर 4 बैट्समैन फॉर टोरपेडोस काना। इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए और जुनैद के साथ कुछ बातचीत करने के बाद बैटिंग के रणतंत्र के बारे में वो अपने स्थान की ओर बढ़ते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और यहाँ पर बातचीत चलती हुई खिलाड़ियों के बीच पानी का ग्रहण न करते हुए यंग फ्रेंड्स उरुआ के खिलाड़ी, और यहाँ पर पानी ग्रहण करने के बाद वापस अपने स्वस्थानों पर वो लौटते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त अरशद तैयार, और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए जुनैद 2 ओवर के पावर प्ले ख़त्म होने से पहले की अंतिम गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। अरशद एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करते हुए, और जुनैद इस वक्त सामना करते हुए। अभी भी 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद के लिए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त फुलर लेंथ गेंद थी, विकेट सटते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेलना चाहता, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहता चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर एंड 39 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 7.80 runs per over at this situation. 30 balls left, 39 more runs now they have to score for victory, और एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त थामी गई है जुबैर के हाथों में, और जुबैर नया ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए। तो यहाँ पर बातचीत चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में फील्डिंग के व्यू के बारे में, और वहाँ पर इम्तियाज़ और संतोष कुछ बातचीत करते हुए, और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का, तो इम्तियाज़ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और फील्डिंग में जमावट के बारे में कुछ बातचीत करते हुए इस वक्त गेंदबाज। तो 35 मिनट के अंदर 7 ओवर के कोटे को आपको पूरा करना होगा। यू हैव टू कंप्लीट ಯುವರ್ ಕೋಟಾ ಆಫ್ 7 overs ಅಂಡರ್ 35 minutes. 35 ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ 7 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 35 ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗೆ 7 ಓವರ್ಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो इस वक्त जुबैर गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ऊपर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार हल्के से सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल और ऐसे बल्लेबाजी के लिए इम्तियाज माहिर है. पहले ही देख लिया था कि गेंद बिल्कुल लेग स्टंप पर आ रही है. हल्के से गेंद को पैर को एक साथ लाते हुए बल्ले के साथ गेंद को ढकेल दिया रक्षात्मक तरीके से कलाइयों के साथ शॉर्ट मिड विकेट पर और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर कर चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 11 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. What a fantastic match is now progressing here and what a fantastic atmosphere we are just watching in this ground. The Lords of Cricket UCG and a fantastic tournament is now progressing here in the name of Yuvaratna Trophy 2023 in the which proudly organized by Team Fortune Manglore in the memory of a late power star Puneet Rajkumar. And this tournament is now progressing along nicely. और एक बार फिर से जुबैर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया गेंदबाज की बाईं ओर से जुनैद ने लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 12 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है. इम्तियाज बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. जुबैर की गेंदों का फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए और जुबैर दाहिने हाथों पर द विकेट. ये पर अपने बल्ले को क्रीज पर वापस रख चुके हैं. गेंद लगभग उनके टांगों के बीच से इस वक्त निकल चुकी थी अंतिम क्षण में और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था. लेकिन इससे पहले कि स्टंप्स इस वक्त बिखेरे विकेट कीपर बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर वापस रख चुके थे और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था. और इस वक्त इम्तियाज क्रीज पर मौजूद और अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए दोपहर का वक्त 2:10 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ और निस्संदेह इस बढ़ते हुए धूप की तीव्रता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी बढ़ती नजर आती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है. जुबैर दाहिने हाथों पर विकेट इम्तियाज के लिए पैरों पर टकराई प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है. इम्तियाज इज नाउ बैक इनटू पेविलियन. A vital wicket for young friends Urva. Full toss गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहा और थोड़े से सफल होते हुए गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे. देखिए यहाँ पर किस तरह से हुआ था. लुक एट दिस इन द रिप्ले. गेंद उनके पैर पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल पिछले स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में. तो इम्तियाज का विकेट यहाँ पर गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियों के बादल और घने होते हुए टोरपेडोस काना के ऊपर 12 रन 3 विकेट और अपने काबिलियत अपनी क्षमता के अनुसार इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए. और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का तो नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए अन्य बल्लेबाज जुनैद के साथ कुछ बातचीत करने के बाद गिरी. वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करेंगे जुबैर की गेंदों का. तो जुबैर पिछले गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद काफ़ी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए पहले उन्होंने बासित का विकेट प्राप्त किया था अपने पिछले ओवर में और उसके बाद अब इम्तियाज का विकेट प्राप्त कर चुके. 2 विकेटें अब तक उनके खाते में जा चुके हैं और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गिरी इस वक्त सामना करते हुए. तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और जुबैर एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. यह गेंद गिरी के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद कुछ ज़्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा सही निर्णय और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 12 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 3 विकेट के नुकसान पर. 12 for the loss of 3 विकेट. दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए. दाहिने हाथों पर द विकेट. यह गेंद इस वक्त परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद और इसी के साथ गिरी का विकेट भी यहाँ पर गिर चुका है. Just change of pace at the last moment and Giri just wanted to loft that one. He's got a big gap between his batted pad. Have a look at this in the replay and the ball passed in that gap, stuck to his mid leg stump. Bells are disturbed and one more wicket fallen for Torpedoes Ghana. The problems are now more building up for them. 12 for the loss of 4 wicket and now they are looking deep in trouble with this dismissal.
तो जुबैर ने अपना काम तमाम किया है। अपने 2 ओवर के कोटे में 3 विकेटें उन्होंने प्राप्त किए हैं और उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत यंग फ्रेंड्स उर्वा इस वक्त कुछ हद तक उनका तख्ता भारी यहां पर लगता हुआ। तो इस वक्त तख्ता जरूर यंग फ्रेंड्स उर्वा का भारी लग रहा है, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाजों के लिए। और यहां पर एक बेहतर साझेदारी निस्संदेह टॉर्पेडोज खाना की भटकी हुई गाड़ी को बैक इन ट्रैक सही पटरी पर इस वक्त ला सकती है और उसके लिए इस वक्त बल्लेबाज को निभाना है एक बेहतर साझेदारी यानी पार्टनरशिप। और सिनान वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। जहां तक सिनान का सवाल है, एक बेहतर पारी खेलने की वो क्षमता रखते हैं और निस्संदेह आक्रामक स्ट्रोक करारे प्रहार वो करते हैं, उनमें वो क्षमता है। और यहां पर देखना यह है कि अपने इस क्षमता का वो अपने इस एबिलिटी का वो इस मैच में किस तरह अनावरण करते हैं। तो 12 रन 4 विकेटें 3 ओवर पूर्ण हो चुके हैं। एंड लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन 49 minus 12, that means 37 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 9.25 runs per over. 37 required in 24 deliveries. और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए अरशद और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए तो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त अरशद यहाँ पर शुरू करते हुए ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ 7 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ತಡವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो इस बीच 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर और जहां तक गेंदबाज तैयार इस वक्त बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते नहीं और की पहली गेंद ऑफ सबसे काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद अरशद की इस वक्त धीमी गेंद परफेक्ट ऑफ कटर गेंद को उछाला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद लेकिन काफी स्क्वायर संतोष वहां पर फील्डर थे और जब तक गेंद को वो दौड़कर फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था अंतिम क्षण में और हालांकि थोड़ा सा दौड़ संतोष को जरूर लगाना पड़ा लेकिन आखिरकार गेंद को फील्ड करने के बाद लौटाते हुए गेंदबाज के हाथों में और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। एक पार्टनरशिप साझेदारी की सख्त जरूरत है टॉर्पेडोज खाना को इस मैच में वापसी करने के लिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त जुनैद और सिनान जो क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज उस साझेदारी की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए एक बेहतर साझेदारी निभाने की कोशिश यहां पर करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा नॉट क्वाइट पिट गेंद कोई फील्डर वहां पर नहीं गली से शॉर्ट थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आए और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड करे फील्डर रियाज फील्डर थे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट 33 more runs now they have to score for victory. Still the battle is now continuing here and it could be anybody's game at this situation। और जहाँ तक सिनान का सवाल है इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार और सिनान के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि किस क्षमता वाले वो बल्लेबाज हैं। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है दूसरा रन नहीं मिलेगा थ्रो पहुंच चुका है यहाँ पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। और खासकर जहाँ तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है टॉर्पेडोज खाना का सिनान और जुनैद की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद ज़रूरी यहाँ पर बन चुकी है क्योंकि 4 टॉप एंडर्स के बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुके हैं। मेरे ख्याल से अंतिम रिकॉग्नाइज्ड पैर इस वक्त क्रीज पर मौजूद। इसके बाद अक्रम बल्लेबाजी पर आना बाकी है अश्विन आना बाकी है तो यहां पर गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा सिनान के लिए खतरा लेकिन अंतिम क्षण में गेंद इससे पहले की विकेट चटकाए गए बल्लेबाज के पास मौका था कि वो 1 रन प्राप्त कर सके पूरा कर सके। जोखिम भरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। हर तरीके का क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ हर गेंद के बाद हर गेंद के साथ यहाँ पर संघर्ष जारी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच। कुल मिलाकर 31 रन और बनाने हैं
और इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। अरशद एक बार फिर से तैयार, ताइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ताइनात के बल्लेबाज सिनन इस वक्त सामना करते हुए। सिनन के लिए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अरशद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट। द लास्ट मोमेंट गेंद को यहाँ पर जो फील्डर थे मिड ऑन पर अंतिम क्षण में शायद गेंद उनके ऊपर से निकल सकती थी। साजिद वहां पर फील्डर थे लेकिन जैसे उन्होंने बापा की गेंद कुछ ज़्यादा उछाल लेने वाली है, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने रोक लिया और सिर्फ एक रन यहां पर प्रदान उन्होंने किया बल्लेबाज को। 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अरशद बाउल्स अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद परफेक्ट ऑफ कटर गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त। धीमी ऑफ कटर गेंद थी और थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन बल्लेबाज के बाद दूसरा रन नहीं मिलेगा। हड़बड़ाहट में वहां पर फील्डर शायद अजमल मौजूद थे, उन्होंने गेंद पर झपके लेकिन हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से छूटी जरूर लेकिन खुद दोबारा अपने आप को तेजी के साथ संभालते हुए गेंद को फीड किया और थ्रो किया। नॉट स्ट्राइक रन पर 1 रन का इजाफा। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 ओवर्स कंप्लीटेड और मैं समझता हूँ 4 ओवर में यंग फ्रेंड्स उरुआ के गेंदबाजों ने अपनी क्षमता एबिलिटी के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी की है। फलस्वरूप इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के लिए कुछ हद तक समस्याएं खड़ी हो चुकी है लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है और एक बेहतर ओवर जिसमें कम से कम 12 से 15 रन अगर बनते हैं निस्संदेह टॉर्पेडोज खाना इस मैच में वापस आ सकता है। तो अब 29 रन चाहिए विजय के लिए। ओवर्स बाकी है 3 overs left, 18 balls left and 29 more runs now they have to score for victory. The required run rate is exactly 9.67 runs per over. अब यंग फ्रेंड्स उर्वा की ओर से अत्यंत अनुभवी गेंदबाज संतोष इस वक्त मोर्चे पर लगा दिए गए हैं और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि जुनैद इस वक्त बल्ले के साथ इस वक्त बैठे हुए घुटनों के बल इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करते हुए। और जहाँ तक जुनैद का सवाल है, इस वक्त जुनैद के लिए इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर तैनात। डीप मिड विकेट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर। डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के दरमियान एक फील्डर मौजूद है ठीक सीमा रेखा के पास। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। संतोष इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और एक बेहतर ओवर की तलाश में इस वक्त बल्लेबाज टॉर्पेडोज खाना की, जबकि एक बेहतर किफ़ायती ओवर की तलाश में गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उरुआ के। बल्लेबाजों को चाहिए रनों में एक बेहतर ओवर, जबकि गेंदबाज को चाहिए गेंदों में एक बेहतर ओवर। किफायती दैट इज एन terrific, दैट इज एन एब्सोल्युटली terrific और परफेक्ट लेग कटर के जरिए ये विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं संतोष। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। इस बार गेंद को फेंकी थी, अंतिम क्षण में गेंद थोड़ी सी दिशा बदलकर बाहर की ओर निकली, बल्लेबाज को वंचित करते हुए टॉस की गई थी गेंद और यहां पर जुनैद का विकेट गिर चुका और इस विकेट के पतन के साथ यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और इस बीच नए बल्लेबाज एक और बेहतर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल अकरम का आगमन यहां पर होता हुआ और इस वक्त वो स्ट्राइकर एंड की ओर बढ़ते हुए और 29 रन इस वक्त चाहिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 17। 29 runs to get from 17 balls. Absolutely a difficult time continuing here for the batsmen of Torpedoes Khana and a fantastic piece of bowling performance continuing here for young friends Urwa. परिस्थिति को अपने काबू में नियंत्रण में लाना है, एक कमबैक करना है, तो इस वक्त कुछ हद तक बल्लेबाजी में तेजी अपनानी होगी बल्लेबाजों को। अकरम के लिए उछाला, प्रेशर ऑफ करना चाहा इस वक्त और इस बार प्रेशर ऑफ कर चुके हैं। छक्का इस वक्त जुट चुका है। अकरम जानते थे अगर रक्षणात्मक बल्लेबाजी करेंगे तो दबाव उनके ऊपर बढ़ जाएगा। स्ट्रेट अवे पहली गेंद पर प्रेशर ऑफ किया, गेंद को उछाल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ कुछ हद तक टॉर्पेडोज खाना इस मैच में वापस आ चुका है। 26 for 5, 23 to get from 16 balls now. What a fantastic match is now progressing here. संतोष की गेंद टॉप एज, इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर या अंदर देखना पड़ेगा 6 रनों के लिए। कंसेक्यूटिव सिक्सेस और इन 2 छक्कों की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज खाना आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द मैच। 2 sixes and now the tide is slowly turning. 32 the score, 5 wickets down, 17 runs to get and 15 balls to go in their innings. What a fantastic comeback from Akram.
इस भी तैयार संतोष, ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़ा, रन आउट का खतरा, रन आउट का खतरा, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए संतोष। और इस बीच एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं बल्लेबाज, और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। 33 for 5, 16 runs to get, 14 balls remaining। संतोष इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सिनन दाहिने हाथ ओवर द विकेट। संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्लोअर लाइन, मिड ऑन लेग स्टंप पर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, चूंकि इस वक्त बोर्ड में सिनन, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 33 रनों पर। 13 गेंदें बाकी है, 16 रन और चाहिए, 16 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज। संतोष ये गेंद इस बार चूके, बेहतरीन गेंदबाजी, और यहाँ पर मैं शायद समझता हूँ गेंद समसों पर टकराई थी, लेकिन बिल से यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुए, और एक बेहतर कमबैक संतोष कर चुके हैं, जो लगातार छक्का प्रदान करने के बाद 5 ओवर की समाप्ति, 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 16 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स, और अब लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई, और देखना यह है कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त किसको सौंपी जाती है। और जहां तक सवाल है इस वक्त अकरम का, पिछले ओवर में 2 छक्का जड़ने के बाद मैच में वो वापस आ चुके हैं, उनके टीम को वापस ला चुके हैं, और यहां पर देखना यह है कि इस ओवर में क्या वो टीम को सुस्थिति में पूरी तरह ला पाते हैं या नहीं। फिलहाल गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ हमसे दूर वाली छोर से साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, तो इस वक्त कुछ बातचीत चलती हुई गेंदबाजी के बारे में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और कुछ हद तक बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा गया है नंबर 99 जर्सी पहने हुए गेंदबाज के हाथों में, जो कि इस वक्त नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए। सुस्तान एक और बेहतर गेंदबाज यंग फ्रेंड शुरुआ की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। अकरम 16 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 12 डिलीवरीज। दर्शक खामोशी के साथ इस वक्त मैच का मुआयना यहां पर करते हुए, हाई वोल्टेज मैच यहां पर प्रगति पर, और दोनों टीमों की ओर से विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त सुस्तान तैयार, फील्डिंग का मुआयना करने के बाद अकरम इस वक्त सामना करते हुए, और सुस्तान अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, अभी भी कुछ सोच विचार करते हुए गेंदबाजी के मार्ग में, और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अकरम के लिए, यह गेंद इस वक्त अकरम ने गेंद को पुश कर दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज सिनन और अकरम लंबे स्ट्रोक्स लगाने में माहिर है, और यहाँ पर गेंदबाज को इस वक्त गेंदबाजी करनी है एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ, बल्लेबाजों को खामोश रखना है अगर यंग फ्रेंड शुरुआ को इस मैच में विजय दर्ज करना है। और जहाँ तक टॉर्पेडोज खाना का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक सांसदारी। ये दोनों बल्लेबाज अगर अंतिम ओवर तक टिकते हैं तो टॉर्पेडोज खाना अपने विजय तक पहुंच सकता है, तो यहां पर ऐसा कहना मुश्किल है इस वक्त विजय किसके पक्ष में जाएगा। मैच बराबरी पर रुक चुका है, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, फील्डर वहां पर मौजूद, बाएं हाथ का थ्रो सीधे पहुंचा स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स, और 1 रन का इजाफा। 35 for 5, 14 टू गेट, 10 बॉल्स टू गो इन देयर इनिंग्स। 2 बेहतर गेंदें सुस्तान इस ओवर में फेंक चुके हैं, और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अकरम के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, मिड ऑफ पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा। 36 नाउ, 13 टू गेट फ्रॉम 9 बॉल्स। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। 3 गेंदें 3 रन प्रदान कर चुके हैं, और सिनन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सुस्तान की गेंदों का चिप किया इस वक्त लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ टॉर्पेडोज खाना इस मैच में पूरी तरह वापस आ चुका है। Just effortlessly played, and he just got that one right from the middle of the bat. Perfect struck came from the bat of सिनन, और इस छक्के के साथ अब चाहिए रन से 7, जबकि गेंदें बाकी हैं 8। तो सिनन
इस वक्त अपने टीम को मैच में वापस ला चुके हैं और देखना यह है कि अगली गेंद पर गेंदबाज कौन सा अस्त्र यहां पर प्रयोग करते हैं बल्लेबाज पर। और सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद जमीन के सहारे, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद इस वक्त पैरों पर टकराई और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 6 रन बनाने हैं, 7 गेंदें बाकी, 2 छक्के अकरम ने लगाए, उसके बाद 2 गेंद पहले छक्का जो सिनान ने लगाया था वो छक्का टोरपेडोज काना को वापस मैच में ला चुका है। और अब जहां तक यंग फ्रेंड्स हुआ का सवाल है तो ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त डॉट गेंदे और विकेटें ही इस वक्त उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो 6 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 7। सुस्तान एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो पर द विकेट, अकरम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद अकरम के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके, नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट अ सिंगल ही गॉट और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड 6 overs had been bowled. 5 runs they have to score for victory in remaining last over and the equation seems to be much easier now for Torpedoes Kana in this situation. 5 they have to score in remaining 6 deliveries. Next match, Gori Young Boys will take over KFC Kodikal. One more good match is now coming up and in this match Gori Young Boys, after won the toss, they elected to field first against KFC Kodikal and I request all the players of these two teams to get ready for the next match. तो इस वक्त संतोष गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए, अकरम सामना करने के लिए तैयार, दोनों अंपायर से कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और संतोष ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त यंग फ्रेंड्स हुआ को इस मैच में कमबैक करने के लिए और इस बीच संतोष दाहिना ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार अकरम ने उछाला है, मिड विकेट पर मौका, जी नहीं, जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ, इस वक्त कैच जरूर छूट चुका है लेकिन यहाँ पर 2 रन, 3 रन के लिए दौड़ पड़े अकरम और 3 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। छक्का हो सकता था लेकिन रियाज ने अंतिम क्षण में भापा कि वो गेंद को लपक लेते हैं तो शायद सीमा रेखा के बाहर चले जाएंगे। उन्होंने चतुर सोच के जरिए यहाँ पर गेंद को अंदर की ओर ढकेला और देखने वाली बात यह है कि जब रियाज ने गेंद को अंदर की ओर ढकेला तब उनका पैर सीमा रेखा के ऊपर वो अपने पैर को रख चुके थे या नहीं, तो तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। क्या रियाज गेंद को ढकेलते समय उनका पैर सीमा रेखा को छू चुका था या नहीं, थोड़ी देर में यहां पर पता लगेगा। सो इट्स सेफ, यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत रियाज के लिए। सेव्ड he saved just inside the fence, he just pushing the ball just inside the fence and that is an absolutely clean save। तो यहाँ पर 3 रन जोड़ेंगे और इन 2 रन जुड़ेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 46 रनों पर। 46 for the loss of 5 wicket, 3 runs now they have to score for victory और इस वक्त गेंदें बाकी हैं कुल मिलाकर 5। तो यहाँ पर बेहतर तरीके से रियाज ने गेंद को ढकेला था अंदर की ओर और जब गेंद को उन्होंने ढकेला था तो उनका शरीर सीमा रेखा के अंदर था तो इस वजह से बेहतर फील्डिंग उन्होंने की। इस बीच संतोष की गेंद, ये गेंद अकरम के लिए हल्के से गेंद को पहले स्वीप कर दिया। इस वक्त स्टंप्स को कवर करने के बाद 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 47 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड नाउ जस्ट 2 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 4 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, 4 गेंदें बाकी और सिर्फ 2 रन चाहिए।
विजय के लिए। और देखते हैं यहाँ पर 4 गेंदों में किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त संतोष करते हैं। इस वक्त विकेट कीपर संतोष और अजमल कुछ बातचीत करते हुए शायद सारे फील्डरों को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुलाने की योजना है। और इस वक्त 5 से 6 खिलाड़ी, इस वक्त 6 से 7 खिलाड़ी कहना पड़ेगा 20 गज के दायरे के अंदर तैनात सिंगल रोकने के प्रयत्न में। 2 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी। संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, सिनान के लिए दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार चूके, डॉट गेंद एंड नाउ 2 रिक्वायर्ड, 3 balls रिमेनिंग। स्टिल द मैच इज नाउ अलाइव। और एक और डॉट गेंद निस्संदेह बल्लेबाज को इस वक्त दबाव में ढकेल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर रन्स अगली गेंद पर बनाने में बल्लेबाज सफल होते हैं या नहीं, और संतोष क्या अगली गेंद पर डॉट गेंद फेंकते हैं या नहीं। सिनान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। संतोष दाहिना हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद एक बार फिर से चूके, अब 2-2, 2 गेंदें 2 रन बनाने हैं। और अकरम इस वक्त जाते हुए स्ट्राइकर एंड पर, और सिनान से वो कुछ कहते हुए कि भैया 2 गेंदों पर आपने रन नहीं बनाया, लेकिन अगली गेंद पर आपको रन बनाना जरूरी है। और यहाँ पर 2 रन बनाने हैं, 2 गेंद बाकी हैं। अगर यह गेंद भी डॉट होता है तो निस्संदेह कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स हुआ इस मैच में वापस आ सकता है। तो 2 बेहतर गेंदें यहाँ पर संतोष फेंक चुके हैं। और तो यहाँ पर जहां तक टोरपेडोस काना का सवाल है, तो टाई अगर मैच होता है तो भी टोरपेडोस काना विजय रहेगा। सिर्फ 1 रन बनाना है विकेट कंपैरिजन के आधार पर। यह गेंद इस बार उछाला मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और गेंद को रोकने में इस वक्त असफल हो चुके हैं। और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ Torpedoes Kana register a thrilling victory against young friends Urva with just 1 ball to spare, and with that 5 wickets thrilling victory with just 1 ball to spare. They are through to the next round of this tournament. So what a fantastic match ended just a short while ago. And the next match, one more big match is now coming up. Gori Young Boys will take over KFC Kodikal, और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद यहाँ पर। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डे, पहली बार मेरे काबिल दोस्त सतीश को मैं अब अंग्रेजी में माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूँगा जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो इस वक्त मैच शुरू होगा केएफसी कोडिकल और गोरी यंग बॉयज के बीच एक छोटे से अंतराल के बाद। So man of the match of this match, award goes to the man who changed the picture of the match on the sides of Torpedoes Kana, and he scored 19 runs into his credit and beaten Akram adjudged the man of the match for his wonderful knockoff, 19 runs including 2 massive sixers. And I request Mr. Akram of Torpedoes Kana, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizer. As well as I request the captain of Young Friends Urva also to please come on to the dais and receive the momentum for to participating in this tournament from organizer. So next match, one more good match is now coming up. KFC Kodikal will take over Gori Young Boys, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English with the next match we will going to commence. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Thank you very much, Gopi. What an outstanding finish for this match. Good afternoon, cricket lovers, and once again back to this match, back to this
final day of this cricket tournament. Now it's a time for the presentation of Man of the Match award, which goes to the game changer of this match. Akram of Sarpados Khana will go into collect the Man of the Match award from our chief guest. I request Mr. Raj Kunjatwail to present this Man of the Match award for Akram for his absolutely fantastic performance when the match is looks to be out of the hand. He just came and delivered 2 sixes, 18 ball 29 required. That time he just came in and hitting 2 sixes, changing the complexion of this match. Congratulations, Akram, for your good performance. And absolutely he deserves this Man of the Match award. But very good match. Winning and losing is a part of cricket. But both the teams really played with very good cricket, with the true spirit of the game. 2,000 viewers witnessing this, and 4K viewers witness this match. Absolutely, that shows the popularity of Underarm cricket and popularity of these two cricket teams. I request the captain of Young Friends Urua, please come here, collect your memento for the representation. ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂದಾನಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹರ್ಷದ್ ಯಾರಾದರೂ ಬರಬಹುದು. Representative of Young Friends Urva, please come here, collect your memento as well as flower pot for the representation for this cricket tournament. So one more big match is coming up for Gori Young Boys takes on KF Sikodical, and KF Sikodical in the morning they defeated Sneha Malamar with a thrilling victory and last ball victory for KF Sikodical against Sneha Malamar. Now Gori Young Boys, they got a bye in their first round and they are now playing against the KFC Kodigal. So Gori Young Boys, they're playing their first match, being the runner-up of the first edition of Yuvaratna Trophy. Now Arshad Bajal, captain of Young Friends Urva, collecting memento from Raj Kunjatwail for the representation. Thank you very much, Arshad. Well played. Hard luck. What a fantastic day for cricket here. Absolutely. Just I'm missing some golden moments of this cricket tournament, and especially this match and the previous match, KFC Kodikal versus Sneha Malamar. One of the best match, but I witnessed in the mobile watching that tournament, watching that match. Absolutely one of the best match, and now it's going to be one more good match. After winning the toss, captain of Gori Young Boys elected to the field first. The first ball and from the commentary box, and no fall. Right arm over the wicket to Shakir. Shakir drives that one, but not really getting that much of enough timing in that stroke. It's not coming from the middle of the bat, but still it's a single for Shakir with that single. KFC Kodikal off the mark, and Shakir is got his first run from the bat. One without loss of any wicket. Just coming back to the fielding set here. Unikrishnan behind the stump. Short fine leg, short third man. Short square leg. Mid wicket, short mid on. And the fielder in the deep, wideish long on. One at deep, long off. Short extra cover, short cow point. Naufal right arm over the wicket. Balls to Tazuddin. Tazuddin that swings that one, but ball just missing his bat. Ball just passing around his legs. And rightly so, umpire Divakar, so experienced umpire, knows that ball just well within the reach of the batter, and dotted delivery.
The field umpire, umpire Divakar, at square leg umpire Roland Pinto. And in the third umpire, Mohan Ayadi. Now fall right up over the wicket balls. Tazuddin tries that one, try to hit the ball pretty firmly, but not really getting that much of timing behind the stroke because of that line is so good from the fall as ball went towards a short mid-on region. One more addition to total. Scoreboard numbers on to 2 without loss of any wicket. This time beautifully balled. Ball is not too far away from the up stump, if you mind you. If you want to see it in the replay because of that ball which is not really far from the up stump. It's a fantastic piece of bowling. Just look at that one in the replay. The ball just missing the off stump, and wicketkeeper behind the stump, Unnikrishnan. Of course, coming back to this Unnikrishnan behind the stump. And after a long time of watching the senior players of Goriyang boys playing together, Unnikrishnan, Riaz, Karna, Naufal and Shivaraj. This time going for the drive, not quite getting that one from the middle of the bat. Absolutely it's good to see because when these all players are playing for Goriyang boys dominated, isn't it? But after a long time I'm seeing that even especially the Unnikrishnan is in a present day is not a regular player for Goriyang boys. But having him in Goriyang boys, especially behind the wicket, always it's going to be a bonus for team Goriyang boys. Coming back to the KFC Kodikal, of course, in this particular season, they have to prove, and they have to win one big title. Again, outside line of off-stump batsman going for the right chance of run, directed and is gone. Tazuddin is out of the crease. It absolutely looks like it's going to be a suicider. Tazuddin just sacrificing his wicket. Have a look at that on a replay. The ball is outside the line of off-stump, and Shakir going for the drive. And look at the now fall on his follow through. Absolutely good work. Direct it's always going to be danger. The batsman Tazuddin is back into pavilion. 2 for the loss of 1 wicket. Just coming back to this tournament, Yuvaratna Trophy 2023 Season 2, which is proudly organized by Team Fortune. The edition 1, everyone remember that edition 1. The 2 different teams came into the final, and of course Goriyang boys becomes the runner-up. If you believe me or not, the 5-star Adur, they have become the champion in that edition 1 by qualifying from the local pool, and they defeated the top team of the Mangalore pool, Goriyang boys, in the final. Now Goriyang boys, being the runner-up of the previous edition, they desperately wanted to be in the final. They doesn't want to miss the opportunity here to reach to the final and get the title. But at the same time, KFC Kodigal knows that they got a lot of success in the previous 2 editions. But in this particular edition, season 22-23, yet to open the account as far as winning the big title is concerned. From the far end, Ashik. Right arm over wicket. Shakir swept that one very nicely down to deep mid-wicket region. The fielder in the deep mid-wicket region. Little bit fumble. And batsman got ample time to complete the couple of runs. Pajwal, the fieldsman there, the deep long on. And because it's a too straighter and ball went too squarer towards the mid-wicket region, so that ample time for Shakir to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Very bright sunny afternoon out here in this most beautiful UCG cricket ground. Ashik will go into ball from the far end. Right arm over the wicket ball. So just swept that one very nicely. No need to run for that. Ball just went towards a deep backward square leg boundary for 4 runs. Fantastic sweep shot there from Shakir. One of his signature cricketing strokes. Just have a look at that one, a replay. Nothing wrong with the line of the delivery, isn't it? But Shakir is so good as far as the technique of playing the sweep shot is concerned. It's not a orthodox sweep shot, but in this particular sweep shot you can see that the batsman putting extra effort by putting some power, so that ball is went very quickly down to deep backward square leg boundary for 4 runs. Now fielder from mid wicket coming little bit into the little bit finer after seeing that stroke. Ashik balls. Shakir once again set that one very nicely down to deep backward square leg region. Going to be a 1 more boundary, back to back boundary. Absolutely intelligent cricket there from Shakir. Why this man is known to be a robotic
This is the one reason I want to say you. This is not a easy for the bowler when he was moving here and there. And really the bowler is in a confusion where to pitch the ball, which line to go into ball. Because Shakir is so good in that particular cricketing stroke. Now, straight away, the square leg fielder is situated. And mid-wicket fielder going towards a deep long on. Ashik. Right arm over the wicket, tries that one beautifully down to deep long on region. The captain of the side, Gori Young Boys, captain of Gori Young Boys. Karna down at deep long on. So batsmen have to settle for the single. With that single scored, moves on to 13 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Ashik. The very talented young bowler, but condition is not that much of so easy because they are playing against one of the top team of South Canara district, KFC Kodigal. Now Ari Harris will go into face next delivery. Driven that one, bounce back drive, well stopped, it's gone. Absolutely fantastic cotton ball is been taken there by Ashik. What a catch that one. This is not an easy catch to take in the book, I will tell you, because the batsman driving the ball pretty hardly back to bowler. Just a look at the reaction time. Just a fraction of second, he need to react to that one. Got a hand onto that, deflected from the hand. And he's not missing the opportunity, golden opportunity to take the catch. Good comeback by bowler Ashik. But what the kind of damages which is required in the second over of power play, Shakir already did the damage. 2 boundaries in that over, takes a comfortable score for KFC Kodigal, 13 for the loss of 2 wickets, 6.5 runs per over. It's a good comeback here by Ashik after considered 2 boundaries. Then he bowled 2 very good deliveries. The 1.5 deliveries. Last ball remaining in this over. Seven hours match is in progress here. The fielding team need to be very careful about the time sense, what we are talking about. 35 minutes, which is allotted time to complete your 7 hours quota. Now left-hand batsman is on strike now. Afrid, maybe the new face for KFC Kodigal in this season. Driven side to the hands of Yuvaraj. He's not really moved at all. Where he was standing in the edge of the circle, the ball went straight to him, and Ashik strikes twice. Ashik strikes twice in this over, consecutive 2 deliveries. That means the broken hat-trick will be continued from the next over. He picked up 2 wickets in the last 2 deliveries. Then he got a hat-trick opportunity when you're going to start his second over. But question raising here is that whether he will be the bowler who can bowl the second over. 2 bowlers can bowl 2 overs. Being the expensive, a little bit expensive, but not that much of expensive. After conceding a boundary, he picked up 2 valuable wickets of KFC Kodigal. Just we are talking about a new pace. What Afrida has got. Have a look at that one. The delivery what ball that ball by Ashik in the replay. Absolutely, that ball came along the carpet, isn't it? Just have a look at it on the replay. Absolutely dust which is coming out of the pitch. And the batsman drives the ball, and ball went straight to the hands of Shivaraj at a short cow point. Now the new batsman in, we are talking about a new face, another new face for KFC Kodigal. It's a Karthik, the little master from neighboring district and neighboring state. That is Kerala and Kasaragod district. Outside the line of leg stump, going to be a wide. Starts with the delivery, which is a wide called by umpire Divakar. Naufal is bowled at bowling that second over of his quota and the third over of the innings of KFC Kodigal. Naufal bowling away from us. Right arm over the wicket balls. Ashik Shakir drives that one straight to the hands of Shivaraj. Shivaraj is looking so good in that wherever he was standing. Is fielding very well. No question of getting past that fielder. And here is again Naufal. Alright, over the wicket balls to Shakir. Shakir going for the big show. That ball is not really carried to the fielder, isn't it? Everyone got that. Of course, the supporter of KFC Kodigal, they got a heart in their mouth when the ball is in the air.
It looks like it's going to be a carry to the fielder, but Shivaraj is standing in the edge of the circle and ball which is landed safely. 15 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Just talking about the little master. It's a small in a size, but just like we are talking about, that's a famous slogan in English. Don't judge the book by its cover, and you don't judge this man by its size. He's such a fantastic performer who can be very handy. And the previous match also, he played a very good game of cricket for his team. Ooh, swinging and missed it. And Karthik might be a little bit surprised why the umpire not given a wide, but well within the reach. Absolutely well within the reach of the batter. The very good decision there from Divakar. 15 for the loss of a 3 wicket. Need to respect the decision of umpire. That's what the players have to do. 15 for the loss of 3 wicket. Of course, the wide decision is up to the main umpire. It's not that the square leg umpire will going to give the decision. It's that the main umpire will going to judge the business, because the bowler Naufal is bowled a leg cutter and ball just came along the carpet, along the around the ground, around the legs of Karthik. Karthik just missing opportunity, isn't it? He can hit the ball down to fine leg and square leg region. It's 15 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. 3 in progress. Ashik Naufal bowling with a short run-off. Right arm over the wicket to the right-hand batsman Karthik. Of course, everyone need to see that the true spirit of the cricket is so important. Of course, even umpires also, the human beings, they are not the god. They are human beings. Even you can see that in the international cricket also having that much of advanced technology. We are watching some mistakes. Oh, big wide, absolutely big wide. Wide +1, 2 more to the total. 2 more to the total is scoreboard numbers on to 17 for the loss of 3. And over number 3 in progress. Naufal might be a little bit looking for some extra pace, and by doing that, he is just missing the line, which is far away outside the run of off stamp. A bonus run here for KFC Kodikal. Naufal right arm over the wicket. Robotic here for you. What a magnificent reverse sweep. What a magnificent reverse sweep from Shakir there. Intelligent, isn't it? He's very intelligent cricketer. Just have a look at that one in replay. How easily done that one. You can't get that kind of the player anywhere. One who got ability of playing in a single hand. He can sweep the ball with a single hand. He can play the reverse sweep in a single hand. So 21 for the loss of 3 wicket. Naufal. Right above the wicket. Went for the sweep shot. The ball hitting somewhere. Wait for the umpire signal. It's from the bat. And Shakir has got a little bit dust into his eyes. That's what is in a problem. Because, of course, in a UCC cricket ground, we can see that after the pitch will going to dry, we can get a lot of dust is coming out of the pitch. While running, it's sometimes it's happening. The dust is going to hit your eyes. And now I think some watering to his eyes to get that dust out of the eyes. 22 for the loss of 3 wicket. What a fantastic game is progressing here. Gori Young Boys versus KFC Kodikal. One more high voltage match. Just have a look at the crowd here. Absolutely jam-packed stadium. This is what I want to see in a cricket field. Because of course we are the opposition, but not the enemies, isn't it? We are only the opposition. We are not the enemies. We are all the friends. And this is what I want to see in the cricket field. That will going to lift the true spirit of cricket. Helping each other. The captain of Goriambas Karna helping Shakir to get the dust out of the eyes. And looks like now Shakir is good enough to continue his batting. 22 for the loss of 3 wicket. Third over is in progress. KFC Kodikal looking in a good position. And Karthik will go to take the strike. Naufal have to do something special. If you wanted to restrict the runs, they need to pick the wickets. It's 22 for the loss of 3 wicket. Naufal right arm over the wicket bowls. Shakir this time beautifully bowled, but not that much of beautiful to call that
the fair delivery because absolutely the extra deviation, the extra turn in that ball, so that ball defeats the bat. Umpire Divakar has got evidence enough to get that to signal that wide. The somebody was either way. Karna, the fielder is moving to a different way. Ball went towards a different way, and before the fielder from deep extra cover region to run towards a deep cow point region. Karna, the fielder there in the deep, ample time for Karthik to complete that couple of runs. And in that couple of runs, Coburn moves on to 25 for the loss of 3 wicket. The over number 3 completed. 8.33 runs per over run rate progressing here for KFC Kodikal. So what a fantastic day of cricket we are witnessing here, isn't it? The one match which is a little bit disappointment end, which is a match between KCCR Kadri versus NM cricketers on the Manglore. Otherwise, all we can see that the good matches the witnessed here for the day number final of this prestigious cricket tournament. After this match, followed by one more good match, Sri Mangaladevi cricketers will going to take NM cricketers Mangalore. Looks like the bowling change. The bowling change from the far end. Because Ashik is bowled his first over from the far end. He's taken off. He got a broken hat-trick actually after he picked up 2 wickets in the last 2 deliveries. But here is a bowling change from the far end. Ansar brought into attack. Right arm over the wicket to Shakir, just what I'm talking about, single-handed sweep, single-handed reverse sweep, and he got the single for that. Very difficult, isn't it? Very difficult. Once Shakir gets settled in the middle, then very difficult for the bowler to pick his wicket. Not only very difficult to pick the wickets, at the same time very difficult to which line to bowl for the kind of that technique what Shakir is implementing for getting a runs. 26 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Ansar this time bowls to Karthik. Karthik going for the drive, not quite getting hold of that one properly, but still he managed to get the single down to gully revision and repercussion backward point revision. And with that single score was on to 27 for the loss of 3 wicket. Just we are talking about the senior player of Gori Young Boys. We are talking about Unni Krishnan, talking about Riyaz Shivaraj. All that's really the stars of Gori Young Boys. This time lofted, and ball is not really getting the distance. The mid-wicket fielder takes a wonderful catch. This is the wicket what Gori Young Boys really required in the situation. The shuttle batsman Shakir is back into pavilion. The Prajwal, the man there in the deep mid-wicket, taken a very good judgment catch in the deep. Absolutely good catch. The Shakir's innings comes to an end, but I think he did the damage. He did the damage with the kind of is required in the second over of the power play. He got some boundaries, and now it's a 27 for the loss of 4 wicket. And Gori Young Boys definitely they got opportunity to tighten up the screws. So Shakir's innings is so important, and a very good bowling change there from the captain Karna, bringing Ansar into attack. And Shakir a little bit in aggressive frame of mind, try to hit the mid-wicket region, try to hit the ball mid-wicket region, but he's got a fielder there. Oh, this time I feel for leg before wicket, but ball just looks like oh my God, direct it. Now I want to see the Roland Pintos are never expecting that the which throw is coming from the fielder directly into the stump. He was almost interested to signal that ball is going down the leg stump. But the fielder, I want to see the which fielder did a great job. It seems to be a presence of mind there from the fielder. Harris, the fielder, has got a presence of mind.
picking the ball, seeing that the batsman is jogging in the non-striker's hand and he hits the stump. But now we need to see that when the bails are off, when the direct hit is taken place, whether the batsman is safe or not. Third umpire will going to give the decision here. The batsman is safe. Akim, seeing the body language of Akim, looks like he's going to be safe. But a good thinking there by Harris, isn't it? If it is a little bit negligence from Akim, definitely going to be a huge wicket. Definitely he drags the bat in the last moment, otherwise he's out. Absolutely is out of the crease. And he did a great job to drag the bat in the right time. Answer right arm over the wicket, balls to Karthik. Karthik tipped that one! And ball going and going, but carried to the captain of Gori Young Boys. Karna takes the catch. Karthik didn't quite get that one middle of the bat. Just have a look at that one. Not enough forward, just a wrist work comes into play. But it's not quite enough to get the distance. And Karna taking the catch comfortable in the deep long on. The wickets are tumbling, runs are coming for KFC Kodigal. It's a 28 for the loss of 5 wickets. Last ball remaining in this over. 28 for the loss of 5 wicket. Ansar will go into ball that final delivery. Chetan is a new batsman in as a number 7 batsman for the side. Now 2 fresh legs, 2 new batsmen are for KFC Kodigal in the middle. Gori Young Boys has a golden chance, golden opportunity to tighten up the screws. This time, beautiful shot, leaning into the drive there from Chetan, but still he's not impressed with himself after hitting the ball. He's maybe thinking about, I want to play a little bit wider, almost towards the cow point. I can get some boundary for that. But a single there for Chetan, and with that single score was on 29 for the loss of 5 wickets. It's going to be very interesting here. And 3 overs remaining, and we'll see how many runs KFC Kodigal will going to get here. But it's not a bad score, and just under 8 runs per over the net progressing here for KFC Kodigal. And before the next over, we're going to start the time to change in commentary box as well. And it's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. And Gopi, 29 for the loss of 5 wickets. Runs are coming, wickets are falling, but everything is going in this match. And certainly it's going to be very important to see that Gori Young Boys being the runner-up of the next first edition, and they desperately wanted to be in the final of this edition as also. But they need to play very good game of cricket because they're playing against one of the best team, KFC Kodigal. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया गोरी यंग बॉयज पिछले साल की रनर अप टीम रही है, तो यहाँ पर अगर इस साल के भी फाइनल मैच में उन्हें अगर पहुँचना है तो बेहतर प्रदर्शन देना होगा, खासकर इस मैच में जो कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट KFC कोडिकल के खिलाफ उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है। 29 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जहाँ तक अगले मैच के बारे में जिक्र किया जाए, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स विल टेक्स ओवर NM Manglore. One more good match is now coming up right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately for make a sign in the official chart. Just gone for a mighty heave at the last moment, first delivery just missing outside the off stump and went into the hands of wicket keeper, and there is no possibility of any run. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है और साहिल इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। दाहिने हाथों पर विकेट चेतन के लिए शफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर उन्नी कृष्णन के हाथों में। और जहां तक उन्नी कृष्णन का सवाल है, इस आज वो गोरी यंग बॉयज का प्रतिनिधित्व यहां पर करते हुए एक अरसे के बाद और निस्संदेह एक बेहतरीन विकेट कीपर के रूप में जाने जाते हैं गोरी यंग बॉयज की ओर से। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, अंतिम एक्शन में शॉट फाइन लेग पर बेहतर फील्डिंग वहां पर डाइविंग लगाते हुए गेंद को उन्होंने फील्ड किया और थ्रो किया काफी तेजी के साथ। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, सारे खिलाड़ियों ने उनका अभिवादन किया तालियों के साथ। और नौफल फील्डर थे शॉट फाइन लेग पर जिन्होंने इस गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया था। और
इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला तो 29 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई दिशाहीन गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में गेंद फील्ड होते हुए वाइड का इशारा अंपायर दिवाकर का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी अनुभवी दोनों अंपायर इस वक्त मैदान पर मौजूद, श्रीमान रोलैंड पिंटो और श्रीमान दिवाकर। 31 नाउ द स्कोर, 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और श्रीमान मोहन बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल इस श्रृंखला के नियुक्त किया गया। श्रीमान रोलैंड पिंटो, श्रीमान दिवाकर और श्रीमान मोहन आज यहाँ पर अंपायरिंग का कार्यभार करते हुए इस श्रृंखला के अंतर्गत। और गेंदबाज शाहिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, ना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार टॉप एज गेंद, फील्डर थोड़े से पीछे आते हैं इस वक्त मौजूद, और आखिरकार रन से बल्लेबाज को मिला एक। शिवराज फील्डर मौजूद थे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता हकीम ने, लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद हवा में रही कुछ देर तक, लेकिन शिवराज थोड़े से पीछे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 32 5 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को स्कूप किया फील्डर, ओ इस बार मिस जजमेंट और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पहले सोचा कि गेंद को लपका जाए, लेकिन अंतिम क्षण में भापा की गेंद उनके आगे टिप्पा खा रही है, अपने आप को संभाला और रोकने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद उनके सिर के ऊपर से होकर सीधे मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। तो इस मिस जजमेंट की बदौलत 4 रन इस वक्त बल्लेबाज चेतन प्राप्त कर चुके हैं, और स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है इन 4 रनों के साथ 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। दाहिने हाथों पर द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप पर आती हुई कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। बेहतरीन गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बच चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। KFC कोडिकल की पारी में सिर्फ 2 ओवर का खेल अब बाकी, और जहाँ तक का सवाल एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का KFC कोडिकल का, तो कम से कम 50 के आंकड़े तक इस वक्त उन्हें पहुंचना होगा, क्योंकि गुरियंगबाज के पास जो बल्लेबाजी में गहराई है, उस गहराई को अगर नाप तोल कर देखा जाए तो यहाँ पर KFC कोडिकल को कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुँचना होगा, या फिर 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो इस वक्त गेंदबाजी हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज प्रारंभ करते हुए 2500 के व्यूअर्स इस मेगा श्रृंखला का सीधा प्रसारण इस वक्त देखते हुए YouTube पर, जो कि बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए आशिक, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार हकीम इस वक्त सामना करते हुए। काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ, केवल 4 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ओवर की पहली गेंद आशिक की रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद की लाइन को भापते हुए अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेल दिया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रोक्स किस तरीके से भी खेले, लेकिन रन न मिलना इस वक्त ज़रूरी बन चुका है बल्लेबाजों को। और फिर से एक बार गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, ना तो ऊपर द विकेट नेक्स्ट से बाहर की ओर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े, और 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। काफ़ी वाइड कोरियन बॉयज़ के गेंदबाज अब तक फेंक चुके हैं, और निस्संदेह फलस्वरूप इस वक्त तोहफे के रूप में रन प्राप्त करता हुआ KFC कोडिकल, और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 6वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो द विकेट बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 39 रनों पर। और फिर से एक बार आशिक का गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज हकीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर ने तेजी के साथ गिल्लियां बेल जरूर उड़ाए, लेकिन बल्लेबाज इससे पहले अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके थे, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। और जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन नहीं मिलेंगे। 39 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया कि पिछले साल की उप विजेता टीम रनर्स अप गोरियंग बॉयज़ रही है इस युवरत्ना ट्रॉफी 2022 एडिशन 1 में। और उस
सफलता के सिलसिले को जारी रखना है तो यहाँ पर मैच में जीतना जरूरी बन चुका है उनके लिए। बेहतर गेंद, बेहतर स्टॉप इस वक्त किया था, जरूर नौफल अपना संतुलन खो बैठे, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। जी थोड़ी कोशिश जरूर की थी अपने जूतों के जरिए गेंद को रोकने की, लेकिन आखिरकार ठीक तरह से रोक नहीं पाए और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और आशिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इनात ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची, इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 22 का इशारा अंपायर का और 22 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। लंबा ओवर यहाँ पर प्रगति पर गेंदबाज आशिक का, काफ़ी गेंदें इस ओवर में वो अब तक फेंक चुके हैं, अपनी अगली गेंद लेकर तैयार था, इनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछाला मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। परफेक्टली स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ लवफर। इस बार गेंद को उछाला था चेतन ने, और देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था। एब्सोल्युटली गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड द प्लेसमेंट वाज एक्सक्विजिट एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट स्ट्रोक। बेहतरीन स्ट्रोक, और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, और कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 6 overs completed, 46 runs on the board, 5 wickets lost, and now just a last over remaining in their innings. तो आज का 5वां मैच यहाँ पर खेला जाता है। इस मैच के बाद एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूँ, इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स और NM मंगलूर के बीच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त, निवेदन, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों टीमों के सदस्यों से एक बार फिर कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें, ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करें। और गेंदबाज साहिल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ KFC कोडिकल की पारी में ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था, इनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका इस 1 रन के साथ 47 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 47 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। बल्लेबाज अपने जूतों के फीतों को इस वक्त बांधते हुए, और बांधने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार साहिल की ओर की अगली गेंद का चेतन सामना करते हुए। इस वक्त साहिल दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सफल होकर इस वक्त खड़े हुए स्टंप्स को एक्सपोज कर इस वक्त स्ट्रोक उन्होंने खेला था, लेकिन आखिरकार मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 48 रनों पर। 48 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 7th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में गेंदें बाकी है 4, और साहिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को छाला, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, फील्डर का थ्रो जब तक पहुंचे स्टंप्स पर टकराए, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है अंपायर दिवाकर द्वारा। देखने वाली बात यह है कि जब स्टंप्स पर गेंद टकराई थी, गिल्लिया बेल्ट्स ऑफ हुए थे, तब बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं। तो तृतीय अंपायर यहाँ पर उस रनआउट का परिशीलन न करते हुए
नो डाउट द डिक्लेरेशन केम फ्रॉम द थर्ड अंपायर और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर, 49 रनों पर और 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। साहिल और चेतन इस वक्त सामना करते हुए इस वक्त करना, जो कि गोरी अंगबाज के कप्तान है, इस वक्त गेंदबाज के पास आकर उन्होंने कुछ बातचीत की फील्डिंग के व्यू के बारे में, फील्डिंग के सजावट के बारे में। और इस वक्त गेंदबाज साहिल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात, ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, पुल करना चाहता, चूंकि बेहतर गेंद थी, धीमी कट, कुछ हद तक धीमी गेंद थी, कटर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 39 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात, ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Absolutely fantastic struck made by played by the batsman Chetan, just shuffling across the line a little bit and pulls that one into the gap as well and he finds the gap as well। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 53 रनों पर और चेतन इस वक्त एक बेहतर पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए 3 चौके अब तक वो झड़ चुके हैं। और जहां तक सवाल है गेंद का, तो एक गेंद बाकी इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद को इस वक्त उछालना चाह, नॉट क्वाइट मेडली गेट, इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर और 7 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है KFC कोटिकल की पारी में। सो KFC कोटिकल finished up with 54 for the loss of 5 wickets in the stipulated 7 overs and now the target for Goryang boys is 55. They have to score for victory, just under 8 runs per over they have to score for victory. And that means exactly calculation is going to be 7.86 the required rate for them at this situation। 55 they have to score for victory in their stipulated 7 overs with the help of 10 wickets। The present equation shows for them। देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं, तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक तब तक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर गोरियंग बॉयज की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, Gopi. So back to this match, 55. It's a very good total now. KFC Kotikal able to get 55, going to be a target for Goryang boys. And but considering the fact that with the ball which is used for this cricket tournament is definitely going to be a little bit hard in the nature, and you can't say anything in this match because of the hardness of the ball.
Even Gori Young Boys just seeing that the batting department, the deftness in the batting department and experience the batting department what Gori Young Boys got. Definitely the KFC Godikal need to work hard from the bowling if they wanted to win the match. But so far I think KFC Godikal captain must be pleased with the performance of their batter to getting 54 runs, a very good total in 7 overs. Meanwhile, opening batters came into middle. As always in this particular season, Naufal and Riaz recognized the opening pair for Gori Young Boys in this season, and wait and see how well they will going to get the start for the team. Signal came from umpire Roland Pinto sir, and Satya Sarup, our scorer, receiving the signal, and everything is ready here for the pass ball. Umpire will going to note the time as far as rules and regulation of this cricket is concerned. Each and every team has to follow the time sense. It's very important. And now umpire noting the time. It's a 3:21, and here is the first ball. Now fall from the far end. Right arm over the wicket, balls to Riaz. 55 is going to be a target for Gori Young Boys. Short mid up, short extra cover, short cop and short third man, the offside field. Here is the first ball. Now fall right arm over the wicket, balls to Riaz. Riaz going for the drive, but a little bit away from his body. He wanted to push the ball, beaten by the pace of the ball, and there is no chance at all for any run. Bowler Chetan brought into attack from the far end. Chetan, everybody knows that is a one very useful cricketer and very useful bowler. Right arm over the wicket starts with the next ball with a little bit going away from the batter. Not little bit, but too far. Going away from the right-handed batsman batsman Riaz, and wicketkeeper behind the stump did the rest. First run coming here for Gori Young Boys. One without loss of any wicket. Beautifully balled, sharp incoming delivery. One of the weapon what Chetan always loves to do. It is one of the dangerous ball in his career. He picked up a lot of wickets for that delivery, but luckily that ball Riaz has got a bat in the last moment. Otherwise that ball almost targeting to the midland leg stump with the pace, and Riaz has got his first run from the bat, and 2 runs without loss of any wickets. Now fall. The batter who can be the very handy in the power play over, and deep long on and deep mid wicket is of 2 fielders outside the circle for Naufal. There is no protection is given in the deep in the offside region. Very interesting field set as Chetan again bowling from the far end. Right arm over the wicket, balls this time drives that one, but Karthik there in the short cow point region, one of the good fielder in that region, quickly moving to his right and denying the runs from these 2 batters, and much required dotted delivery. Each and every dot ball will going to create the problem for Gori Young Boys, because they're not chasing a small total, they're chasing a total of 55 to win the match to qualify for the next round of this prestigious cricket tournament. Chetan again bowling with a short run up. Right arm over the wicket, balls. Naufal drives that one right in the gap, beats the infield, and good fielding there by the fielder. Of course, lucky fielding in spin fact, because he's not stopped the ball from the hand, but ball just hitting his legs, so that the ball of course stopped a little bit. Otherwise definitely it's going to be a chance of a boundary there. Iqbal, the fieldsman there in the short mid off, one of the best fielder in that region. 4 without loss of any wicket. Karthik balls. Now full went for the reverse save. Ball is in there. The fielder drops the catch. The ball running down to the deep boundary for 4 runs. This is a lucky boundary. This is a lucky boundary. Have a look at that one and replay. The fielder trying his level best to take the catch, and just is trying his level best. Oh my goodness. Ball is just looks like he's got that one. And ball just touching his hand, going towards a deep third man boundary for 4 runs. Imran, the brother of Iqbal, and straight away the Iqbal coming to Imran, having some word. What man, what are you doing there? It's going to be a chance of catch. You need to grab this opportunity. The 8 without loss of any wicket. Chetan to ball from the far end. Gori Young Boys has got a start. Right arm over the wicket. Chetan might be not really able to get the grip, perfect grip to deliver the ball. That's why he's just stopping a little bit and going back to his bowling mark. Chetan bowling from the far end. Right arm over the wicket. Balls now for Love. Oh, what a fielding! He saved it, certain boundary. He saved a certain boundary. I think Afridi is a fieldman there in the short square leg region. Absolutely good effort, isn't it? Just have a look at that one in replay. Swept that one very firmly.
Ball went very quickly, isn't it? And look at the fielder's effort. Absolutely good one, isn't it? Diving to his left always is difficult, isn't it? When you are diving to left is a very difficult one for the fielder. And he dived to his left, saving a 3 runs for his team. But still, it's a good start for Goryang boys. 9 without loss of any wicket. Just have a look at that. If the face of Naufal, a little bit disappointed because they know exactly that he will be the one who definitely got a chance to get the boundary for that sweep shot. But unfortunately, the ball stopped by the fielder. Now, 55, they're going to be a target. 9 which is deducted. And that means 46 more runs required for the victory. 46 required from 36 ball. The difference between run and ball, exactly the 10. By seeing the nature of the ball, I don't think it will going to be a big difference between run and ball. The 10 is definitely going to be achievable. 1 boundary and a 6 is quite enough to reduce that difference. But I think KFC Kodigal, they knows that they need to increase that difference between run and ball in each and every over. Then there can be an opportunity for KFC Kodigal to win this match. Vinith, one more new face in KFC Kodigal. Lot of new entries for KFC Kodigal in this particular season. This is one more. Vinith, bowling left arm. This time, Naufal swept it hard down to deep pocket square leg region. Fielder behind the ball, and he got a very good stop in that occasion. Just a couple of runs. Once again, the Iqbal, the man there in the short mid-wicket region, running back towards the deep mid-wicket region. The fantastic sprinting here from Iqbal. Just a couple of runs here. With that couple of runs scored, number 11 on the board without loss of any wicket. Naufal is looking in a good touch. No, exactly, he is playing his last over of the power play. Oh my goodness, oh my goodness. A good intelligence. I really need to appreciate this man Vinith, because he know exactly Naufal is going for the reverse sweep. Then he's changed the line so cleverly, and Naufal almost looks like he's really struggled to get the ball to his bat, but dotted delivered. This time swings it hard, top edge, and ball will go into land it safely. And again that couple of runs here for Naufal. Oh my goodness. A dog which is relaxing there in the mid-wicket region, and that it's a 13 for the without loss of any wicket. Maybe dog which is really dreaming there, but that ball is really broken the dream of that dog. 13 without loss of any wicket. Second over is in progress. This time reverse stroke, ball is in there, and 1 bounce collected by the fielder. Excellent work. Chance of run out in the strikers, and oh my goodness, Naufal is struggling to reach his home when the throw coming from the deep. And look at that one. If it's a direct hit, it's going to be all over for Naufal. So just like what happened to Shakir when they're batting, when he's got a dust in his eyes, then all the players of Goryang boys helping him. Now Naufal is fell down, and all the players of KFC Kodigal just going there and try to help them. And the same man Shakir is going there to Naufal and just asking him, will you? I think he's just asking. I think you are good enough, and. So this is what you call that good sportsman spirit. Now scoreboard, it's 15. Thank you, Shakir. Not only looks for looks for everything, but he's looking even the scoreboard as well, and is saying that the ball the one run which is short mucher than what Goryang boys got. It's a 15, not the 16. 15 without loss of any wicket. Vinith again bowling away from us. Right arm over the wicket balls to Naufal. Left arm around the wicket. Delivers. And this time Naufal gets that one single. It's a little bit outside the line of off stump, and
Naufal will go in to keep the strike for the next over. 2 over completed after completion of over number 2. Chasing 55 to qualify for the next round. Gori Young Boys 16 on the board. That means in that particular over, they got 7 runs. And that means it's a good over. Good over there from a very young, talented bowler, Vinith. I think KFC Kodikal really choosing one best bowler to bowl in the power play over. Vinith, the new face, justifying himself by bowling that good over. 7 overs, it's not 7 runs. It's not an easy job for any new bowler to come and perform in this big tournament against a big team. And I think the Vinith is really did a great job. Now equation 16, which is deducted from 55. That means 39 more runs required for the victory in 24 deliveries. 30 balls, 30 ball and 39 runs required for the victory. The difference between run and ball is coming down from 10 to 9. Before the start of the over number 2, it's a 10 difference. That's what Gori Young Boys wanted to do. Each and every over, they wanted to reduce the difference between run and ball. But KFC Kodikal wanted to increase the difference between run and ball. It's again mistimed lofty stroke there from Naufal. But again, that lucky that Naufal, that ball is landed safely. Karthik is trying his level best to reach there, but it's away from him down at extra cover. One more addition, 17. And after a long time, Riaz back on strike. He's out of the strike for a long time, isn't it? He did got enough for strike. Only 2 balls, can you believe this? Out of this 3 overs, 2.1 overs, he got only 2 deliveries. This time Riaz. Oh my goodness, good stop there by Shakir. Once it looks like batsman driven that one firmly back into the bowler. Looks like going to be a cotton ball, but it is after one bounce collected by Riaz on its collected by Shakir. Oh, that's a big wide, absolutely sure, big wide. Maybe the Shakir is looking for the extra pace experiment, which is not really up to the mark. One more extra, score moves on to 18 without loss of any wicket. Shakir again. Item over wicket. Riaz going for the drive. Oh my goodness, Naufal is gone. Riaz not giving any opportunity for the Naufal. Can you believe this? Naufal. Will it go into a big mistake here? I want to see. Because Naufal is looking so good in the middle. Of course, you can't underestimate the potential of Riaz. But at the same time, you need to see that Naufal is he's a well-settled batsman and got a lot of runs from his bat. Unfortunately, he's back into pavilion. Gori Young Boys have lost a huge wicket. It's 18 for the loss of 1 wicket. The bowler's back drive. And Naufal thought it might be a single. Riaz is not interested. And where the bowler Shakir is so quick on his follow through, complete the formalities of run out. It's 18 for the loss of 1 wicket. Deepak, promising, dangerous left-hand batter, came into the middle. The wait and see how he and Riaz will going to get the partnership here. But a very good partnership of 18 runs which is comes in. Shakir, right arm over the wicket, balls to Riaz. Riaz drives that one, set to the fielder again, mix up. Oh, this time Riaz definitely going to be a little bit struggling here. They're appealing for the run out and umpire Divakar referring for the third umpire to give the decision. It's definitely going to be a disaster if the out which is a call from umpire is going to be disaster for Riaz. He doesn't want to lose one more wicket here. This time Riaz is interested. Then Deepak is not interested. Have a look at that one in replay. It's a very close. With the throw which is coming from the fielder. Then wicketkeeper Hakim is always very quick hands. The quick hands always required to get the result in the favor of fielding team. But at the same time, I think the batsman safe. And Mohan Ayadi, third umpire, and decision which is came from Mohan Ayadi, the third umpire, that the batsman is a safe. It's a not out. 18 for the loss of 1 wicket. Will Riaz will going to capitalize this opportunity. Shakir setting a field. Deep long off, deep long on. Deep mid wicket, deep backward square like the fielders are in the deep.
in the offside. Only cover point is there. There is no deep cover point. Very interesting field set. In front of wicket, lot of protection has been given. Shakir from the far end. Right arm over wicket, balls Riaz. Riaz drives it on and Karthik misfielding that one. Of course, Karthik's first attempt to take the catch, but quickly realizing that ball is falling short of him. And ball just spinning and defeating him. Couple of runs here for Riaz. With that couple of runs scored, moves on to 20. 35 more runs required for the victory. The over number 3 is in progress. Shakir bowls. This time Riaz going for the drive. Deepak is not responding for the run. There will be a certain single. But Deepak doesn't want to lose the wicket in the form of run out. After seeing now fall back into pavilion. 20 for the loss of 1 wicket. 3 overs completed. It's a 20 for the loss of 1 wicket now. Last 4 overs remaining. 24 possible delivery remaining, excluding wides and no balls. And they have to get another 35 runs to win this match. The difference between run and ball that remains the same. That means that the 6 runs which came from that last over. The next match, Sri Mangalore Cricketers versus NM Cricketers Manglore. May I request all the players of both the teams kindly complete the formalities of signatures and complete the tossing ceremony. Please get ready for the next match. Now, no change in bowling. Vinith, one who bowled a very good power play over, is been asked about continue from the commentary box end. Now, Deepak, the condition absolutely favorable for the left-hand batters. But capitalizing that condition is so important, because the direction of the wind always going to help the left-hand batsman. The mid-wicket square leg and behind the square, always the scoring zone for the left-hand batters. The wait and see. The captain of KFC Kodikal. Does he playing a gamble here? The bringing, of course, inexperience. Maybe it's inexperience for playing for KFC Kodikal, but might be the very experienced. Before that, we are not seeing him in UCG ground, but he may be the very good performer in his places. Who knows? Vinith balls. This time, ball is in there. Opportunity for the fielder to catch. Again, the ball is landed safely. And Karthik is coming back for a second. And ball misses the stumps. Dear, look at that. The disappointment here from KFC Kodikal. Because the ball is in there for a long time. Deepak wanted to hoisting it over to the market, but not really getting the proper connection. Ball which is in the air for a while. Karthik trying for the catch, but ball landed safely. Not only that, safe, but a couple of runs, very important couple of runs. Even the opportunity of run out was also created in the striker's end. 22 on the board. Vinith balls, went for the safe shot. Appeal for leg before getting in. Deepak again not running. Oh my God, now Riaz lost his patience, isn't it? This is the second time looking here that Deepak might be feeling a pressure here. I don't think it is going to be a pressure, but he wanted to deal with all the deliveries of this over. Maybe there's a game plan that is, I wanted to deal with at least one or two big shots will going to come from his bat. Will going to be benefits his team. Wait and see. Vinith left arm. Balls again the top edge. Again the ball is landed safely. What really going here for Deepak? But KFC Kodikal again thinking about what the thing is going wrong. Every time ball is in the air, ball will be going to land it safely between the fielders. Deepak is definitely dealing with some luck, but he need to capitalize that luck into beginnings for Gori Young Boys if they wanted to win the match. 23 for the loss of 1 wicket. 32 more runs required for the victory. One big over which is badly required for Gori Young Boys if they wanted to back in this game. But KFC Kodikal doesn't want to do that. And so far this young man, Vinith, really doing a fantastic job, handling the pressure so well.
justifying the decision of their captain. Riaz back on strike now. He's batting on 3. Facing Vinith. Left arm bounce. Drives that one. Beautiful shot down to deep extra cover region. It shot the fieldsman there in the deep extra cover. Just a single here. The captain of Cape Psychotical nearly not bothered about the single. Here, you know exactly need to restrict the boundaries and sixes. So far they succeeded. 24. Just a couple of boundary which came from the bat of Naufal. But he is back into pavilion. Going for the drive. Missing it completely. One more dotted delivery. Things now going against Goryang boys. 24 for the loss of 1 wicket. What an outstanding bowling performance continues here from Vinith. Final time. This time hits that one. Ball is just rocketing towards the fence. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. What Deepak wanted to do here is that at least one big shot he wanted to hit, but he's choosing the last delivery for that. Look at that stroke. How quickly that ball is went towards a deep fine leg region. Little bit outside the line of leg stump. And batsman swinging his bat. And ball went like a tracer bullet. Now 28 is the score. And 27 required run. 18 balls remaining. Just like I mentioned, each and every over, that the difference is coming down and coming down. And before the next over we're going to start, is the time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, 28 for the loss of 1 wicket, 27 to get. Equal battle is on. And what do you think about this position? Will it going to be possible for Goryang boys to win this match? Because by seeing the nature of the ball, Gopi, anything is possible in this particular match. And anything else, Gopi, the Deepak, one who really looks pretty good after the shackling start, he got a 1 boundary. That will give a lot of confidence for the batsman Deepak. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त पॉसिबल है अगर एक ओवर में 10 से 12 रन बनते तो निस्संदेह गोरियांग बॉयज इस मैच में वापस आ सकते हैं। और पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर दीपक का चौका कुछ हद तक आत्मविश्वास का ऑक्सीजन भर चुका है इस वक्त गोरियांग बॉयज की पारी में। देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 29 रन 1 विकेट के अनुसार पर सिर्फ 1 विकेट इस वक्त गोरियांग बॉयज ने खोए हैं, यानी 9 विकेट सुरक्षित है। और यहाँ पर इस वक्त उन्हें कुछ हद तक बल्लेबाजी में तेजी लानी होगी। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, 55 रनों का लक्ष्य है, 26 रन और चाहिए, 23 गेंदें अब बाकी। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं शाकिर और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के गेंदबाज शाकिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑफसाइड पर, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। इससे पहले डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता। ही जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद को खेला था स्क्वायर ऑफ द विकेट अंतिम अक्षर में डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर। तब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 31 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 24 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदें बाकी है इस वक्त 16। 24 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमाइनिंग 16 डिलीवरीज। और गेंदबाज एक बार फिर से शाकिर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चिप किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है दीपक के बल्ले से और ये चौका मैं कहूंगा इस वक्त गोरियांग बॉयज को इस मैच में कुछ हद तक वापस ला चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक। गेंद को इस वक्त उछाला था लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से एक टिप्पे के बाद। और अब इक्वेशन सीम्स टू बी अ मच इजियर नाउ फॉर गोरियांग बॉयज। 20 रन चाहिए, गेंदें इस वक्त बाकी है 15 और निस्संदेह एक और चौका इस वक्त गोरियांग बॉयज की इस मैच में पूरी तरह वापस ला सकता है। शाकिर इस वक्त तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, स्टंप्स पर टकराई और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो चौका झटने के बाद अगली गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना चाहता और यहां पर भुगतान उन्हें करना पड़ा। गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और सीधे जा टकराई स्टंप्स पर। 35 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। और मैं समझता हूं सतीश
यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक इस वक्त खेला था। चौका प्राप्त करने के बाद अगले गेंद पर स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक उन्हें खेलना चाहिए था। इस बार उन्होंने रिवर्स शॉट खेलना चाहा। शायद उन्होंने भाप लिया था कि वहाँ पर फील्डर कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है डीप बैकवर्ड थर्ड बार पर इस वक्त, इसलिए उन्होंने रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन भुगतान उन्हें करना पड़ा और उसका विकेट गिर जाने के बाद एक बार फिर से कुछ हद तक दबाव गोरियांग बॉयज के ऊपर आ चुका है। Absolutely, Gopit. A highly irresponsible cricketing stroke, isn't it? After getting all the runs in the form of orthodox cricketing stroke, no need to play the unorthodox cricketing stroke, Gopi, because especially against Shakir, he's an intelligent bowler and he know how to bounce back, isn't it? After getting a punishment, and Deepak need to see that the Shakir is a kind of bowler who got ability of bouncing back and playing that kind of cricketing stroke, Gopi, absolutely irresponsible cricketing stroke, and losing Deepak in this moment definitely put one step back, I think, Goryang boys from the victory. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर एक स्टेप पीछे जा चुका है गोरिया इस बार विकेट खोने के बाद दीपक के रूप में। अब करना का आगमन हो चुका है, करना सामना करने के लिए तैयार, ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 36 रन बन चुके हैं 2 विकेट के अनुसार पर। इट्स 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 14 डिलीवरीज। रियाज और करना काफी अनुभवी बल्लेबाज गोरियांग बॉयज की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो रियाज इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और गेंदबाज शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, एक गेंद इस ओवर में बाकी और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। तो बड़ा विकेट रियाज का स्ट्रोक है इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, रन नहीं अंदर। बेहतरीन फील्डिंग यहां पर करते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फील्डिंग shown by the fielder of long off area। इस बार जैसे ही उन्होंने भापा, गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने वाली है। Have a look at this in the replay। अपने ऊपर की ओर लगभग आधे से 1 फीट ऊपर छलांग लगाते हुए उन्होंने गेंद को ढकेला सीमा रेखा के अंदर और इस बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत सिर्फ एकमात्र रन यहां पर गोरियांग बॉयज प्राप्त करता हुआ। और अब द स्कोर इज 37। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है, क्या इस वक्त गेंद को ढकेलते समय फील्डर का कोई शरीर का अंग सीमा रेखा को टकराया था या नहीं, देखने वाली बात है। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है। तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार यहाँ पर लेते हैं। तो निस्संदेह एब्सोल्युटली दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग और बेहतरीन फील्डिंग, एब्सोल्युटली सतीश। और इन हालातों में ऐसे फील्डिंग काफी हद तक उनके टीम के लिए लाभदायक साबित होते हैं। Why not, Gopi? Absolutely, absolutely, because they run only single run for that, isn't it? Because they thought that it got a 6. That's why not really run between the wicket. They got only single. But what a save, Gopi! Absolutely magnificent, isn't it? All the body which is in the air, but umpire have to see that when you are making a first attempt, whether he's inside the boundary line or not, he's inside the boundary line and he saved the 6. Absolutely, Satish. This is an absolutely fantastic save made by the long off fielder. Just a single the batsman got. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 for the loss of 2 wicket and 4th over। 5 overs completed, 37 for the loss of 2 wicket, 18 runs to get from 2 overs। और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य इस वक्त कुछ हद तक कठिन हो चुका है। अब देखना यह है कि ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है चेतन का, इसमें बल्लेबाज गोरियांग बॉयज के किस तरह कमबैक करते हैं। 18 रन इस वक्त पर आने हैं, बचे हुए 12 गेंदों पर और चेतन इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए। अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज गोरियांग बॉयज की ओर से करना और रियाज इस वक्त मौजूद। दोनों बातचीत करने के बाद एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी के मार्क पर पहुंच चुके हैं और चेतन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। 18 रन्स रिक्वायर्ड आफ्टर इन रिमेनिंग 12 बॉल्स। ओवर की पहली गेंद चेतन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। तैनात ओवर द विकेट रियाज के लिए, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और 17 रनों की दरकार, 11 गेंदें बाकी। करना इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और करना का जहां तक सामर्थ्य का सवाल है, इस वक्त करना ने कई मैचेस में गोरियांग बॉयज को विजय दिलाया है निर्णायक मोड पर। और यहाँ पर इस मैच पे भी उनकी ज़रूरत है गोरियांग बॉयज को। एक छक्का इस वक्त गोरियांग बॉयज को इस मैच में वापस ला सकता है और देखना यह है कि करना उस छक्के
को यहाँ पर लगा पाते हैं या नहीं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए चेतन इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर को पीछे भेज दिया गया। डीप थर्ड मैन पर डीप कवर पॉइंट फील्डर को आगे बुला लिया गया 20 गज के दायरे के अंदर, और मिड ऑफ पर एक फील्डर तैनात। चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद लेग से काफी बाहर करने के लिए खतरा, लेकिन एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। अजीब और गरीब ढंग से इस वक्त गेंद को खेला था अंतिम क्षण में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ये गेंदबाज चेतन ने इस वक्त देख लिया था करना रिवर्स शॉट खेलने वाले, लेग स्टंप पर उन्होंने गेंद को फेंकी, और आखिरकार सिर्फ एकमात्र रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज अपने अगली गेंद लेकर चेतन इस वक्त तैयार था। इन्हें तो पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज के लिए ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। The ball came along the carpet and beat the batsman's bat and also beat the wicketkeeper at the last moment. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए, और चाहिए इस वक्त चौके और छक्के इस वक्त गोरियंग बॉयज को इस मैच में कमबैक करने के लिए। फिर से एक बार गेंदबाज चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए करना सामना करने के लिए तैयार, करना के लिए उछालना चाहा, इस वक्त गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद अंतिम क्षण में बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी वंचित कर गए, और शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को शाकिर द्वारा फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए 14 रन और चाहिए इस वक्त विजय के लिए, और कुल मिलाकर 8 गेंदें उनकी पारी में बाकी। 8 balls left, 14 more runs now they have to score for victory। चेतन एक बार फिर से तैयार ये गेंद करने के लिए, रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। He just played that one with a twisted bat and finds the gap as well. This is an absolutely outstanding strike came from the bat of Riaz, और इस गेंद पर इस इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक के जरिए वो चौका प्राप्त कर चुके हैं, और इस चौके के साथ वो गोरियंग बॉयज के उम्मीदों को यहाँ पर बरकरार रख चुके हैं। अब 7 गेंदें बाकी, और रन्स इस वक्त चाहिए 10 runs to get from 7 balls। अगर मैच टाई होता है तो विकेटों का आधार यहाँ पर देखा जाएगा। जहां तक सवाल है इस ओवर की अंतिम गेंद का, तो गेंदबाज इस ओवर में तैयार है अपनी ओर की अगली गेंद जब किया, इस बार गेंद लोगों सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ गोरियंग बॉयज आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द मैच। छक्का इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला था, देखिए किस तरीके से इस वक्त वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर। अब इक्वेशन सीम्स टू बी अ मच इजियर फॉर देम, just 4 required, 6 balls remaining, 14 runs scored in this over। और सतीश यहाँ पर ये ओवर गोरियंग बॉयज के लिए कमबैक करने के लिए सहकारी हो चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा विजय के द्वार गोरियंग बॉयज के लिए खुल चुके हैं इस अंतिम ओवर में। Absolutely, Gopi, especially the last 2 deliveries. Especially the last 2 deliveries, Gopi. The boundary and the sixes. That is the one, I think, changing the complexion of this game. What a fantastic 2-stroke, Gopi. One is delicately played, intelligent cricket there from Riaz, and the very next one, I'm seeing that Riaz once is performing for Gori Young Boys when he was in a good form. That's after a long time I'm seeing that kind of cricketing stroke from the bat of Riaz. Outstanding stroke, Gopi. Outstanding cricketing stroke, because there is nothing wrong with the line of the delivery. You can't blame a bowler for that, but you need to appreciate the effort of the batter, and it's definitely going to be a magnificent stroke, Gopi. And now 3-4 to get last over. And if you're able to get a 3, it's I think going to be enough for Gori Young Boys to win the match as far as the fall of wicket is concerned. 4,000 viewers enjoying this cricket match in live telecast. एग्जैक्टली सतीश, सिर्फ 3 रन निकाला तो भी काफी होता है बिना किसी विकेट खोए। अंतिम ओवर में गोरी यंग बॉयज को दाहिने हाथों पर विकेट करने के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार हकीम की गेंद थी, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ विजय के और निकट यहां पर हो चुका है। 3 रन अब बनाने हैं, 6 गेंद बाकी, और हकीम इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार करना इस वक्त सामना करते हुए, और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद चिप किया करना ने, लेकिन मैंने समझता गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन गेंद यहां पर टिप्पा खा चुकी है वाइड इस लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है।
तो सिर्फ एक रन यहाँ पर दोनों बल्लेबाज ने दौड़े और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 53 रन पर। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, एक अरसे के बाद रियाज की इस तरीके की बल्लेबाजी का नज़ारा हमने देखा इस मैच में। चौका और छक्का उन्होंने झड़ा था अपनी टीम को वापसी करने में सफल। इस बार बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ कट किया। इस वक्त एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इन 2 रनों के साथ गोरी यंग बॉयज रजिस्टर्ड अ विक्ट्री ऑफ 8 विकेट्स अगेंस्ट KFC Kodikkal, and with that victory they are through to the next round of this competition. So very good match ended just a short while ago, and now one more good match is now coming up. NM Manglore will takes over Torpedoes Khana in the next match, and that match starts within just short while. और देखते हैं एक और बेहतर मैच यहाँ पर इस वक्त शुरू होगा। और माफ कीजिए, मंगला देवी और NM मैंगलोर के बीच में इस वक्त मैच खेला जाएगा। और मंगला देवी क्रिकेटर्स जो कि पहले राउंड में उन्हें बाई मिला था, यहाँ पर दूसरे दौर में उनका सामना इस वक्त हो रहा है NM मैंगलोर के साथ। तो मंगला देवी का सामना होगा NM क्रिकेटर्स मैंगलोर के साथ और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा। चंद लम्हों बाद, तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। तो इस मैच में न्यू फ्रॉम द सेंटर दैट स्किपर ऑफ श्री मंगला देवी आफ्टर वन द टॉस they elected to field first against NM Manglore. That match is now going to start within just a short while. So man of the match of this match award goes to the batsman who performed brilliantly with his bat, scored 18 unbeaten runs. Riyaz of Goryang Boys adjudged the man of the match. I request Mr. Riyaz of Goryang Boys, please come on to the dais and receive the man of the match award from the organisers, as well as the captain of KFC Kodikkal. I request the captain of KFC Kodikkal to be reported here to receive the momentum for the participation of this tournament. So the match ended just a short while ago. Next match, NM Mangalore will take over Sri Mangala Devi Cricketers, and we'll be back right after the short break with Satish in English when the next match will going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So Riyaz, for his wonderful batting performance of 18 runs unbeaten, and he adjudged the man of the match of his brilliant batting performance. He is receiving the man of the match trophy with Mr. Chandu, one of our organisers, and best of luck for Riyaz, and best of luck for the rest of the matches of the tournament. And I once again request the losing side captain, Mr. KFC Kodikkal, the captain of KFC Kodikkal, please to be reported here to receive the memento to participating in this tournament. KFC Kodikkal ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು KFC Kodikkal ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು.
What a thrilling finish for the one more good match in front of you spectators and Gauri young boys class that they through to the next round. Now Bangladevi, after winning toss, selected to field first. Here is Yajnesh first ball, right arm over wicket and Asif Adur straight away. He gets a single by drive the ball towards the deep whitish long on region, and with that single NM cricketers Manglore they're starting their journey in this particular match. Bangladesh cricketers, of course, one of the most historical and popular team in South Kent district. Is updated on Mansoor down to deep long on region before the fielder from the whitish long on will going to get there. I don't think we're going to get there, and Mansoor will got the good start from the bat. Quite surprising to see that the fielder which is situated in the whitish long on, very whitish, almost in the cow corner. So Mansoor quite deliberately, just have a look at it with a stroke of what played by Mansoor. It is just a wrist work. And with absolutely wrist work, nothing much bad in that, more than anything else. Just have a look at it on a replay. Absolutely terrific wrist work. You know exactly where the fielder is. Once he get past that infield, then it's going to be a boundary there. The long on is very wider, so that Mansoor has got a good start from the bat. 5 without loss of any wicket. Yajnesh ball set up again, up and over, down to deep cow point region. Again the chase here for the fielder. Will it going to ball winning the race? Ball which is going to be stopped just inside the boundary line. And before that the batsman coming for the third as well. Again the wind is offered there by Yajnesh, and batsman Mansoor going after that ball. The boundary which is signal by umpire, because that ball is stopped after touching the roof. After touching the roof, that ball is stopped, and that's why umpire has given a boundary 9 without loss of any wicket. Again nicely driven down to deep whitish long on region for a single by Mansoor. Mansoor is on fire. Intention is very clear that they wanted to capitalize that fielding restriction in the power play. 10 runs which is came from that over. Yajnesh is looking little bit expensive. Left arm round the wicket bounce. Drives that one. Straight drive. Straight into the stumps. Non-striker stumps. And just a single here for Asif. Unfortunately, because if the ball misses the stumps, the opportunity for Asif to get the boundary. Powerfully driven back. 11 without loss of any wicket. Yajnesh away from us. Left arm bounce. Again chip that one. Over the top of infield. It's going to be a one bounce. Over the roof for 4. And wait, signal. Oh, it's a signal. It's a 6. And just have a look at it one, because we are not here having a perfect view what really happened. And ball just dropping just over the boundary line. And the score jumps into 17 on the board without loss of any wicket. Mansoor got a flying start. Already scored 15 runs in that over. What a start here for NM cricketers Mangalore. The first over itself, the runs started to flow. Now Mangalore cricketers have to do something special. Usually Kiran one who is always starts the proceedings, but seeing that Yajnesh in the present cricket is a much better bowler, he got a very good record in the season. That's why captain asking him to bowl, but it's become too costly. 17 without loss of any wicket. Captain Munna himself now coming from the far end. To Asif Adur, NM cricketers Mangalore, one more favourite team to qualify for the final of the prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy. This time top edge, and Yatiraj is in the right position there at mid-on. The mistimed cricketing stroke there from Asif pays the penalty for that. Bangladesh cricketers captain has got a very important breakthrough. The Asif Adur is back in the pavilion. It's 17 for the loss of 1 wicket.
17 for the loss of 1 wicket, and Munna will go into ball. The new batter is came into middle for NM Cricketers Mangalore. Azim, one more very good striker of the ball. Azim picked up a single. He's off the mark with a single. With that single scored moves on to 18 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. 18 on today on the board. Deep wideish long off. Deep wideish long on. The fielders are in the deep for Mansoor. And Mansoor already starts very well in the previous over. The typical Mansoor in the first over. And we'll see how we'll going to continue his explosive batting, destructive batting in this particular over. Munna now keeping the fielder in the mid wicket. And in the deep long off. Munna from the far end. Right up over the wicket. Nothing much difference in this over. One bounce over the rough. What a batting display here for Mansoor. Just like I'm mentioning about four gory young boys, Riaz is just getting his natural rhythm. And here is Mansoor for NM Cricketers Mangalore. You're watching the similar Mansoor when he was representing for young friend Surua. And is really dominating the bowler. Now the domination which is continues in the second over. It's second over as well. 22 for the loss of 1 wicket. Driven up and over. Again the down to deep cover point region. The chase here for the fielder. And before the fielder to run back to field the ball. Ample time for Mansoor to complete that couple of runs. 24 for the loss of 1 wicket. Runs are coming like a fast flowing waters of the rivers. Mansoor is dominating this power play overs. Manabas, what a shot! What a shot! This is an unbelievable struck there for Mansoor. Can you believe this? How effortlessly he played that one. You can't get better than the wrist work from this man. Just have a look at that one. Absolutely terrific. You can get that kind of cricket stroke only in international cricket. Getting that distance, hitting that tennis ball, cricket ball into the fence is not so easy. Again, a sensible batting there from Mansoor. What a batting display here for Mansoor. Outstanding batting display. 31 for the loss of 1 wicket to over number 2, which is completed. 15.5 runs per over. NM Cricketers Mangalore really cruising towards a huge total. The Mansoor is unstoppable in 2 overs. I want to see how many runs he scored here. Hits 2 sixes and 3 boundaries. 28 runs scored by Mansoor. That means one of the quickest run as far as in this particular cricket tournament is concerned. Has scored that runs in just 8 balls. He scored that 28 runs. Absolutely killing instinct of Mansoor is today in this particular match. It's unbelievable. Now, just like I mentioned about, Kiran is the one who always starts the proceeding for Mangalore Cricketers. But now he's coming in after the power play. Wait and see how we'll go into ball. They need to restrict the runs of the opposition. Kiran from the commentary box and left arm over the wicket. Mansoor drives that one, not quite intended. He wanted to drive that one in the offside region. The fact that he little bit early into the stroke, but went towards the deep long on region. With that single score, moves on to 32 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. There is a short third man. One fielder at deep cover point, deep long off, deep long on is there. Deep mid wicket is there. And wideish long on. Other 5 fielders outside the circle for Azim. Kiran left arm. Bows beautifully driven down to mid wicket region. Right in the gap. Running down to deep wideish long on boundary for 4 runs. One more quality cricketing stroke. Look at that one, where he's picked that one on the middle stump and off the toes. It's an exquisite timing behind the stroke, isn't it? Even though having 2 fielders in the deep in that region, but they all are the spectators watching the ball going into the fence. 36 for the loss of 1 wicket. Kiran again, left arm.
Oh, beautifully balled plumb in front of wicket. Celebration immediately from Kiran. That he know exactly hitting in a right line. And Azim tried to play across the line, tried to repeat that stroke. But this time Kiran is knowing for the bouncing back. And he hits a right, it's a leg right in front of the middle stump. 36 for the loss of 2 wickets. Asim is back in the pavilion, has scored some runs for his team. Just a 5 runs in out of 3 balls. Small cameo, which is comes to the end of Azim. Replacing him is for that wicket is a new batsman walking towards the middle. Ayaz, one more experienced campaigner. Ayaz is the one who started his career for playing for South Sporting Jaipur as an all-rounder. Now he is after that is coming to NM Cricketers Bangalore in the last 3-4 seasons. The useful middle order batter for the NM Cricketers Bangalore. Now Kiran, after getting the wicket here, they needed one good over badly for Mangalore cricketers. After that, the valuable runs which is scored by Mansoor. And now Ayaz, a little correction. Yes, Ayaz placing his first delivery. Going for the sweep shot, going for the single run. Damodar couldn't manage to reach there as a little bit fumble from him and the wicketkeeper fumble from him. One more addition to total. 37 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. Now Mansoor back on strike. All the runs he scored in the power play. Wait and see how he will going to do. How he will going to bat after the power play. Kiran again bowling from the committee box and left arm round the wicket. Driven that one down to long off. Chance here for the fielder. Just like I mentioned about all the runs which is scored by Mansoor in the power play. And need to see how he will going to bat after the power play. And he's just getting the fielder in the deep long off region. Might be one of the safest strokes to play in the power play, but not after the power play. And fielder in the deep, Ashwin Kumar completes the catch. Not Ashwin Kumar, it's Yajnesh is the one who completes the catch. 37 for the loss of 3 wickets. Ashwin Kumar is in the bench. Just seeing him bringing a water. I'm very surprised to see him why he was not in the playing 11. Such a useful cricketer. So Mangalore cricketers now right time for them to tighten up the screws. Of course they considered some runs, but still they got an opportunity to bounce back because they dismissed a big wicket of Mansoor. Fantastic innings comes to an end for Mansoor. Entertainment innings, played some enterprising cricketing stroke. Swept that one very nicely down to square leg region. They're running hard. One more good all-rounder came into middle for NM Cricketers Manglore. Riyaz. Good over there from Kiran. Absolutely good over. Even though he conceded in that over one boundary from Azim, but he's bounced back very well by picking up 2 valuable wickets. This is a Kiran for you. Now maybe the Munna, the captain of Mangalore cricketers, thinking about why I not introduced him in the power play over. The 38 for the loss of 3 wickets. 3 overs completed, 4 overs remaining. So bowling change from the far end. It's going to be a introduction of the new bowler from Sai Shakti end. Riyaz will be the batter. The first ball outside the leg stump. Batsman going for the big swing of the bat.
Of course, Reyes knows that the wind which is flowing in that direction in the onside region, so that even he knows that it's going to be wide, but he wanted to reach the ball so that he can get the big shot here. But ball just missing the stump, missing the bat, and umpire not missing to signal the wide. So with that single, Skopa Namuzanto, 39 on the board. Again swings that one, but not getting that enough bat onto that, just a single. The fine leg fielder, the captain of Mangalore cricketers, Munna, fields the ball and back to bowler. One more single. With that single, Skopa Namuzanto, 40 on the board. A very good score on the board for NM Cricketers Mangalore. In the fourth over is in progress, but still Mangalore Cricketers, they able to restrict NM Cricketers Mangalore 55 to 60. Definitely is going to be achievable. This time, catch it is a call, but Damodar fails to collect the ball, collect the catch, and here they're going for the run, chance of run out. Again they missed it. Oh my goodness, you believe me or not, 3 opportunities in that single deliveries. One is a caught behind the wicket. Second one is a run out in the striker's end. Third one is a run out opportunity in the non-striker's end. And 3 opportunity in one ball missed out by Mangalore cricketers. So 41 for the loss of 3 wickets. This time Riaz tried to hit the ball pretty hard. Again that ball going down the leg stump. It's not a good start there from Guru. Is operated from the far end to restrict some runs. Of course, after getting 2 valuable wickets in the previous over, Mangalore cricketers have to restrict the runs because they already considered a lot of runs in this first 2 overs. Guru, Riaz, lofted high and not enough. Oh my goodness, can you believe this? That fielder really, that might be the very easy catch, isn't it? Look at that one. Ball is came to him and he's just got a single hand. And unfortunately, Riaz is getting a life here. Unfortunate for the bowler, in fact. Guru missing that huge wicket of Riaz. 43 for the loss of 3 wickets. Guru, right arm over wicket, bounced Ayaz. Ayaz once again tried to force that one, but not getting that one from middle of the bat. There is no chance at all for any run. After seeing Mansoor is hitting the ball quite nicely, everyone thought that it's going to be very easy to hit the ball. But Ayaz in that occasion and Riaz not really getting the timing. Top edge, catch it is a call, and Munna will go to complete the catch. This time Ayaz, after trying and trying for the big shot, now he's just looking for the improvising cricketing stroke. He did try to get that one very fine. By doing that, ball he's got a top edge. And fine leg fielder, Munna making no mistake at all. NM cricketers Mangalore have lost their 4th wicket. It's a 43 for the loss of 4 wicket. Mangalore cricketers slowly they're tightening the screws here after the dismissal of Mansoor's wicket. This is one area. If you wanted to come back in this match, the best way to pick the wicket of their opposition. Because every time when the new batsman coming into the middle, I think bowler definitely going to be very confident to bowl some good deliveries. Now, nothing much worried about the batting department what NM cricketers Mangalore has got. Even though they lost 4 wickets, but again one more fantastic all-rounder. Atif being the captain of the side, is came into middle. The 2 very good all-rounders of the present cricket in the middle, Atif and the Riaz. So Guru, at last he got a wicket and he's bowling from the far end. Right arm over the wicket bounced. Atif that time plays it in the air, but quite safely down to deep cow point region. And before the fielder from deep cow point run across to his left to field the ball, ample time for Atif to complete the couple of runs. So good over there from Guru, even though he bowled some wide deliveries, but still it's a better over, picking up wickets altogether. 4 overs completed. After completion of 4 overs, it's a 45 for the loss of 4 wicket. 11.33 runs per 100 progressing here for NM cricketers Mangalore. And before the next over going to start is a change in comment box as well.
So it's a time to change in committee box as well. It's over to Gopi for the further explanation for the match in our national language. Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 45 रन एनएम मैंगलोर आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन। 3 ओवर्स लेफ्ट इन द इनिंग्स और 5वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज किरण इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए रियाज और आतिफ इस वक्त क्रीज पर मौजूद एनएम क्रिकेटर्स मैंगलोर के लिए और पहले गेंद लेकर तैयार। किरण ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिटिकेटेड द लास्ट मोमेंट और गेंद बल्लेबाज के पैरों पर टकराने के बाद बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंचे और वहां पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और किरण फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, अंतिम अक्षर में गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का। अंपायर रोलैंड पीटर ने कुछ पूछताछ करने के बाद इसे वाइड घोषित किया और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू हो चुका है। किरण बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिटिगेटेड एट द लास्ट मोमेंट। विकेट सिंगल फॉर दैट और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर। लंबे और विशाल स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ एनएम मैंगलोर कुल मिलाकर 47 रन अब तक जोड़ चुका है। जबकि उनकी पारी का 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर। आतिफ स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं और किरण की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, आतिफ और रियाज आज प्रेजेंट क्रिकेट के 2 बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से माने जाते हैं। इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद का पीछा करता है फील्डर और गेंद को जब तक काफी मुश्किल के साथ रोका जाता। बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 49 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 49 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress। और फिर से एक बार किरण इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है और डीप कवर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 50 comes up for Mangalore, 51 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress and they are looking along terrifically at this situation। 5th over in progress in their innings और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला है बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा जवाब हर 4 रनों के लिए। He just played that one with a twisted bat and finds the gap as well between gully and a point. And with that boundary, the scoreboard moving up to 55 for the loss of 4 wicket. Perfect struck came from the bat of Atif. और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 55 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। एक विशाल स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ एनएम मैंगलोर। निस्संदेह इस वक्त मंगला देवी क्रिकेटर्स के कप्तान के लिए परेशानियां इस वक्त बढ़ती हुई और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए किरण के लिए आतिफ सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ द टोस हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर गेंद को खेला इनटू द गैप एज वेल और लंबा दौड़ इस वक्त फील्डर लगाते हुए और गेंद को इस वक्त जब तक रोके बड़ी मुश्किल के साथ सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 3 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त ऑफ द टोस गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था फील्ड क्लियर करते हुए और 3 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 59 for the loss of 4 wicket, 5 overs had been bowled। Next match, Tanir Bavi friends will takes over Tanir Bavi friends will takes over Gori Young Boys in the next match, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। So 58 for the loss of 4 wicket, 5 overs had been bowled and 2 overs left in overall calculation in their innings। So देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनकी पारी में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं।
तो इस वक्त देखिए यहाँ पर मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, आप अपने मोबाइल की यूट्यूब पर इस वक्त देख सकते हैं। दर्शकों से मैदान इस वक्त खचाखच इस वक्त भर चुका है, जहाँ देखो वहाँ दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए हैं और भरनी भी चाहिए, क्योंकि रविवार की शाम को ये दर्शक और भी रंगीन बनाते हुए कहीं पर भी बैठने तक की जगह यहाँ पर नहीं है। और ये बात ये दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट यूसीजी इस क्रिकेट अंडरआर्म क्रिकेट लॉर्ड्स पर कितनी जनप्रियता रखता है। 2 ओवर का खेल इस वक्त बाकी है और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज मुन्ना ऊपर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट, एक हाथ से गेंद को खेला खूबसूरती के साथ और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। It just played that one with the one hand at the last moment and finds the gap as well. और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 62 रनों पर, 62 for the loss of 4 wicket, and this is an absolutely terrific progressing year for NM Mangalore। और मंगलादेवी के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उनका निर्धार इस वक्त लगभग गलत साबित होता हुआ यहाँ पर, और बल्लेबाज एनएम मैंगलोर के रनों की बौछार यहाँ पर लगाते हैं। बेहतर गेंद थी इस वक्त, कॉट बिहाइंड द विकेट, आतिफ की पारी समाप्त और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। सीधी लाइन से गेंद आई थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बल्ले का बाहरी सिरा इस वक्त लगा और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की और इसी के साथ 5वां विकेट यहाँ पर गिर चुका। स्कोर है इस वक्त 62 रनों पर, 62 for the loss of 5 wickets in the over number 6 in progress। ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ। तो 2 ओवर का खेल बाकी और 6ठा ओवर उनके पानी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए एक और बेहतर बल्लेबाज का आगमन हो चुका है एनएम मैंगलोर की ओर से अजहर, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, सामना इस वक्त करते हुए। खासकर रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं अजहर, रिवर्स शॉट लगाने में माहिर हैं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और स्कोर इस वक्त कुल मिलाकर बढ़कर पहुंच चुका 63 रनों पर, 63 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ दिस 7th ओवर 6th ओवर। इनफैक्ट इस बार गेंद निकली विकेट कीपर की दाईं ओर से, 1 रन मिलेगा इस बीच जोखिम पर रन यशस्वितम पूर्ण करते हुए। ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳ 27ರಂದು ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಾಯಿ 50,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು। ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ 30,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು। ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು। इस बीच गेंदबाज को स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे शॉट फाइन लेग पर रन नहीं मिलेगा। ಅದೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೇವಲ 1 ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಜರುಗಲಿರುವುದು। ಟಕ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 8 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ। ಆಸಕ್ತ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು। ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಇದೇ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವುದು। ಸೋಮವಾರದಂದು 27 ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ಈ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವುದು ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ। ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ। ಆಸಕ್ತ ತಂಡಗಳು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು।
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. So 66 for the loss of 5 wicket and over number 6 has been completed. So last over remaining in their innings. तो इस बीच गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और सामना करते हुए इस वक्त अजहर. अंतिम ओवर शुरू होता हुआ इन मैंगलोर के पारी में. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद अजहर के लिए ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहना और क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट गेंद पहुंचे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 67 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 67 for the loss of 5 wicket at the start of the 7th and the last over in their innings. यज्ञेश फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. यह गेंद चिप गया लॉन्ग ऑन पर रियाज ने, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और काफी करारा प्रहार इस वक्त किया था रियाज ने. हैव अ लुक एट दिस इन द मॉनिटर. देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था. जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड जिस अंग्रेजी में कहते हैं. और यहां पर चौका प्राप्त करते हुए इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 71 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 71 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. रियाज अपनी अगली गेंद का सामना करते हुए, लेकिन इस बार गेंद वाइड के तौर पर सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. वाइड +4 5 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. तो इन 5 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 76 रनों पर. 76 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. तो अभी भी उनकी पारी में कुल मिलाकर 5 गेंदें बाकी, 4 गेंदें बाकी. और यज्ञेश एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद पहुंची शॉट फाइनल की दिशा में. वाइड का इशारा 1+1 once again added to the total. The batsman have got a problem on his right length line at this situation. और 2 रन इस वक्त अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में वो प्रदान करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 78 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 78 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और अपने अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड अगेन. 79 79 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. और कुल मिलाकर अभी भी 4 गेंदें और बाकी उनकी पारी में. और एक बार फिर से गेंदबाज यज्ञेश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दर्शकों से मैदान खचाखच इस वक्त भर चुका है और एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम जिसे कहते हैं. ये गेंद इस बार ओवर पिच गेंद को उछाला अजहर ने लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर 1 रन के साथ संतुष्ट. 80 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. 80 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. और कुल मिलाकर अभी भी उनके बाद में 3 गेंदें और फेंके जाने बाकी. रियाज सामना करते हुए इस वक्त यज्ञेश की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ पर. फील्डर मौजूद एंड इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट. स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 82 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. यज्ञेश रियाज के लिए इस बार ऑन साइड पर उछाला वाइड लॉन्ग ऑन पर 4 रनों के लिए खूबसूरती के साथ. कोई फील्डर वहां पर नहीं. और सरप्राइजिंगली द बॉल वेंट ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री. 86 द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. 86 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और गेंदबाज यज्ञेश तैयार रियाज के लिए उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार. ये गेंद चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट. एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ ऐसा कहना पड़ेगा फिनिश द इनिंग्स इन स्टाइल विद द कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज. 90 they finished with 90 for the loss of 5 wicket after their completion of 7 overs and they set a huge target of 91 in 7 overs. They have to score for victory and Bangladesh cricket has 91. They have to score for victory with the required run rate of exactly 13 runs per over. That means 42 stipulated deliveries, 91 the target and 10 wickets they got kept intact. The present equation shows for them. अब देखते हैं इस 91 रनों के लक्ष्य तक वो पहुंच पाते हैं या नहीं. और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो
एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So here you go, the chasing 90 to win the match, and the first ball 91 to win this match, and the first ball which is played by Yatiraj, which is a dotted one, plays it back to bowler and not for run. It's a mountain of runs in front of Mangala Devi cricketers to win the match. Yatiraj will go into face. Nicely and delicately plays it down to a short gully division by Yatiraj, and he's off the mark with a single. With that single, Mangala Devi cricketers they started their long journey, the long way to go for them to get that 90 runs to 91 to win this match in 7 overs. And Prashant is a left-hand batter, will go into face his first delivery, and Mujib going to ball second delivery of this over, third deliveries of this over. Short third man, short cover point, short extra cover, short mid off, short fine leg, short mid wicket, deep long on, and deep long off for the fielder for Prashant. Mujib balls and no ball, absolutely no ball, because I'm also observing he's coming almost wide of the crease in the negation, and umpire rightly so signal it's a no ball. 1 plus 1, 2 more to the total, and it's going to be a free hit delivery. 3 on the board without loss of any wicket. Now opportunity for Yatiraj to grab. The big shot suddenly be going to be a intention of the batters whenever they're playing the free hit delivery. The Mujib will go into ball that free hit delivery. Right arm over the wicket, quicker one, faster one, so that Yatiraj didn't got enough time to hit the ball, got an inside edge of the bat, and one more single to total. With that single, score moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. And of course, what a fantastic batting display from the batsmen of NM Cricketers Mangalore, especially the Mansoor.
He's got a flying start in the beginning. Lovely delivery, little bit outside and on black stamp. Mansoor in a fraction always. The Mansoor has got a habit of hitting the removing the bills. Whenever he has got a ball in his hand, he will go some work for the square leg umpire. And that's why square leg umpire always saying that if it's better the batsman hit the ball, if a batsman missed the ball, and Mansoor will go into approach the stump. This time, it's not did anything. It a beautifully ball there by Majib in the delegation. Again, he did the stumping. Again, the bails are off. And again, the dotted ball. 4 without loss of any wicket in the over number first in progress. Mujib is a kind of bowler, when he bowls that line and length, it's always going to be difficult for any kind of batter. Because he's bowling lot of varieties, pace, changing a line, and getting extra quicker deliveries, mixing up the delivery very well. Improvising nicely there by Prashant. Down to deep third man boundary for 4 runs. Clever thinking there from Prashant. Just using the pace of that ball. Playing that horizontal shot. Just have a look at that one. Absolutely fantastic improvising. And just playing that horizontal bat. And he got a boundary for that. 8 without loss of any wicket. So 8 on the board as far as a comparison, the completion of over number 1. NM Cricketers Manglore that time 17 on the board, and the reason that Mansoor is firing in that time in the first over. So second over will going to start from the far end. Riaz has been introduced from the far end. So NM Cricketers Manglore. Definitely they came into this tournament with the aim of reaching to the final. Driven nicely by Yatiraj down to deep long on region. Mansoor the fieldsman there in the mid-on region, run across this right, little bit fumble. But Yatiraj is not interested for the second run, rightly so. 9 without loss of any wicket. And a little bit disappointed actually because of the bowling performance of Mangalore Cricketers. It's not a good bowling performance. At the same time, the fielding which is not up to the mark. Some drop catches, some loose deliveries, bad lines bowled. But it's all about the batter. Mansoor is the one who really did the damage in the early stage of the innings. 9 without loss of any wicket. Riaz once again back to his bowling mark. Right arm around the wicket. Drives that one down to mid-on region. Again the Mansoor is in a picture. Just a single. With the single scope moves on to 10 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. After a long time, UCG Cricket Ground is witnessing the big tournament and 1 lakh cash prize be awarded for the winners. And that ball really very close to the off stamp, going for the off drive, big in cutter, extra deviation from Riaz in the negation, and Yatiraj completely missed that delivery. Even wicketkeeper behind the stamp missed it completely. Now Mansoor just asking Asif to come and keep the wickets. Maybe the little problem for Mansoor, and maybe the knee injuries is one of the biggest problem for Mansoor. Again, they're going for the quick single. With that single scope moves on to 11 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Prashant looks like it's a new pace in new phase in Mangalore Cricketers. And wait and see. Of course, he's got 1 boundary in the previous over. Looks like he's very good in playing a reverse sweep. The previous over he played a good reverse sweep to got a boundary. Now he's trying to repeat in this particular over. This time misses completely from the bat, and the wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Asif again. Slower one, negotiated very well by Prashant, just waiting for that slow one, and hit that one down to deep long on for an easy single. With that single, score numbers on to 12 without loss of any wicket in the over number 2 completed. Still is long way to go
5 overs remaining. And they have to get another 80. It's not 80, 78 runs required for the victory. 79 runs required for the victory. It's a long way to go for Mangalore cricketers. So Mangalore cricketers, one of the only team, if you find in the present cricket, active cricket, the played by the one team, Mangalore cricketers, the team which is performed during even the 80s and 90s, has got a huge history, very good history. But most of the teams is out of the regular cricket, especially like Vijay Lakshmi cricketers not playing regular cricket. But one more team is Adimaheshwar cricketers also. Sometimes they are all taking part in the present cricket. One more oldest team, the team which is performed in the 80s and 90s. And then the Gori young boys, nicely improvising that one down fine like boundary for 4 runs. Prashant is so good in playing the stroke behind the wicket and is square of the wicket. This time just getting the improvising and getting that ball into the bat and just closing the face of the bat and giving the direction to the fine leg division for 4 runs. It looks like he's a useful cricketer, Prashant, and seeing his 2 strokes, he's played in a different kind of cricketing stroke, unorthodox and orthodox sweep shot, and one is a reverse sweep. Again, going for the swing of the bat, the ball, luckily that ball just missed the off stump. Beautifully bowled there by Mujib, and there is no chance at all for any run. Prashant will go into face the next delivery from Mujib. Away from us, pass umpire Roland Pinto, went for the reverse sweep, nicely placed it down to backward point region for a single by Prashant. With that single, scoreboard numbers to 17 on the board. And coming back to some teams which is not playing regular tournaments in the present cricket, and of course some teams will go into play the UFC RRP Memorial Trophy. The teams like Reliance Jaipur and teams like Sri Hanuman cricketers, the Vijay Lakshmi cricketers, and again trying for the direct hit and ball just missing the stump, and like teams like Challenge Bowler, SNGT cricketers also, one of the oldest team, they're not taking part in the regular cricket. This is all because of the high competition, and now the cricket is which is totally changed. Again Prashant getting the improvisation, but this time he got a protection in the deep, so that he need to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 19 without loss of any wicket in the over number 3 in progress. Third over is in progress. The outside and leg stump going to be a wide, 1+1, 2 more to the total. With that, a couple of runs, scoreboard moves on to 20 on the board. 21 on the board. But Gori young boys is the only one team, I think they able to maintain the name and fame what they got in the 90s and 2000. This is the only one team, I think they able to perform in each and every season. Otherwise most of the team is went behind the screen, and that's only because of high competition and not getting the young players. Outside and off time going to be a one more dotted delivery. 3 overs completed after completion of over number 3, chasing 91 to win this match. It's 22 on the board without loss of any wicket. So Mangalore cricketers, just talking about the 90s and 2000, they're dominating, and especially when the players like Vinod PV and Prasanna, Santosh, Anil KV, and some fantastic players are playing in that team. The Prakash D'Souza, the one more very good player, was played for Mangalore cricketers. The Vinod PV and Dinesh PV, two brothers, they're playing for Mangalore cricketers those days. A very decent cricket. Actually the Mangalore cricketers knowing for the discipline, and the loved by the
the people of South Canada district because of the discipline of the Mangalore cricketers. Still now, they're maintaining that discipline. This is very important in cricket, isn't it? Winning and winning your trophies is not much, not a big achievement. But along with that, the winning the heart of cricket lovers by their discipline, I think is going to be a big achievement. But still, Mangalore cricketers are trying their level best to get the name and fame what they got. They wanted to recall that the old memories. Outside now, they're going to be a wide with that excess cover moves on to 24 on the board. Those days, I think the Reliance cricketers, Jaipur, Mangalore cricketers, Hanuman cricketers, all teams are similar. There's never called that any team which is we can underestimate. Every team has got quality players, quality performance. Each and every match is definitely going to be very interesting. But unfortunately, in the present cricket, we are divided that one into Manglore group and local group. Again, one more good delivery. Even some small teams giving a lot of competition for the big teams. Jugal Sports Club is the one team which has dominated when it was 10 overs, 8 overs match which is introduced. Driven, beautiful shot, lovely shot there from Yatiraj. That will going to give lot of excitement for the spectators. This is a typical Yatiraj for you. One of his favorite shot. That was really a glorious shot there from Yatiraj. Delightful cover drive. And score jumped into 29 on the board without loss of any wicket. Riaz. Ball slower one. Change of pace. And ball just definitely going to miss the leg stump. And leg by call by umpire. One more addition to total. Coming back to Yatiraj, when he was started his career, he played for Hanuman cricketers as a bowler. Then once he got a chance, opportunity to bat, he grabs the opportunity. And he became one of the best opening batters. One who got ability of dominating the power play overs. One more over completed. 4 overs completed after completion of 4 overs. Is 30 on the board and still it's a long way to go. Another 650. One more runs required for the victory in 3 overs. And before the next over going to start, the time to change in commentary box. It's over to Gopi for the further explanation of match. And Gopi, more than winning this match, I think both the batsmen enjoying their batting, getting some batting practices, and Yatiraj is definitely one of the very good entertainer. But in this particular situation, he knows that it's very difficult to win the match. But he's definitely getting some batting practices. It's too good when you're going for the next tournament. But match is not yet over. I'm not underestimating because 61, which is run required in the 3 overs. But the problem here is that asking run rate is the 20.33 runs per over. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया दोनों बल्लेबाज इस वक्त एक बेहतर साझेदारी निभाते हुए, और जैसा कि आपने फरमाया 61 रन 3 ओवर में बनाने हैं। नामुमकिन सा तो लक्ष्य नहीं है, कठिन जरूर है। और यहाँ पर गेंद को खेला था लंग ऑफ पर यतिराज ने, और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो 30 रनों पर पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है मंगला देवी क्रिकेटर्स का। अब 17 गेंदें बाकी है और 61 रन उन्हें यहाँ पर बनाने हैं। तो मैच नंबर 6 इस टूर्नामेंट का यहाँ पर चलता हुआ, और बिल्कुल सही जानकारी आपने दी सतीश। 80 और 90 का वो दशक जब जाने माने टीमें जो कि खेला करती थी, और आजकल के कंपटीशन के दौर में वो टीमें इस वक्त पर्दे के पीछे जा चुकी है। और खासकर जुगल स्पोर्ट्स क्लब, जैसा कि आपने फरमाया, विजय लक्ष्मी क्रिकेटर्स, मंगला देवी क्रिकेटर्स, और जहाँ तक गोरी यंग बॉयज, मंगला मंकी स्टैंड, और यूएफसी है, यंग फ्रेंड्स सुरवा, रिलायंस क्रिकेटर्स, एसएनजीटी, और उसके बाद साउथ स्पोर्टिंग जयपुर जैसे, आदि महेश्वरी जैसे घटानुघटी टीमें उस 90वें 80वें और 90वें दशक में अपनी छाप जमा चुकी थी अंडरआर्म क्रिकेट में। और ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, वो दौर अलग था अंडरआर्म क्रिकेट का, और आज का अंडरआर्म का क्रिकेट का दौर बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर स्पर्धात्मक क्रिकेट की तीव्रता, क्रिकेट की स्पर्धा की तीव्रता आज के दौर में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है खिलाड़ियों के बीच। और निस्संदेह यहाँ पर लेकिन टीमें ज़रूर गायब हो चुकी है, लेकिन उनके नाम जो कि अंडरआर्म क्रिकेट जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये नामें भी जिंदा रहेंगे, इन टीमों के नामें भी जिंदा रहेंगे। तो इस बार बोल्ड आउट
और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। मंगलादेवी क्रिकेटर्स निस्संदेह एक संतुलित डिसेंट टीम के रूप में जानी जाती थी उस दौर में। बेहतरीन घटानुघटी क्रिकेटर्स जो कि प्रतिनिधित्व किया करते थे, और खासकर हनुमान क्रिकेटर्स जिसका आप प्रतिनिधित्व किया करते थे, एक बेहतरीन टीमों में से एक जानी जाती थी। और निस्संदेह वो दौर में तब तकनीकी तौर पर टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था, तो मैचेस देखने के लिए मैदान पर जाना पड़ता था। और खासकर ज़्यादातर मैचेस रविवार के दिन होते थे। वीकडेज पर जिस तरह आज के दिनों में मैचेस होते हैं उस तरह मैचेस नहीं हुआ करते, सिर्फ रविवार के दिन मैचेस हुआ करते थे। उन मैचेस को देखने के लिए हम मैदान पर जाया करते थे। तो ये सब मधुर यादें हैं 80 और 90 दशक के, 80s एंड 90s के स्वीट मेमोरीज। और जहाँ तक सवाल है, आज के दौर में तकनीकी तौर पर तांत्रिकता काफ़ी एडवांस हो चुकी है, और बैठे बैठे घर में हम यहाँ पर मैचेस का मुआयना कर सकते हैं यूट्यूब पर, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। तो इस वक्त रन से नहीं मिलेगा, 31 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और जहाँ तक का सवाल है रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, और इस बीच रन के लिए दौड़ पड़े। अंतिम क्षण में दूसरे रन के लिए बल्लेबाज वहां पर आउट दिया गया है, और बल्लेबाज यहाँ पर रन दौड़ रहे हैं। तो दूसरा रन दौड़ चुके हैं, लेकिन दो रन उनको नहीं मिलेंगे, और उनका विकेट यहाँ पर गिरेगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अंपायर आउट देने के बाद वो अपने स्क्वायर की ओर बढ़ रहे थे, और यहाँ पर विकेटों के पीछे बल्लेबाज दौड़ रहे थे। तो विकेट यहाँ पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। और 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 2 ओवर का खेल बाकी, सिर्फ 1 रन इस ओवर में बना, और 2 ओवर के खेल में अब बनाने हैं 60 रन, 60 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 2 ओवर्स। और अगला मैच जो कि गोरी यंग बॉयज का सामना होगा तन्नीर बावी फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। इस बीच ये गेंद 60 रन चाहिए, और इस बीच पहली गेंद थी। गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके नॉट क्वाइट मिडविकेट एट द लास्ट मोमेंट, 1 रन मिलेगा। 32 रन यहाँ पर बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। 11 balls remaining and 59 more runs now they have to score for victory. Wide again, just missing outside the off stump. 33 for the loss of 3 wickets. और गेंदबाज की ये गेंद इस बार उछाला है गेंद को लंगोर पर, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। थोड़े से सफल होते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए बल्लेबाज ने, और डिस्टेंस इस वक्त वो प्राप्त करते हुए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 10 गेंदें बाकी है, और 10 गेंदों में 52 रन चाहिए विजय के लिए। 52 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 10 balls, 10 डिलीवरीज इन फैक्ट। अपनी अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड 51 more runs now they have to score for victory. 10 balls to go in their innings, और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहे, एक बार फिर से वाइड का इशारा। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर। 50 रन ठीक चाहिए विजय के लिए। बच्चे हुए 10 गेंदों में ड्राइव किया मिड ऑफ पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और 1 रन सफलतम यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए 49 to get now from 9 deliveries. ये गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, 1 रन 43, and now the last chance in front of the batsmen of Bangladesh cricketers. 48 required, 48 needed in remaining last 8 deliveries. 8 sixes required in the last 8 deliveries. The last chance in front of the batsmen. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को पंच किया। इस वक्त 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और दूसरा रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6th इन प्रोग्रेस। गेंदबाज ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर वाइड,
जस्ट सिंगल 46 अपनी अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए एक और वाइड 47 अपनी सही लेंथ और लाइन को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक दिक्कतों का सामना करते हुए गेंदबाज, और अपनी अगली गेंद इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्ड हो। 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ। 6 overs completed, 49 on the board, and 42 runs more. Now they have to score for victory in remaining last over. Next match, Nirbavi friends will take over Gori Young Boys, and that match starts with just short while. सिद्दीका जो कि चना है अपनी मर्जी का, चने लेकर आपके वहां आएंगे और कृपया मेरे सारे दर्शकों से निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा चने के पैकेट उनसे खरीदें पैसे देकर और उनके साथ उनको पूरा सहकार दे। सिद्दीका जो कि चना लेकर इस वक्त आपके पास आ रहे हैं, दर्शकों से मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चने उनसे खरीदे पैसे देकर और उनको पूरा सहयोग आप दें। तो यहाँ पर अंतिम ओवर शुरू होता, 52 रन चाहिए, 52 runs. 42 runs they have to score for victory in last over. First ball driven that one, not quite गेंद इस वक्त गेंदबाज को टकराई थी और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 50 रनों पर। The 50 comes up for Mangaladevi cricketers. 5 balls left in their innings. Lofted square off the wicket. In fact, he gets in a single. 51 now for the loss of 3 wicket. 4 गेंदें बाकी हैं, 40 रन चाहिए, 40 runs to get from 4 balls. Absolutely formalities now remaining in this match. Lofted, not quite middling it. The bowler himself took the catch on his follow through, and 1 more wicket fallen. 4th wicket gone, and it's 51 for 4. Better, absolutely fantastic one. Dot delivery ball. 2 balls now remaining in their innings. और गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए good one, dot ball bowl. The last ball now remaining in their innings, and the last ball of the match is now coming up. Driven down to long off, that's it. And scoreboard is now moving up to, no, in fact the scoreboard stays at 51. 39 runs comprehensive victory for NM Mangalore against Mangaladevi cricketers, and with that 39 runs comprehensive victory against Mangaladevi cricketers, NM Mangalore are through to the next round of this competition. Next match, the Nirbhavi friends will take over Gori Young Boys, and I request that both teams captains please to be reported here for toss. Gori Young Boys ಹಾಗೂ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. And we'll be back right after a short break with Satish in English when the next match will be going to start.
So man of the match of this match award goes to Atif of NM Mangalore. He scored 19 runs with the bat as well as he bowled superbly, conceding just a single, just one run in his 1 over and capturing 3 wickets. And because of this all-rounding performance of 19 runs unbeaten and capturing 3 wickets for conceding just a single run in 1 over, he bagged man of the match award. I request Atif of NM Mangalore, please come on to the stage and receive the man of the match award from organizer, as well as the captain. I also request the captain of Mangaladevi Cricketers, please to be reported here to receive the momentum from organizers. Mangaladevi ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆತೀಫ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. So Atif of NM received the man of the match award from the organizers. So Atif of NM Mangalore received the man of the match award from Mr. Prabhakar for his all-rounding performance in this match. And congratulations Atif, and best of luck for the rest of the tournament, the rest of the matches of the tournament. Now it's the time for a presentation of memento and flower of art for representation for this cricket tournament for the captain of Mangaladevi Cricketers, Munna, getting there's a memento from Mr. Gopi, our wonderful Hindi commentator. Thank you.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದವರು ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಅಂತ ₹100 ಅದರ ಮುಖಬೆಲೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಡು, ದ ಗೋಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತರು ₹100 ನೀಡಿ ಈ ಕೂಪನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತೇ ಡ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಡ್ರಾ, ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಲಕ್ಕಿ ಇವರು ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಡ್ರಾ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಪಡೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. At the same time is the announcement, Tucker's Friends Kudroli registered will go into organize Tucker's Trophy 2023 in coming 27th February, the Monday, in the same venue, Urua Cricket Ground. And the winners will go into get eight teams, open to all, and only 8 teams got opportunity to participate. Interested team will go into, interested team can give their name for this Tucker's Trophy 2023, which is proudly organized by Tucker's Friends Kudroli, registered by paying entry fees of ₹10,000. And winner will go into get 50,000 plus attractive trophy. The runner-up will go into get 30,000 and attractive trophy, and some individual prizes, attractive individual prizes to be given, and even the trophies which is given for each and every participating team in this particular tournament. So that I request interested team, because a little only 2-3 already the 6 to 5 to 6 team already reported, and only 3 places which is remaining. So that I request interested team please to give the name, because it's a good cricket tournament, prestigious cricket tournament. In one day they you can win 50,000 and a trophy. Only 8 teams will go into allowed to participate. We're coming back to this. Please note, now onwards the match will be of 6 overs as per the decision of organizers. They decided to play the remaining matches in the 6 overs. Please note both the teams. Because of course we can't play cricket till late night. Only the organizer got a permission to play the matches under floodlight till 9 o'clock, so that organizers have to complete the matches and within a time, within 9 o'clock they need to complete the matches and the prize distribution ceremony. So humble request for all the teams to make it fast, and now we are waiting for the umpires to enter the ground.
Welcome back once again. 6 overs match. 6 overs. This match is going to be now onwards. Organizer decided to reduce the number of over from 7 to 6. The 6 overs match, and that's it. And number of over 6, and number of power play will be going to be remains the same. And one bowler got opportunity to bowl. Two bowlers, in fact, got opportunity to bowl the 2 overs. 6 overs game, and opening batters came into middle. Riaz is in strikers end, the hero of the previous match, along with Naufal. Of course, Naufal also hero of the previous match, no doubt. And one who starts well with the bat, with some hitting some good stroke, and got a start for his team. And now for Tanir Bobby, it's going to be a Rakshak Pujari. Fast bowling his first ball, right arm over the wicket, and Riaz straight away wanted to play the sweep shot. They missed it completely. Ball went towards a short third man region. Kishore, the fieldsman, there in the short third man region, fields the ball, and there is no chance at all for any run. Coming back to TFC Tanir Bobby, the first match they played very well against Sai Vishnu Kunjat Bail. They won the match against Sai Vishnu Kunjat Bail, and they are through to the second round. Now they need to play better cricket against Gori Young Boys. Riaz is off the mark with a single, and even Gori Young Boys also got a first run, one without loss of any wicket. Rakshak bowling from the far end. Even though just seeing these two teams comparison, maybe the Gori Young Boys as the favourite of winning this match. But in present cricket, you can't underestimate any teams, because regular cricket is one of the main reason. And Naufal drives that one down to deep, long off region for an easy single. Every team definitely has got some talented players. We never knows, because in this present cricket, a lot of cricket is going on, especially the belt area cricket tournaments. Some Premier Leagues going in their same areas. The talents definitely going to come out. This time, lofted that one, down to deep long on boundary. One bounce over the row for 4 runs. Riaz is in the best of form for Gori Young Boys. And of course, in the last 2 seasons, he's not really in that much of good form. And once he back into his home team, Gori Young Boys, straight away, and Riaz getting his form back. 6 without loss of any wicket. Rakshak again bowling away from us. Right arm over the wicket, nicely bowled. This time little bit hesitation for the run. Of course, in the previous match already one run out which has taken place, so that in this particular match Naufal doesn't want to become the run out, because Riaz is always the one. The selector of run is not very selective as far as the running between the wicket is concerned. He's not really runs for everything. He's very selective. This time up and over, down to deep cow point region. Chase here for the fielder, and before the fielder from the deep longer to run across his left to field the ball. Again ample time for Riaz to complete that couple of runs. With that couple of runs, score numbers on to 8. Just like a similar start what they got Gori Young Boys against KFC Kodikal, and the same start coming here for Gori Young Boys against TFC Tanir Bobby. Tanir Bobby friends, not regularly taking part in the cricket tournaments, especially in a UCC cricket ground, organized the tournament organized in a UCC cricket ground. Tanir Bobby cricketers has got some good talents in their side. I just mentioned about. You cannot underestimate any team in the present cricket, because participating in the main team, Manglore, means they got a good team, good players. Now it's going to be a top scorer. The list we can see in the screen, and so far it's Rashid Baba is in the top of the one boys color. In the 3 innings he scored 59 runs, and it's one of the highest individual score of this tournament. Outside the black stamp, going to be a white, one more extra. Scoreboard numbers are to 9 without loss of any wicket.
9 without loss of any wicket. Rashid Baba is the top scorer in this tournament. His team already qualified for the semi-final. This time single-handed slog sweep shot down to deep backward square leg boundary. 1 bounce for 4 runs. Now fall one of the specialists of playing that slog sweep shot. Look at that one, horn-handed stroke. And one way when he swept the ball, he has swept the ball very hard. A little bit power behind the stroke, even they lost the top end grip. Bottom end grip in fact, and still he managed to get the power timing behind the stroke. 13 without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. Bowler Tanveer. Bowling from the far end. Right arm over the wicket, pass umpire Roland Pinto. Balls, nothing much to do with the delivery. Now for watching the ball till the last moment, left the ball rightly so, and Roland Pinto signals a wide. 14 without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. Tanveer again bowling from the far end, right arm over the wicket. Just tipped that one quite nicely. What a timing! What a sweet timing there from Naufal. Ball running down to deep cover wide boundary, but ball will going to cut it off. The ball will going to cut it off. One of the fielder from the cover point, Rakshak, I think, is the man, is running back. Siddiq is a fielder from the cover point, is running back along with the Rakshak, but one of the fielders fields the ball. 16 without loss of any wicket outside and a leg stump going to be a wide. This is what Tanir Bhai need to restrict these runs extras when you're playing against a top team like Gori Young Boys. Of course, a top class performance against KFC Kodikal. This time, mighty stroke from Naufal. Absolutely instrumental cricketing stroke. Instrumental in the sense when the ball is having a contact with the bat of Naufal, you can just hear the sound. Beautiful. It's a sweet sound indicating that Naufal hits the ball beautifully. And he got the distance for that. 23 without loss of any wicket. Tanveer again back to his bowling mark. Right arm over the wicket balls. Naufal again drags that one from outside the line of off stump. This time little bit of wrist work comes into play to play that stroke, but not quite able to defeat the infield. And score remains on 23 without loss of any wicket. Tanveer. Right arm balls. This time Naufal going for the in another place towards the mid wicket. What a tournament he's having from the bat. Unfortunately, in the first match, he's got run out, but he did the damage. In this particular match, he's just getting some opportunity to showcase his all talents. Again, that ball is travelled and gone over the top of the toilet, I think so, down at the mid wicket. 29 without loss of any wicket. This time, it's chance here for the fielder. The longer fielder will going to take the catch, and that's it. Rakshak, the fieldsman, then the deep long off will going to take the catch comfortably. It's the Naufal's entertainment innings, the small cameo which is comes to an end. Try to hit the one more big shot in the legation, but not really getting that one from the middle of the bat. Naufal departs, and before he's back into pavilion, he did the damage by hitting 2 sixes and a boundary, and altogether he scored a 19 valuable runs. The new batsman is Prajwal. He's been promoted up in the order. I think it's a good move by the captain of the side, Karna, saying that they need to play some big matches after this. Of course, this match is not yet over. This is very important. I'm not underestimating. But I think just saying that, Karna, of course, is doing a good job, because when you're playing the matches against the non-ranking cricket teams, then it was a definitely good little bit experiment which is required. Some players definitely needed some batting practices, and we will see how Prajwal will go into capitalize this opportunity. Of course, no doubt at all, what Prajwal has got the talent. Is a fantastic striker of the ball, and I request the fielding team, please note that within 27 minutes you need to complete your 6 overs quota. Right arm over the wicket, balls.
Again, that ball just missing the bat of Riaz, hitting his leg, so that leg by call by umpire. The scoreboard moves on to 30 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Prajwal back on strike. Srijan bowling right arm over the wicket. This time the batsman Prajwal watchful, very watchful, seeing the ball is just coming around his legs, and he plays it defensively down short mid-on region, not for run. 30 for the loss of 1 wicket. Srijan bows. This time look, seems to be a second catch here for Rakshak here in that mid-wicket region. What I am talking about, the Prajwal has got opportunity to bat up in the order, but he's not capitalizing, he's not grabbing the opportunity. Absolutely nothing stroke at all, isn't it? No power in that stroke, just helping it down, but not really getting the distance. And mid-wicket fielder taken a catch. 30 for the loss of 2 wickets. So after this match, one more big match is coming up. The Torpedoes Khana takes on NM Cricketers Manglore. And absolutely it's a high voltage match, just like what the match which is witnessed between Torpedoes Khana versus Young Friends Surua. The same scenario we're expecting from the spectators definitely going together. Already this is jam-packed stadium, and more crowd will go together for the match between NM Cricketers Mangalore versus Torpedoes Khana. Deepak, the hero of the previous match, is came into middle. Srijan, the bowler, has got a success in this particular over by picking a wicket of Prajwal. Srijan bows to Deepak. Deepak this time pushes that one down to point region. He wanted a single, but rightly so Riaz is not interested. And the score remains on 30 for the loss of 2 wickets. Good comeback here by Tanir Babi after conceding some runs in the first 2 overs. And this is a one better over by Srijan. Balled him, cleaned him up. Second wicket here for Srijan. Absolutely nowhere near the pitch of the delivery. Just have a look at that one where the ball is pitching and where the bat of Deepak is going. Absolutely nowhere near the pitch of the delivery. Missing it completely, then ball hitting the stumps. 30 for the loss of 3 wickets. Just like I mentioned earlier, you cannot underestimate the strength of any team. Just like I always mentioning, the small leakage can sink a big ship. Another 2 good deliveries, 2 wickets will go into make a big problem for Gori Young Boys. Srijan has been outstanding in this over. Just this first over itself, he picked up 2 valuable wickets. So new batsman in this, Yuvaratna, the man who got 100 behind his name, particularly in this cricket ground, UCG cricket ground. The technical sound player who can perform both in overarm and underarm cricket will go into face Srijan. Driven back to bowler and misfield there by Srijan on his follow through, and just a single. Outstanding over there from Srijan. Very good over indeed after completion of over number 3, and lost the task asked by the opposition to bat first. Gori Young Boys 31 for the loss of 3 wickets after completion of over number 3. So that I request NM Cricketers Mangalore and Torpedoes Khana, kindly request you to complete the formalities of signature. If you have completed a signature, then please get ready for the toss. So over number 3 completed, and before the 4th over going to start here. And time for Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस वक्त गोरी यंग बॉयज एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ, और तनीर बावी फ्रेंड सर्कल के लिए इस वक्त समस्याएं खड़ी होती हुई। रविवार की शाम दर्शकों से खचाखच इस मैदान
ये मैदान जो कि भर चुका है। मैदान के चारों ओर दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला युवरत्न ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है टीम फॉर्चून मैंगलोर ने। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लेकर गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, स्क्वायर ऑफ द विकेट और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इनफैक्ट फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए डाइविंग स्टॉप इस वक्त की विकेट कीपर ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 3 ओवर्स कंप्लीटेड एंड 4th ओवर इज नाउ प्रोग्रेसिंग। और निखिल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार विकेट कीपर गेंद को लपक नहीं पाए। इस गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन इस गेंद को लपकने में इस वक्त विकेट कीपर असफल। जहाँ तक रनों का सवाल है, रन इस बीच नहीं मिलेगा तो स्कोर रुक चुका है 33 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त गोरी यंग बॉयज और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बिल्कुल ज़मीन के सहारे और गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, चूँकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है। निखिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज रियाज और शिवराज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और अगली गेंद, ये गेंद उछाला मिड विकेट पर इनटू द फेंस फॉर अ 6 in a flat version, hit that one pretty hard and because of that he's got that one for a maximum और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। इट्स 40 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress। शाम का वक्त, धूप का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद मैदान पर। और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है 40 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। बेद्रा मीडिया द्वारा इस श्रृंखला का एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार टिप किया इनटू द गैप एज वेल एंड गॉन ओवर द फेंस फॉर अ 6। 2 sixes in a over. Is bar effortlessly played, just off to the back foot and just after that was square of the wicket by Riaz and finds the gap as well into the steps of deep extra cover fence for a huge one. 46 for the loss of 3 wicket, 4 overs completed and Gori Young Boys are now heading towards to a huge total. तो यहाँ पर इस वक्त गोरी यंग बॉयज बल्लेबाजी करता हुआ लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और इस बीच 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे तो 48 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। तो इस वक्त इस बीच ये गेंद रियाज के लिए आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, जहां तक सवाल है रनों का रन मिलेंगे इस वक्त 1 और 49 रन। तो यहाँ पर शिवराज ये गेंद बेहतर गेंद है और जहाँ तक शिवराज का सवाल है तकनीकी तौर पर बेहतर प्लेयर है। एक जमाने में गोरी यंग बॉयज के इकबाल ओटी
आउटस्टैंडिंग टेक्निकल प्लेयर हुआ करते थे, तो उनके हिसाब से इस वक्त उनकी तरह ही बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त शिवराज। तो जहां तक सवाल है, इकबाल इस वक्त मैदान पर उपस्थित हैं और यहां पर इस मैच का मुआयना करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है इकबाल साहब। तो वहां पर बैठे हुए हैं वो और अपने गतकाल के वैभव को इस वक्त याद करते हुए। So 3 balls gone in this over, 49 for 4, and the number 6 batsman is now comes out to the middle. करना इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, जो कि स्वयं कप्तान है और इस ऋतु में करना ने कप्तानी संभाली है और अपने टीम के लिए एक बेहतर प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश वो यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक करना का सवाल है, उनके कप्तानी में मुड़बिद्रे में गोरी यंग बॉयज ने 1 लाख की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती है चंद दिनों पहले और यहाँ पर वो सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर गोरी यंग बॉयज। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार गॉन फॉर अ माइटी हीव, दिस टाइम नॉट सक्सीडेड और यहाँ पर शायद गेंद शमसों पर टकरा चुकी है, बिल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। विकेट नंबर 5 गिर चुका है और 5वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। 50 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट फॉर गोरी यंग बॉयज इन द 5th ओवर इन प्रोग्रेस ऑफ देयर इनिंग्स। Next match, one more big match is now coming up, and then Manglore takes over Torpedoes Kana in the next match. And because of that, I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So new batsman is now comes out to the middle. एरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज सृजन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंद को खेल दिया। इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 51 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 5 overs completed. Still they are looking in a driver's seat now, except they lost their 5 wicket. They managed to score 51 runs on the board. जहाँ तक सवाल है अंतिम ओवर का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज यहाँ पर अंतिम ओवर गोरी यंग बॉयज की पारी का फेंकते हैं। और 6ठा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए। मैच नंबर 7 आज का इस टूर्नामेंट के तीसरे दिन का सातवां मैच यहाँ पर प्रगति पर तन्नीर भावी फ्रेंड्स और गोरी यंग बॉयज के बीच में। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए एरिस सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद रक्षक गेंदबाज पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 51 रनों के ओर पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें अब कुल मिलाकर उनके पारी में बाकी और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। Just 5 balls left in their innings. तो गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें तो ऊपर विकेट पैडल स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एरिस ने, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फीड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 52 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स।
करना बैक ऑन स्ट्राइक और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज रक्षक गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕೂಡಲೇ हस्ताक्षरಕ್ಕಾಗಿ वेदिकेಯನ್ನು संपर्किसಬೇಕಾಗಿ विनंती। ऑफ स्टंप से बाहर कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 52 रनों पर स्कोर बोर्ड नहीं, यहाँ पर वाइड का इशारा किया गया। शायद गेंदबाज अंपायर के आड़े आ गए थे तो इस वजह से अंपायर को ठीक से पता नहीं चला, लेकिन अंतिम क्षण में वाइड से घोषित करते हुए इस बार स्विंग किया मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। और करना इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला था। देखिए किस तरीके से इस वक्त गेंद को उछाला था। मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी और इस गेंद को इस वक्त डिस्पैच कर दिया थोड़े से सफल होते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए। 57 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 3 गेंदें अब बाकी और रक्षक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। करना ऑफ स्टंप से बाहर वाइड 58 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। स्टिल 3 बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार दिस इज एन क्लीन हिट, सो इट्स गॉन मेनी माइल्स 6 रन्स। और स्कोर इस वक्त छलांग लगाकर पहुंच चुका है 64 रनों पर इस छक्के के साथ। मिड ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया था बल्लेबाज करना ने गेंद को उछाला। देखिए यहाँ पर लंगोन सीधे वृक्ष के डालों के बीच जाकर गेंद टकराती हुई और छक्का इस वक्त जुड़ता हुआ उनके खाते में। अगली गेंद ये बार सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम इवन बिगर। consecutive success for Karna. The scoreboard is now raising up to 74. In fact, raising up to 70, exactly 70 for the loss of 5 wickets. अंतिम गेंद बाकी। देखना है कि क्या इस गेंद पर करना क्या लगातार तीसरा छक्का हैट्रिक छक्का लगाते हैं या नहीं। और इस बार चूके और रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन इस बीच मिलेगा। So the innings is up for Goryang Boy. They finished with 71 for the loss of 5 wickets in their stipulated 6 overs. And now the target, a huge target. Now the huge target in front of the Nirbavi friends. TFC 72. They have to score for victory in their stipulated 6 overs with the required run rate of exactly 12 runs per over. 72 रन बनाने निर्धारित 6 ओवर में यानी 36 गेंदों में ठीक 12 रन प्रति ओवर की औसत से। और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब टीएफसी यानी तन्नीर बावी फ्रेंड सर्किल की पारी की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, Gopi. And back to this match. It's one more, the big match, the big high-scoring game, and 72 to win the match for the Tanir Bobby friends. And wait and see how well they're going to get this 72. Meanwhile, opening batters came into middle. Siddiq and Karthik. Siddiq will go into face. Shailesh will be correction. Is the batter will go into face his first delivery outside the line of off stamp, and batsman left the ball into the hands of wicketkeeper Unni Krishnan. Siddiq is on strikes, Shailesh is on strikers end. Again the first ball, second ball, and this time Siddiq reverse sweeping the ball down to backward point region for a single. With that single he is off the mark, and Tanir Bobby friends won without loss of any wicket. Highlight of the innings of Gori Young Boys. Riaz is a man who once again leading from the front, scoring 20 valuable runs, and in the end a small cameo from Captain Karna. They got 17 valuable runs, quick fired 17 runs with the help of 2 sixes boundary in that small cameo of Karna. Now fall bowling away from us. He is also contributed from the bat, scored 17 valuable runs, and they're going for the quick single. Shailesh is off the mark with the single, and total score numbers on to 2 on the board without loss of any wicket. Again the ball is which is going to be one more dotted delivery, and with that dotted delivery score single hit correction, one more single, 3 on the board without loss of any wicket. 3 without loss of an wicket in the over number second in progress. Again, going for the reverse sweep, picked up a single then, and Prajwal is the fieldsman. Then the short third man region fields the ball, but fails to stop the single. 4 without loss of any wicket in the over number second in progress. Lot of cricketing action is coming up in this particular season, and plenty of wickets. In the coming 25-26, we are Tanir Bobby TFC Trophy 2023 will go into organize in Tanir Bobby, and so it's going to be a local pools will go into participate in that 25th and 26th of February, and the same day there will be one more big tournament, Adimaheshwari Trophy at Adimaheshwari Cricket Ground, Mahakalipadpu. They organize a prestigious cricket tournament in the name of Adimaheshwari Trophy. This time nicely driven, but not more than a single here for the batter Shailesh, and 6 without loss of an wicket. And coming back to this tournament, which is in the olden days, some regular cricket tournaments every year, some prestigious cricket tournaments organized by some prestigious teams outside the line of time, going to be a white, one more extra 7 on the board. The Adimeshwar is the one. They are regularly organizing the cricket tournament in their home place, that is Mahakalipat Pujappu.
And again the ball is in the air for the while, but after one bounce collected by Prajwal and one more addition to total. Scoreboard numbers at 8 on the board. The 25th is going to be a local pool in Adimeshwar Cricket Ground. 26th will be the Manglore pool, and one of the oldest cricket ground, and witness some historical cricket tournament in that particular cricket ground. And the ground which has produced a lot of good players, some of the most popular players, former cricketers. They got opportunity to perform. Lovely shot. What a shot that one there from the batter Shailesh. But this time they're coming back for the second chance of run out in the non-strikers, and ball just missing the stump. The batsman survived. They got a couple of runs. Nice looking slog sweep there from Shailesh against the line, but he's very confident. Bowler Ashik from the far end. Right arm over the wicket. Balls. Going for the big shot. Got inside edge of the bat. And one more good over. 2 gone, 10 without loss of any wicket. Coming back to that, to get some tournaments, Adimeshwar cricketers, one of the oldest teams. We are talking about the many players. They came out while performing in that particular Mahakalipat Pujappa cricket ground. Maybe that is a small ground, but they produce a lot of players like Santosh Japu, Santosh of Mangaladevi cricketers, Vivek, Kuresh, the most of the big names, and Kamal of Adimeshwar cricketers, Chetan of Reliance cricketers, Japu. Everyone started their career by playing that particular Mahakalipat Pujappa cricket ground. And the most of the players of Reliance cricketers, Japu, also they are got experience of playing in that Mahakalipat Pujappa, and they become a very good cricketer, the future cricketer. 10 without loss of any wicket. Third over is in progress. Nicely swept that one down deep fan leg region for a single. With that single, Skoba Namozan to 11 on the board. And even Adimeshwar cricket ground, it's one of the favorite ground of Hanuman cricketers, because a lot of achievement Hanuman cricketers did in that particular cricket ground. And even my favorite ground. And next one, their lovely stroke, beautiful shot, down to deep backward square leg boundary for 4 runs. 15 without loss of any wicket, and Thanir Babi still there, not given up this match. They're trying their level best. What a shot there from Shailesh. He's so good in that shot. Even that across the line, but he's so confident by playing that shot. It's not so easy against pace of Suhail. Suhail again bounce. Slower one, and he got a reward for that. Absolute one of the best weapon to use. Riaz the catcher, and good thinking from the bowler's point of view, Suhail, after seeing that batsman so good playing that fast delivery, quick delivery, and then he bowled one slower one, and batsman not really able to read the slowness of the delivery, going for the big shot, top edge, and wicket is back into pavilion. A lot of tournament which is played in the Mahakalipat because during 80s and 90s, when it's been few places the tournament is organized. We are coming to the Urva cricket ground. There's only 1 or 2 tournaments, because the Urva Friends Cultural Association, they organized the cricket tournament for a long time, because only Sunday during that time the cricket played only in the Sunday. Cricket tournaments played only in the Sunday. Once it's the tournament starts in October last week, that will going to be ended in April, the month of March and April, and that's why there is no more tournament in UCG cricket ground. But out of the UCG cricket ground, some grounds like Mahakalipat Pujapo and Nayak's cricket ground, and then of course Malikatte cricket ground, MA cricket ground, and even Seminary, the Valencia cricket ground, the regular cricket tournaments organized by the organizers. This time lovely shot, that going to be a flat 6. After losing his partner, Siddiq just joining the party. Fantastic cricketing stroke there from Siddiq. Have a look at it on a replay. Nothing wrong with the line. The batsman hits that one very firmly.
And the ball went very quickly down to deep long on for a 6. 22 for the loss of 1 wicket. Just 50 runs required for the victory. And over number 3 in progress. Outside now off time. Batsman got a little bit outside of the bat. 3 gone after completion of over number 3. It's a 23 for the loss of 1 wicket. So 23 for the loss of 1 wicket. Over number 3 complete. Now 3 overs remaining. Just coming back to the tournament which is played in early days. The Shantinilaya cricket ground, one more cricket ground, there's the Balmata cricket ground. One of my debut ground, and that ground, Shantinilaya cricket ground, it's one of a difficult ground because that ground has got small stones in the ground outfield. It's very difficult to field. And in that particular ground, I started my career for playing for Hanuman cricket. It's the first match I still remember. Again, going for the big shot, inside edge of the bat, and batsman picked up a single for that. 24 for the loss of 1 wicket. Still, it's a long way to go, and 48 more runs required for the victory. That there is no Goryang boys, I remind you. That time, I think young friends, of course, the young friends started a bit lately. UFC cricketers and Vijay Lakshmi cricketers, Mangalore cricketers, Adi Mahesh cricketers, Jugal Sports Club. And I request all the team players, please complete formalities of signatures as soon as possible. NM cricketers Manglore as well as Third Produce Kana players, kindly request you to complete the formalities of signature. Very good diving effort there from now fall to stop the boundary, but he got a little bit stiff fingertips. One more single, Scoburn was under 25 on the board for the loss of 1 wicket. So Morgan Gate 11 is the one more team we are talking about during those days. Even A1 star cricketers is the one team. Again, what a shot. Siddiq is enjoying the game of cricket here. Second sixer came from the bat of Siddiq. And of course, after this batting performance of Siddiq, definitely every big team will going to notice this man. The way that he's hitting the ball has been outstanding. Because left-hand batsman always going to be useful. Especially the hard hitting is concerned. Again, swings that one. This time he missed it completely from the bat. But 2 very good quality cricketing stroke came from the bat of Siddiq. 31 for the loss of 1 wicket. 41 more runs required for the victory. Bowler Sahil bowls again. This is one area what Siddiq have to do a little bit correction as far as hitting the ball in the offside region is concerned. But he's so good in hitting the ball in the onside region. But in the offside region, he need to make a little bit workout. 31 for the loss of 1 wicket. 2 overs remaining. And 41 runs required for the victory. 20.5 runs per over is the required run rate. So coming back to some teams, we are talking about the A1 star cricketers, the one team which is dominated in 3, 4, 5 years, I think, when it's limited over matches started, 10 overs game. Because before there is a 20 overs match, 25 overs match, the 15 overs match in the Malekade cricket ground. But longest format of the cricket is concerned, I think Uro Friends Cultural Association, the organizing the 30 over format of the games. But under cricket started with the innings game, the early stage of the inning, early stage of this the history of Underarm cricket is concerned. There is innings matches to be played, and after that slowly that concept of the cricket is changed. Now it's going to be a 6 and 7 hours matches. 32 for the loss of 1 wicket. Going for the big shot, swings and missed. And now fall, exactly. Even the batsman is very strong off his legs, but he still managed to defeat the bat. Bowling it around his legs. 32 for the loss of 1 wicket. The over number 5 in progress. Outside enough of time, but well within the reach of the batsman. Misjudgment by the batter in the negation. And
There is no chance at all for any run. Naufal again, bowling with a short run up. Right arm over the wicket, balls to Siddiq. This time Spectra wide. Absolutely Spectra wide. Ball going down the outside and off time too far. And scoreboard was under 33 on the board. 29 more runs required. 39 more runs required for the victory. Naufal to Siddiq. This time Siddiq looking for the reverse stroke, but missing it completely. Umpire not missing to give the leg bye. 34 for the loss of 1 wicket. Some of the name of the oldest teams, Raghavendra cricketers and VV cricketers. All the teams are went behind the screen in the present cricket. 1 more wicket is back into pavilion. Looks like just 4 minutes left in this game. So Mangala Mankishta and 1 more team really dominated those days. And Patavinangadi, of course, that's the team which is really dominated during that days. Got a potential of giving fight for any big teams. They've got some fantastic players, Patavinangadi. YFC ARD. So 1 more team is from that area. Outside and off stump again, beautifully balled. 1 more dotted delivery. The 5 gone. It's a 34 for the loss of 2 wickets. And last over remaining. And the last over, they need to get another 38 runs to win this match in 6 balls. So Bokapatna 11 is 1 more team from Bokapatna area. Those cricketers is 1 more team from Bokapatna areas. So all those teams are really had got a good players in the side, and those days there is no local pool or Mangalore pool because everyone have to fight for the victory. Even though those days also some big upsets, the big teams defeated by the small teams. The small teams has got opportunity to play against the big teams. Again 1 more single added to total. 37 required from 5 balls. All we can see that the spectators play slowly gathering in the ground. Know exactly the next match is going to be the good match. Driven down to mid-wicket region and for a couple of runs here. Nice looking stroke there from the batter Irfan. Irfan picked up a couple of runs here by playing that slog sweep shot. 37 for the loss of 2 wicket. 35 required from 4 balls. Sahil. Balls went for the reverse sweep. And they're appealing for something. Is bowled out. It's gone. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ NM ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again, last 3 balls remaining. Outside the leg stump going to be wide. We are all talking about some teams from here in Mangalore, but some very good teams which is coming from Torpedoes Khana and Suratkal. The teams like, of course, Torpedoes Khana, one of the oldest team in Suratkal, Paradise, Krishnapura, Reliance Katipalla. There are plenty of teams from that region. But not like the present cricket. Now in Suratkal we can find more than 15 to 20 teams in that region. Again they're going for the big sweep shot, missed it completely.
And going for the second run before the throw coming from the field. Leg by call by umpire. 41 for the loss of 3 wicket and 31 runs required from 1 ball. That's it, compromise victory for Gori Young Boys. They won the match very, very easily. The margin of 30 runs victory here for Gori Young Boys. Huge victory. And now it's a time to announce the man of the match. And the man of the match goes to, undoubtedly, it's the Naufal of Gori Young Boys. The man of the match which goes to Naufal of Gori Young Boys for his all-round performance. I request Naufal to come and collect your man of the match award. At the same time, I request captain of Taniri Boy Friends, captain of Taniri Boy Friends, please come here and collect your representation memento from our chief guest. Please note all cricket lovers, those who are watching live telecast of this cricket tournament, the link will going to change here. The link of Bedra Media YouTube channel will going to change here of this Yuvaratna Trophy 2023. Please go to the new link in your YouTube channel. You will get a new link and of this Yuvaratna Trophy 2023. ತಣ್ಣೀರಿ ಬಾವಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Tanniri Bavi, especially G1, who is the one leading this team. Just we are talking about in 25 and 26, there will be a TFC Trophy 2023 in the coming 25th and 26th. I request all cricket lovers, please support that tournament. Already the teams which is reported, registered, and the 25 and 26 will go into one of the biggest day of cricket in Tanniri Bavi under the leadership of G1. And one more, the hard worker for that tournament, Ashok of TFC.